बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक निखरी हुई सुबह के साथ रावलपिंडी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर चौथा मरहला क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी सीज़न 2022 का जारी है और उसके साथ साथ सिंध और केपी की साइड्स जो हैं वो आमने सामने हैं। अब तक अच्छा मुकाबला देखने को मिला, दोनों साइड से अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और सबसे इम्पोर्टेंटली हम बात करेंगे केपी की बैटिंग की। 214 पे इस वक्त 2 आउट हैं और हाईलाइट अगर हम यहाँ बात करें खुर्रम मंजूर की इनिंग 116 रन्स किए 130 बॉलों में 14 चौके थे, बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी और ऐसी ही इनिंग चाहिए होती है टॉप ऑर्डर बैटर से। खुर्रम मंजूर ने जिस वक्त बैटिंग की उन्होंने तमाम अतराफ स्ट्रोक्स खेले और जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि उनके जो बल्ले से जब भी बॉल कनेक्ट हो रहा था जब तो सही तरीके से टाइम हो रहा था, जहाँ जहाँ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, इनफैक्ट जहाँ पर वो सोच रहे थे वहीं वहीं उन्होंने शॉट्स खेले और बॉलर्स को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से रिप्लाई किया। आंसर्स अच्छे थे उनके और बहुत खूबसूरत 14 चौके उनकी इस इनिंग में शामिल थे। इम्पॉर्टेंटली कि वो आगाज़ जो किसी भी टीम को चाहिए होता है अपने ओपनर से, वो उनको मिला, उन्होंने इसको दिया और जो इम्पॉर्टेंटली जो पार्टनरशिप्स होती हैं एट द टॉप, उसके बाद मिडल ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं होता। इस तरह की इनिंग थी खुर्रम मंजूर की, जानदार। और इस आउटफील्ड ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया, जहाँ जहाँ टाइम किया खुर्रम मंजूर ने अपने स्ट्रोक्स को। खुर्रम मंजूर की एक 116 रन की ज़बरदस्त इनिंग और अली यूनस ने उनसे बात की, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रोफेशनल कोशिश करते हैं कि जो भी इवेंट हो और उस इवेंट के आने से पहले हम उसकी प्रिपरेशन अच्छी करें। तो जाहिर सी बात है जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। हाँ, ये कह लें कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, मगर वही वाली बात के अंदर एक विल होती है और वो विल आपको बैक करती है अगर आपने ऑफ सीजन वर्क किया हो। Over 11,000 runs in domestic cricket, you're definitely one of the greats of domestic cricket in Pakistan. अगर आप वापस देखते हैं अपने करियर को, how satisfied are you? देखें, अगर आप मुतमईन हो जाएंगे तो फिर वो जो एक आपने भूख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुतमईन तब तक ये बस सही है, हो गई 100 हो गई, 5 बजे डे ऑफ हुआ, आप मैक्सिमम 1-1.5 घंटा एंजॉय करें, सही है, अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह ने दिया, मगर आपने और करना है क्योंकि हमें प्रोफेशनल, पहले बोला जाता था माई हॉबी इज़ क्रिकेट, अब बोलता है मैं प्रोफेशनल इज़ क्रिकेट। तो कोशिश करते हैं कि इसमें डेली बेसिस पे गलतियों से सीखें। अब यंग बैटर्स आपके साथ बैटिंग कर रहे हैं, साइम अयूब आपके ओपनिंग पार्टनर हैं, उमर बिन यूसुफ हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या एडवाइस करते हैं यंगस्टर्स को? देखें, बड़ा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने जो अपने बड़ों से सीखा और सीख रहे हैं कि सिचुएशन को जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पिच ऐसी है जिस पे कट पुल लगते हैं बहुत सारे। जिस तरह फैसलाबाद पे था, वहाँ बॉल नीचे भी रह रहा था, स्पिन हो रहा था बॉलर, वहाँ पे कट पुल मारना बेवकूफ़ी है। और वही वाली बात है, अंडर सिचुएशन जितना अच्छा आप अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद, क्योंकि मैंने केपीके के बैट्समैनों को देखा जिसने कट शॉट मारी है उसने रन किए, तो वो चीज़ मैंने अंडर फील्ड मैंने देखी थी और वो एब्जॉर्ब की कोशिश किया, अप्लाई की और अल्लाह ने मदद की। Are you still hopeful for a comeback in Pakistan side? बिल्कुल सर, उम्मीद पे, बीइंग अ मुस्लिम नाउमीदी कुफर है और मैं बहुत उम्मीद से हूँ कि इंशाल्लाह अगर 1000 प्लस रन करता हूँ तो दरवाजे खुलते हैं, क्यों नहीं खुलेंगे। और अगर हम इस मैच की बात करें, कंडीशंस थोड़ी आसान हो गई थी बैटिंग के लिए, तो किस तरफ जाता देख रहे हैं मैच को? सर आसान कुछ भी नहीं है, आसान बनाना पड़ता है ऑनेस्टली। इसलिए नहीं कि मैंने 100 किया इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने उन पर डोमिनेट किया, मगर अदरवाइज़ देखा जाए उन्होंने अप टू द मार्क कोशिश कर रहे थे मुझे वो ट्रैप करने की। तो हर चीज़ का एक हल है, बाशर्ते आप में इम्प्लीमेंट के विल होने चाहिए। तो कोशिश कर रहा था उन पर इम्प्लीमेंट करूँ, उनके उस प्लान को तोड़ूँ और उस दरवाजे को खोल के अंदर घुसूँ, तो अल्लाह ताला ने मदद की और कोशिश करूँगा आगे भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँ। सर बहुत शानदार खेले आप, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये अब तक का खुलासा है, 384 रन के जवाब में 214 रन बने और सरवर अफरीदी की इनिंग हाईलाइट थी, 148 बनाए उन्होंने 204 बॉलों में और बहुत ज़बरदस्त धुआंधार बैटिंग थी और जमकर खेले और बॉलर्स को अच्छा रिप्लाई किया उन्होंने। और शाह फैसल ने उनसे बात की इस इनिंग के बारे में, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जरूर, आपने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई, कल बहुत अच्छा खेले। जब आप गए तो आपकी टीम प्रेशर में थी, पहले तो ये बताएं कैसे अपनी इनिंग्स को एंजॉय किया?
पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। देखिए जी, ये मेरा पहला 100 था फ़र्स्ट क्लास का, तो मैं थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था इसमें। 4 डे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 20 में भी परफॉर्म हुआ है, 1 डे में भी हुआ है इस साल। तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी मैं निकल गया, और कोशिश होगी कि और अच्छा खेलूँ और अपने इनिंग्स को बढ़ाऊँ। और पिच के बारे में ये बताऊँ कि पिच अच्छा बैटिंग पिच है, और बैटिंग पिच था यही था कि मैं जब चला गया तो कामी भाई मेरे साथ खड़े थे क्रीज पे, तो वो समझा रहे थे, कम्युनिकेशन हो रही थी मेरे उनके दरमियान। जब भी मैं गलत उसको नज़र आ रहा था कि गलत खेल रहे, तो वो मुझे बार बार कह रहा था कि यार ऐसा नहीं खेलना है, ऐसा खेलना है। और जो आपकी पॉजिटिव इंटेंट थी, आपने कोई बॉल छोड़ा नहीं जो आपके रेंज में आया, आपकी माइंड सेट जो है अटैकिंग ही रहा। देखिए जी, मैं अगर बताता चलूँ कि मैं एक पावर हिटर हूँ, तो मैं ये बताऊंगा कि यार अगर एक बंदे की जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक खेलना चाहिए। मेरा स्ट्रेंथ ही पावर हिटिंग है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बस रन्स के पीछे जाऊँ। और इनके जो थ्रेट थे वो अबरार थे, पिछले मैच में 11 आउट किए थे, लेकिन जब आपकी पार्टनरशिप हुई, आप और कामरान गुलाम दोनों ने उनको बहुत अच्छा खेला। क्या आप रीड कर पा रहे थे उनको हाथ से? जी जी जी, अबरार को मैं पहले भी खेला हूँ, पाकिस्तान कप में भी खेला हूँ, 20 में भी खेला हूँ। तो अगर एक बॉलर को आप खेले हो पहले, तो उसमें वो कोई वो नहीं होता कि यार ये कैसे कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा। सही। और दूसरे, अब मैच की सिचुएशन 2 दिन हो गए हैं, सिंध ने भी अच्छा रिप्लाई किया, आगे ये मैच किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए जी, मैं अगर बताता चलूँ कि बैटिंग पीछे तो हमारी यही है, कोच ने प्लान दिया हुआ है कि अगर विकेटें ना गिरे तो फिर कोशिश करें कि रन्स ना दे, एक तरफ पैक कर दे फील्डिंग को और उसी तरफ खिलाए। चलें सरवर, आप बहुत ही अच्छा खेले, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वेल प्लेड। थैंक यू जी, थैंक यू। वेल सर्वर यकीनी तौर पर बहुत अच्छा खेले, 2 सेंचुरीज बनी। बॉलर्स के लिए थोड़ा टफ डे था तीसरा और सेकंड डे, और आज तीसरा दिन है। और पिच कैसा खेलेगा, हम चलते हैं शाह फैसल की तरफ। Another beautiful morning here at the Pindi Cricket Stadium. The sun is out and the pitch is absolutely gorgeous here. There's not much change on day 3 pitch. So still we expect plenty of runs like we did yesterday. Bowlers will have to work hard. I'm in the box right now, and a lot of viewers at home who might not have seen what happens in this area. There's some bowlers' foot marks. You can see how dry they are, and it's not much damage as well. But if I come around, you see the batters, when they come out first, they just take this guard. This is 2 leg. These are few markings here, and if I tap the bat, it is very, very hard as well. Not much damage. Few foot marks here and there, which you can expect on day 3, but nothing much happening here. If the batters can really get stick in, they can make it count for themselves. Another good day for the batters. वेल, अंपायर नासिर हुसैन आ चुके हैं इस सेंटर में, और अब तक जैसे फैसल बात कर रहे थे कि सरफेस आज का लगता यही है कि बैटिंग के हवाले से बेहतर होगा ऑन स्पॉट। और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो जो आज का चूँकि तीसरा दिन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिच जो है वो बैटर्स के लिए मज़ीद आसान होता है। और ये दोनों बैटर्स जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, सऊद शकील और उमैर बिन यूसुफ, काफ़ी टाइम स्पेंड किया इन्होंने कल। 100 बॉलें खेली सऊद शकील ने, 35 बॉलें खेल रखी थी उमैर बिन यूसुफ ने। उमैर जो कि आपके इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त होगा कि अर्लियर ऑन विकेट कैसे अर्लियर ऑन हासिल करेंगे, और जो स्माइलिंग फेसेस हैं ये किस तरीके से कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ेगा। पेसर्स जो कि केपी के हैं किस अंदाज से बॉल करेंगे, क्योंकि हार्ड एफर्ट होगी। जिस तरह से हमने देखा कि पिच जो है वो मज़ीद आसान होती चली गई बैटर्स के लिए। और दोनों बैटर्स जैसा कि पहले भी बताया कि वक्त गुजार चुके, 5 रन पे हैं, गो के अभी अर्लियर ऑन है इनिंग में, लेकिन अच्छे कैलिबर के प्लेयर हैं जो कि अपनी इनिंग को बिल्ड करना जानते हैं। और उनके साथ हैं कप्तान सऊद शकील, जिनके पास काफ़ी वसी तजर्बा है, 43 रन पे मौजूद हैं। अच्छा वक्त इन्होंने भी स्पेंड कर रखा है, तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए अर्लियर ऑन। गो के थोड़ा सा मे बी के सुबह का वक्त है, पेसर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प हासिल कर सकें। एहसानुल्लाह कल इन्होंने अच्छे बॉल पटके और बाउंसर्स भी कराए, और उसके साथ साथ जो बैटर थे उनको डिस्टर्ब भी किया।
तो अब देखना यह है कि क्या ये अपने उस इंटेंट को जारी रख पाएंगे या नहीं। 11 ओवर करवाए उन्होंने, 2 विकेट हासिल किए और यही वो 2 विकेट हैं जो अब तक केपी के हिस्से में आई है। काफ़ी उम्मीदें होंगी यहाँ पर एहसान से। 3 स्लिप है ऑफ साइड पे, एक पॉइंट, कवर्स, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट और डीप फाइन लैग। खालिद महमूद सीनियर ऑफ स्टंप से बाहर, ये बॉल था प्रॉपरली गो के लूजनर था, उसके साथ साथ जो शॉट था, जो स्ट्रोक था वो भी इतना फुल स्ट्रेच नहीं था या तेज नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता यकीनी तौर पर इनकी जो बॉल है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा, कल भी इनके बॉल बेहतर थे और जैसे जैसे ये रिदम पकड़ेंगे इनकी बॉलिंग मज़ीद निखरती जाएगी, तेज़ होती जाएगी। राइट हैंडर उमैर बिन यूसुफ के लिए 2 स्लिप और 1 गली है। ऑफ स्टंप के बाहर, सीधा फील्डर के पास, लेकिन कनेक्शन अच्छा था। उमैर को कल भी हमने देखा जिस वक्त आए तो जब जब इन्होंने कनेक्ट किया बैट के साथ बेहतर रहा। और इस दफ़ा भी देखें जो कवर्स पे फील्डर है, उन्होंने अच्छा ग्रैब किया। अर्लियर ऑन रन्स रोकने होंगे क्योंकि एक एक रन यहाँ पर, जैसे हमने पहले भी देखा, रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट करता है जब बैटर, तो प्रेशर आता है बॉलिंग डिपार्टमेंट पे। वेल इस वक्त मेरे साथ कॉम बॉक्स में यासिर हमीद मौजूद हैं। वेलकम यासिर। थैंक यू इजाज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इस वक्त गुड मॉर्निंग कह चुकी हैं केपी की टीम और सिंध की टीम भी एक दूसरे को। और इम्पॉर्टेंट होगा जो कल भी हमने देखा, इवन पहले 2 दिन के जो सुबह का सेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए, इनफैक्ट अगर हम प्रिसाइज करें पेसर्स के लिए कुछ परचेज होता है। तो क्या समझते हैं जो स्पॉट ऑन या जो बॉलिंग है वो इस वक्त एहसान और उनके जो कंपेनियन है, साथी हैं, किस चैनल पे होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा स्टार्ट लग रहा है एहसान का और पेस भी है। कल हमने देखा इन्होंने अच्छी बॉलिंग की इसी एंड से जब खुर्रम मंजूर की विकेट ली। और इनमें पेस है, इनकी एहसान की बॉलिंग में पेस है, तो ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है केपी की टीम के लिए, क्योंकि अर्ली ऑन इन्हें अगर एक आध विकेट मिल जाए तो इनकी टीम में एक जान आ जाएगी। जी हाँ, वो जान चाहिए ऐसा, क्योंकि जो रन रेट है लगभग 4 से ऊपर है इस वक्त सिंध की टीम का। 52वां ओवर है, 215 रन जोड़ चुके, विकेट कॉलम भी डिस्टर्ब नहीं है। तो अर्लियर ऑन ब्रेक थ्रू हासिल करने होंगे ताकि जो इम्पैक्ट है वो ला सकें। डीप एक फील्डर है ऑफ साइड पे, ऑन मैरिट, और किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है बैटर्स को। उन्हें पता है कि जो सरफेस है वो उनके लिए बहुत इजी है इस वक्त। यह बहुत अच्छा बैटिंग स्ट्रिप है और जिस तरह कल हमने देखा काफ़ी सारे रन्स बने, केपी की टीम की तरफ से भी 100 बना और खुर्रम मंजूर ने बहुत अच्छी पॉजिटिव बैटिंग की। तो शॉट्स तो हैं इस पिच में, सिर्फ खड़े होना है और अपने आप को अप्लाई करना है। अच्छी शुरुआत, 52 ओवर गए, 215 पे 2। वेल ये चौथे मरहले का आगाज़ हुआ है क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का, और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि इतराफ़ में भी बलूचिस्तान और ATF सदर्न पंजाब जो कि एबटाबाद में जारी है, यहाँ पर भी असद शफीक अच्छी फॉर्म में 106 रन बनाए इन्होंने। और दूसरी जानिब समीन गुल 5 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए 84 रन पे। 340 रन के जवाब में 109 रन बनाए हैं और अब तक 2 खिलाड़ी आउट हुए ATF सदर्न पंजाब के। उसके अलावा जो फैसलाबाद में है सेंट्रल पंजाब वर्सेस नॉर्दर्न, 509 रन पे 9 विकेट डिक्लेयर किया और 107 रन पे 1 खिलाड़ी आउट है नॉर्दर्न का। अजहर अली के डबल सेंचुरी 219।
इमरान खान सीनियर बहुत क्लोज था ऑफ स्टंप पे, हाइट भी बेहतर थी इस बॉल में। काफ़ी क्लोज छोड़ा सऊद ने, ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब। और इमरान खान जोर लगाएंगे थोड़ा सा ये भी, क्योंकि सुबह का टाइम है, फास्ट बॉलर फ्रेश हैं, और इन दोनों में से अगर एक विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाती है केपी की टीम, थोड़ा सा ये है कि हल्का सा सुकून आ जाएगा। अदरवाइज़ बैटिंग पिच लग रही है और बैट्समैनों का डे लग रहा है। जी एग्जैक्टली, जो अब तक का बाउंस मिला है बैटर को, इवन बाउंस, और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो बॉडी लैंग्वेज है यहाँ पर, और पिच बहुत आसान हो चुका है बैटर्स के लिए, जैसे आपने बात की यासिर। यहाँ पिच ड्राई हो चुका है और ड्राई लग रहा है और हार्ड भी है, काफ़ी टाइम भी मिल रहा है इसमें। तो देखिए क्रैक्स जो हैं वो खुले नहीं हैं, जुड़ी हुई पिच लग रही है, बैटिंग के लिए अच्छा सरफेस लग रहा है। घास तो है लेकिन डाइंग घास है, जड़ों वाली घास नहीं है। जिन प्रिसाइज के बैटर्स के लिए बहुत आसान होगा अपनी बैटिंग करना, बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा हार्ड एफर्ट करनी होंगी। और इमरान खान जैसे हमने अभी देखा कि जिस अंदाज से बॉलिंग कर रहे हैं, गो के इनके पास टेस्ट कैलिबर भी है, और की कोशिश भी यही होगी कि बीइंग अ सीनियर बॉलर या बीइंग अ सीनियर प्रो इन द टीम केपी, वो अपनी टीम को कुछ ना कुछ अर्ली 1-2 विकेट हासिल दे सकें। जो बहुत ही अच्छा बॉल करना पड़ेगा कोई, या फिर कोई बैट शॉट खेले बैट्समैन। अंपायर नासिर हुसैन, फ्रेश इन द मॉर्निंग। खालिद महमूद जो कि दूसरा मैच कर रहे हैं इस ग्राउंड पे। अच्छा शॉट लेकिन कोई रन नहीं, पूरी तरह मिडल नहीं किया। वेल अभी फ़िलहाल ये दोनों एंड से पेसर्स को लगा रखा है, इमरान और इसरार, लेकिन कितना बेहतर होगा कि स्पिनर को यहाँ पर लेकर आएँ, कितना जल्दी कुछ उनको हेल्प मिल सके। जी बज़ाहिर तो काफ़ी टाइम दे रही है पिच, लेकिन स्पिनर्स के लिए डेफिनेटली हमेशा कुछ ना कुछ तो होता है। ये डिपेंड करता है कि बॉलिंग किस तरह करते हैं, किस तरह अपने स्किल को यूज़ करते हैं, और कहाँ पे बॉल करते हैं, किस वेरिएशन से करते हैं। फ़्लाइट बहुत ज़रूरी है कि फ़्लाइट से बॉल करें, अगर तेज़ तेज़ करेंगे तो उसमें इनको रिज़ल्ट इतना शायद ना मिले। अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट सऊद शकील का, आगे घिरा हुआ बॉल और जगह से ही टाइम किया। 4 रन्स। बहुत खूबसूरत कैप निकाला, और जैसे कि अभी यासिर कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि ये सरफेस बहुत आसान है बैटर्स के लिए, देखिए बहुत ज़बरदस्त फॉलो थ्रू, और खूबसूरत अंदाज से टाइम किया। ड्राइव इतना अच्छा था कि पलक झपकते बॉल फेंस पार कर गई, और बहुत एलिगेंट शॉट थी, बहुत अच्छा था। और यहाँ के जो कैमरा मैन है उन्होंने यकीनी तौर पर, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब चौके लगे तो बैटर्स ने पोजेस दिए हैं। जी अच्छा खेलते हैं ये शॉट सऊद शकील, बड़े एलिगेंट लगते हैं जब ये कवर ड्राइव खेलते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा होता है इनका, पोजीशन स्टिल होती है। इस पर ऑन साइड पे खेले, कोई रन नहीं, और इख्तिताम हुआ 219 पे 2।
एहसानुल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात की बॉलर्स की, उसी तरीके से उमैर की जो बैटिंग है वो भी बेहतर है। कमरान की बैटिंग की भी तारीफ़ करनी होगी, जिस तरीके से इन्होंने अपनी टीम को लेकर चले और अच्छा बैटर होता है वो जो मुश्किल वक्त से अपनी टीम को बाहर निकाले। अर्लियर ऑन 2 विकेट निकली और यकीन तौर पर जैसे हम बात कर रहे हैं स्पिनर्स के बारे में, ये भी कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं तब्दीली किस वक्त लेकर आऊँ। डेफिनेटली जब फील्डिंग साइड अंदर आती है, फ्रेश डे होता है, तो उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि हमने विकेट लेनी है। और वो विकेट बहुत ज़रूरी होती है अर्ली ऑन, स्पेशली 4 डे मैच में मोमेंटम बनाने के लिए। उसके लिए प्लान करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक प्रिसाइज प्लान हो आपके पास। ठीक है, कभी कभी उससे ऑफ भी हो जाता है, बॉल इधर उधर हो जाती है, लेकिन वो प्लान नज़र आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपकी फील्ड है, 2 स्लिप्स हैं, एक गली है, ये आपकी ऑफ साइड की फील्ड है, और अगर ऑन साइड पे अगर आप देखें तो शॉर्ट मिड विकेट है और डीप फाइन लेग और मिड ऑन। कल जब हम देख रहे थे शाम को ये बॉल कर रहे थे तो स्क्वायर लेग पीछे थी इनकी, और वो प्लान था इनका कि बाउंसर ही करना है। लेकिन आज थोड़ा सा इनका प्लान ये है कि स्टम्प्स टू स्टम्प्स बॉल करें, और कोई एक ऐसी बॉल हो जो ऑफ स्टम्प पे हो, जिस पे बैट्समैन जाए, स्लिप लगे, कोई इस किस्म की प्लानिंग लग रही है। उसके इसमें काफ़ी सब्र चाहिए बॉलर्स को भी, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा इस पिच में कम है बॉलर के लिए। थोड़ा सा बॉल आगे होगा तो अच्छा बैट्समैन उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा, वहीं से चांस मिल सकता है। अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन लूज़ हो बैट्समैन की तो स्लिप्स में बॉल जा सकता है। एग्जैक्टली रोटेशन पॉलिसी के साथ साथ, क्योंकि कल भी हमने देखा कि जब बाउंसर्स कर रहे थे तो जो बैटर थे उन्होंने गो के अच्छा रिस्पॉन्स किया। जो बॉल उनकी तरफ सर के ऊपर से गुजर रहे थे या करीब से गुजर रहे थे उनको छोड़ा उन्होंने। और जैसे आपने बात की कि यहाँ पर सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, ना सिर्फ बॉलर्स को बल्कि बैटर्स को भी, कि अगर वो जल्दी करते तो माइट भी कल जो आखिरी लम्हात थे उन शॉर्ट पिच डिलीवरीज को खेलते हुए अपनी विकेट गंवा सकते थे। लेकिन उन्होंने सब्र किया, जो टारगेटेड डिलीवरीज थी उनसे हटे, और अभी फ़िलहाल कोई उस तरह का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि शॉर्ट पिच डिलीवरीज। देखिए नया बॉल तो नहीं है, लेकिन नया दिन है, तो डेफिनेटली इस टाइम स्विंग के चांसेस होते हैं। बीट हुए, डबल माइंडेड थे, बॉल की जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शॉर्ट पिच पीछे का बॉल, शायद वो थोड़ा सा ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बॉल को, लेकिन बॉल नीचे रहा और लकी रहे। लेंथ डिलीवरी थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, एक्सपेक्टेड बाउंस से नीचे रहा। और जब भी बॉलर प्रेडिक्टेबल होता है बैटर के लिए तो उसके लिए आसान होता है बैटर को उसको खेलना। और इस तर्ज की जो डिलीवरीज हैं जहाँ पे वो बैटर को इन 2 माइंड्स रखे, उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ब्रेक थ्रू हासिल कर पाए। इस दफ़ा भी ऑन साइड पे गए, लेकिन अच्छी प्रोटेक्शन मौजूद है। इस वक्त फील्ड प्लेसमेंट बेहतर है और बॉलर्स को जो प्लान दिया गया है लगता है यही है कि फ़िलहाल वो उसी पे चल रहा है। इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम, 54 ओवर हुए, 220 पे 2। रन रेट बहुत बेहतरीन है, कर्टसी टॉप पे जो इनिंग 116 रन की, 130 बॉलों में खुरम मंजूर की, और बाकी भी अगर आप देखें साइम अयूब को भी उन्होंने भी ऑलमोस्ट रन बॉल खेला। अर्ली मॉर्निंग रिलैक्स सेशन। सिंध की टीम इस वक्त थोड़ी सी रिलैक्स फील करे, क्योंकि रन्स अच्छे हैं बोर्ड पे और ओवर रेट भी अच्छा है, 4 की एवरेज से
ठीक जा रहे हैं। अच्छा खेले थर्ड मैन की तरफ, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। 2 रन हासिल किए उमैर ने। डबल नेल्सन्स 2 का इंसाफ काफ़ी नुमाया है इस वक्त स्कोर कार्ड पे। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से ये शॉट खेला, देखिए कितना सॉफ्टली खेला। और उनका इरादा भी यही है कि एक लंबी बारी की जाए, एक अच्छा दिन है, सरफेस अच्छा। तो जब तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपके हक में जा रही हों तो बेहतर है कि आप एक बड़ा स्कोर करें। ऑलरेडी वो अच्छा खेल रहे हैं इस मरहले में भी, बहुत कॉन्फिडेंस। देखिए बिल्कुल बल्ला जब वो लाए, एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा था, हेड पोजीशन, उसके साथ दिफाई अंदाज, तमाम तर चीज़ें ऑन मेरिट। डिफेंस बहुत अच्छा है इनका, और बड़े स्टिल होते हैं जब डिफेंस पोजीशन होती है इनकी, वॉक नहीं करते। इनको जल्दी ट्राई कर सकते हैं कप्तान, क्योंकि साजिद जो हैं वो हमें पता ऑफ स्पिनर, और अरशदुल्ला, इन्होंने भी कल बॉल अच्छे किए, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, क्योंकि अभी अभी इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया है, तो थोड़ा बहुत ये था कि पिच का इतना सपोर्ट इन्हें नहीं है। जी हाँ, साजिद की आपने बात की, विकेटलेस रहे 51, और गो के कल काफ़ी एक्सपेंसिव थे। ओवर उन्होंने जल्दी कराए ज़रूर, कि वक्त उन्होंने कम इस्तेमाल किया, लेकिन जो इस पे इतना प्रोडक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब होते, वक्त लेते अपना, तो माइट भी के यहाँ पर 51 फॉर 2, 51 फॉर 3, जो बेहतर विकेट कॉलम में पिक्चर होती है उनके लिए। हाँ, क्योंकि जिस वक्त आपके सीने पे स्टार हो तो आपकी टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप बेहतर अंदाज में खेलें। और यकीनी तौर पर यहाँ पर साजिद या इमरान खान, ये वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस बात की अक्कासी करते हैं कि इनके पास तमाम तर टैलेंट है। और अंपायर और साजिद के दरमियान इस वक्त गुफ्तगू जारी है। मुझे लगता है बहुत जम गई है दोनों की आपस में। साजिद जो है वो हमें पता है कि बड़े लाइवली कैरेक्टर है। कल शाम को सनग्लासेस नहीं थी नासिर साहब की। ऑफ स्टंप से बाहर ये बॉल था, इसका खूबसूरत अंदाज से खेला, कवर्स की जानिब लंबा ताक़ुब है, फील्डर का अच्छी एफर्ट और बेहतरीन, बहुत एक्सीलेंट। इस वक्त अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। अच्छा शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, ऑन द अप खेले उमैर बिन यूसुफ। बॉल ट्रैवल नहीं किया बॉल ने, लेकिन अच्छा शॉट था और फील्डिंग बहुत अच्छी की वकार ने। यकीनी तौर पे 2 रन सेव किए अपनी टीम के लिए। काफ़ी बेहतर कॉन्फिडेंस हुआ होगा उमैर का भी। इस्माइल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 55 ओवर गए, 224 पे 2। बॉलर्स बैटे देख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि इस पिच पे दोबारा बॉलिंग ना आए, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि जो एफर्ट लग रहा है विकेट शायद
मिले लेकिन लेट मिले। अब ये डिपेंड करता है कि इन दोनों पे। मॉर्निंग सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है बैटिंग साइड के लिए भी। सऊद शकील सिर्फ 1 रन के फासले पे है अपनी 50 से। एहसानुल्लाह इस कोशिश में है कि जान लगाएं और कुछ अर्लियर ऑन ब्रेक थ्रू हासिल कर पाएं। 2 स्लिप से एक गली है और यहाँ पर ऑफ स्टम्प से बाहर थोड़ा सा बैक को बेंड करके एफर्ट डिलीवरीज होनी चाहिए, लेकिन बॉल बहुत आसान है यहाँ पर बैटर के लिए। आप कितनी भी ताकत लगाएं, कितनी भी एक्यूरेसी करें, बैटर इतना आसानी से मौका नहीं देगा। जी अच्छा बॉल था ये वाला, लेंथ बॉल था। जो एफर्ट डिलीवरी आपने बात की वही एफर्ट डिलीवरी की इन्होंने। थोड़ा सा बॉल अपनी एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया। उमैर बिन यूसुफ टाइम नहीं कर सके शॉट को। ये अच्छी लाइन होगी अगर यहीं पे करते रहें, क्योंकि उमैर बिन यूसुफ अच्छे प्लेयर हैं। थोड़ा सा बॉल आगे होगा तो ये इनकी शॉट्स अच्छी हैं। और फिर अच्छा बॉल, लेंथ डिलीवरी, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, क्लैपिंग हो रही है, साथ दिया जा रहा है बॉलर्स का, लेकिन जागने के लिए, जगाने के लिए कि हिम्मत जारी रखिए। और ये बेहतर अंदाज है कि एक दूसरे को बाग अप करते रहें, शाउट होती रहे, अलाइव मोमेंट्स रहते हैं। उमैर बिन यूसुफ की अगर हम बैटिंग की बात करें तो दूसरी इनिंग में कतरे बेहतर बैटर नज़र आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर। अगर हम देखें कि इस सीज़न में जो क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी में उनकी सेंचुरी 110 रन है सदर्न पंजाब के ख़िलाफ़, वो भी सेकंड इनिंग में आई। उसके अलावा 37 रन जो इन्होंने सेंट्रल पंजाब के ख़िलाफ़ बनाए वो भी सेकंड इनिंग में थे। लेकिन उसके साथ साथ जो विकेट कीपर है ये बहुत विकेट से दूर खड़े हैं, और शाउट या एनिमेशन जो है वो साथ साथ जो अभी हमने गुलाम को देखा ताली बजाते हुए, इनकी तरफ से भी बगाप होना चाहिए। ये नॉर्मली क्वाइट से हैं, करेक्टर है रिहान आफरीदी। बहुत ज़्यादा इस तरह अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, ज़्यादा एनिमेटेड नहीं होते। अच्छी शॉर्ट पिच डिलीवरी, अच्छा खेले सऊद शकील। 4 रन हासिल किए मिड विकेट पे, और इस तरह 50 रन मुकम्मल किए सऊद ने। अच्छी इनिंग्स, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। 111 बॉलें खेली। अच्छी बैटिंग, एक्सीलेंट। और ये स्ट्रोक भी अच्छा था, बिल्कुल मुंह के सामने, और इसको बावर किया कि बॉल जो है हवा में ना जाए। उन्होंने इंटेंशनली नीचे खेला गैप में, तो 4 रन हासिल किए। इससे पहले भी इनकी 158 रन की इनिंग नॉर्दर्न के खिलाफ सेंचुरी स्कोर कर चुके, और उसी मोमेंटम को कैरी किया इन्होंने। हमसे काफ़ी बाहर था, और इससे पहले हम बात करेंगे मज़ीद इस पे कि जिस अंदाज से उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए 53 पे 112 बॉल है, तो 56 रन गए 230 पे 2। बहुत सी चिट चैट हो रही होंगी कोचेज के दरमियान, प्लेयर्स के दरमियान, लेकिन ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखें जो कि ये 22 यार्ड है, ये इस वक्त बैटर्स के लिए बहुत आसान है। और हम बात भी कर चुके हैं कि इस वक्त इमरान सीनियर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होंगी अपनी साइड को। लगभग 10 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। एज हुआ और ड्रॉप कर दिया, बहुत कॉस्टली मिस हो सकता है ऐसे लम्हात में जिस वक्त आप विकेट के लिए तरस रहे हो। इस तरह का ड्रॉप यासिर। जी हाँ, वही ड्राइव खेलने गए उमैर बिन यूसुफ, और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। सिंपल कैच था, रेगुलेशन कैच।
सीधा कैच, सिटर। झटका मारा उन्होंने, बॉल को अपने पास आने देते। ऐसे चांसेस इस पिच पे देना जो है वो डिजास्टर है। जी हाँ, ऑलरेडी आप एक ऐसे बैटर को मौका दें जो कि सेट है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यकीनी तौर पर उनके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा होगा कि बहुत बड़ा चांस मिस कर गए, लेकिन क्रिकेट है चांसेस का। अच्छा, नॉर्मली इस तरह जब बैटिंग पिच, कंसंट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए होती है स्लिप में, क्योंकि एट टाइम्स ये इनके पास पहला बॉल ही आया, पूरे देखें 56 ओवर्स हुए हैं और पहला बॉल आया इनके पास, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरे पास बॉल आएगा। सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप अपने आप को फोकस्ड रखें और रेडी रहें। इसलिए ये शॉट जो फील्डर्स होते हैं एक दूसरे के पास, एक दूसरे के साथ कैचिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन, ताकि वो गेम में इन्वॉल्व रहें। वेल, इस बैटिंग सरफेस पे अगर आप किसी भी अपोनेंट साइड के बैटर को मौका देते हैं तो यकीनी तौर पर वो दोबारा तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का आपको प्लेट में रख के देगा कैच। इमरान खान ने यकीनी तौर पर चांस निकाला। जैसे हम बात कर रहे थे कि सीनियर प्रो की हैसियत से उनकी ये ड्यूटी बनती है कि अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाएं, लेकिन साथ देना होगा फील्डर्स को। आई थिंक एज ए सीनियर प्रो जो हम बात कर रहे थे, इमरान ने वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्लिपर से ड्रॉप हो गया कैच। बल एक आध बॉल निकला है स्लिप की तरफ से। देखिए सिर्फ एक स्लिप और एक गली है। वेल ओवरऑल अगर हम स्टैंडर्ड्स को देखें कि स्लिप कैचेस हम ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं, तो बड़े आला स्टैंडर्ड्स रहे, लेकिन यहाँ पर आप कैसे देखते हैं? जब मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये चौथा मैच है कर रहा हूँ, तो यही देखने में मिल रहा है कि हर इनिंग्स में 2-3 कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का काम होता है कि आप कोई सारे, मतलब हम जब आते थे तो हम 50 कैचेस शुरू में मॉर्निंग में करते थे, लाजमी करते थे 50 कैचेस। उससे ये होता है कि आपके जो हाथ होते हैं वो, उनमें जब बॉल लगता है तो आपके एक तो हाथ मजबूत होते हैं, खुलते हैं, वो फील आती है आपकी बॉल की, वो पूरा दिन आपके साथ रहती है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी बैट्समैन, 6 बैट्समैन एटलीस्ट जो होते हैं, जो 4 स्लिपर्स होते हैं और ये क्लोजिंग फील्डर्स, इन्होंने 50 कैचेस करने हैं लाजमी, चाहे कुछ भी हो, आपने 5 मिनट निकालने और 50 कैचेस करने हैं। थोड़ा जल्दी आ जाएं आप। खूबसूरत शॉट सऊद का, 4 रन्स। वेल स्लाइड करके इस बॉल को रोका और यकीनी तौर पर अंपायर मे बी के जो फील्डर है उनसे पूछेंगे, और उन्होंने कहा कि नहीं, चौका नहीं हुआ, सेव कर गए। वेल 233 2 के नुकसान पे 57 ओवर का खेल हुआ। सऊद शकील लेफ्टी, ये देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी बारी का आगाज किया। हवा में स्ट्रोक था ऑन साइड पे, उसके बाद उन्होंने जमकर अपनी बैटिंग की। ड्राइव्स बेहतरीन थे, थोड़े से फ्लैशी भी रहे ऑफ साइड पे, लेकिन उसके बाद उनकी जो बैटिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई, बेहतर हुई, और आज उन्होंने अपने 50 मुकम्मल किए।
अच्छी बैटिंग की, बहुत ज़बरदस्त पारी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अर्लियर ऑन जैसे हमने देखा कि इक्का दुक्का स्ट्रोक्स उनके जो थे वो हेरी फेरी थे, लेकिन अदर देन उनकी बैटिंग जो है वो लाजवाब रही और अपनी फॉर्म को कैरी करते हुए। और बीइंग अ कैप्टन ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जिस वक्त आप रन्स कर रहे हैं, अपनी टीम को अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में लीड कर रहे हैं। और देखिए जहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए उसके बाद वो कॉन्फिडेंट थे, बिल्कुल बॉल के पीछे पहुंचे। ये अच्छी बैटिंग की इन्होंने, सबर से खेले, लेट खेले और इनके स्ट्रोक प्ले अच्छा है, स्टाइलिश खेलते हैं। पेसर्स की जॉब अभी जारी है। लेफ्ट की ऑफ साइड पे बॉल विकेट कीपर से थोड़ा सा आगे को गिरा, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि बाउंस थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा, कैरी नहीं हुआ बॉल, थोड़ा आगे गिरा कीपर से। जी हाँ, अकवर्ड बाउंस था और ग्लव्स बिल्कुल बॉल के पीछे रखे। नॉर्मली ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बॉल आपके चेस्ट पे या अनपैडेड एरियाज पे भी लगता है और बड़ा हार्मफुल होता है। सिंध अब 150 रन पीछे है। ऑफ स्टंप से बाहर, अच्छा साजिद ने सेव किया। जी अच्छी कमिटमेंट साजिद की, कमिट लग रहे हैं आज। अच्छा डाइव करके रोका एक हाथ से। साजिद खान ऑफ स्पिनर, एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे केपी के डगआउट को। जो कमिटमेंट उन्होंने फील्ड में दिखाई वही अपने बॉलिंग में भी दिखाना होगी। ऑन साइड पे बआसानी, बहुत आसान है इस वक्त। अगर आप बैकअप लाइन बॉल करवाएं या फुलर, किसी वक्त भी जो रिप्लाई है बैटर्स का वो बेहतर और पॉजिटिव। और अब तक सिर्फ उसे कैच के अदर देन कोई भी ऐसा लम्हा नहीं था इस मॉर्निंग सेशन में जो कि बैटर्स के खिलाफ गया हो। एक बाउंसर हो गया इस ओवर में। सऊद शकील ने अच्छा एग्जीक्यूट किया पुल शॉट को। अगर हम देखें कल से ये खेल रहे हैं लेकिन नीचे ही खेल रहे हैं, गैप में खेल रहे हैं। अच्छा कंट्रोल है इनको इस शॉट पे। एक रन हासिल किया उमैर ने। स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे ले लिया है। शायद अब अटेम्प्ट करेंगे कुछ बाउंसर्स राइट हैंडर को। सऊद शकील पे भी स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे ले लिया है। अच्छा, अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी अब यही लग रही है आसान की कि जिस तरह उन्होंने कल विकेट ली शाम में खुर्रम मंजूर की, शायद उस तरह की एक आध विकेट इन्हें दोबारा मिल जाए। जी हाँ, बेहतर यही है, अटेम्प्ट करते रहना चाहिए। किसी वक्त भी बैटर गलती कर सकता है, लेकिन सऊद इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, बॉल को नीचे रख रहे हैं। इस सिंगल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 237 2 के नुकसान पे 58 ओवर्स के बाद।
Looks so elegant whenever he looks to drive, South Shakil. That's a misfield from the captain. Result in couple of runs going to South Shakil. Such a fantastic young batter this man is. The captain of Sindh, South Shakil, 59 at the moment. It's been such a responsible inning, such a stylish inning. As I say, good morning to my fellow commentator, Shah Faisal. Very good morning, Ali. And a very nice drive to greet us in the comm box. South Shakil looks very elegant when he drives. He's not happy with somebody moving right in front of the side screen. It has to be Yasser Hamid. He's always wandering around in that area, right there in front of the grill. Yeah, there's only us here, so one of us, and definitely it's Yasser. A good morning for Sindh till now. They've scored runs on every occasion, a catch going down in slips. So it's working for Sindh. 239 at the moment, trailing by 145. Nothing really happening off the pitch. How disheartening is it on a pitch like this? A bowler gets an edge, fielder drops it. It's very disappointing. Indeed it is. Hard work for the bowlers. They create an opportunity, and then your slipper just lets you down. It's very difficult to get yourself up, dust yourself off and start again. Again, that drive looks so elegant, looks super stylish, this boy. South Shakil, full of talent, full of skill. Just the way he times it, supreme. Yeah, everything good about this stroke when he drives, that front foot down, covering the line of the ball, that little bend on that front knee. Look at that high front elbow, holds the pose. You've seen him grow, like I was telling you off air. 2014, where I first saw him, he was captain of Pakistan under-19, leading the national side against Afghanistan at Lahore. Closely followed his career since. He's been prolific. And he hasn't changed in his appearance too since then. Still looks like a 19-year-old. Baby-faced, despite that change in looks. Nicely driven, down the track. Another boundary for South Shakil. Yeah, that angle from right arm over the wicket, he had to cover that angle to hit it back where it come from. And he was right up on it. If you see his head, he lined the ball up very, very nicely. His head was right on top, slightly away from that front foot. But he's got such good hands. Excellent timing and placement. Imran Khan is so disappointed after the catch going down. Now South Shakil dealing in boundary. It's just not working for KP. There's only one slip, a wider slip and a gully. There's a fielder at deep point. Towards that point, fielder one more run for South Shakil as he moves to 64. The trail is now 140 runs. How long are they gonna wait for Sajid Khan to bring him in action? That's the question. Probably Kamran Ghulam will be thinking right now. But having a word with the KP bowlers, they thought that the seamers were getting more help from the pavilion end. And this with the end where the spinners prefer it too. It'll be interesting call to see what the captain listened to. Because Sajid would definitely want to bowl from that end, and the seamers wanted to bowl from that end. So not an easy call. You know which side it is going, to the senior member. Again, driven handsomely. One. They come back for two. Yes, very good running by Umar bin Yusuf. A good early call, resulting in an easy second run. End of another over of Imran Khan. It's 244 for two. 246 rather for two.
Sindh trailing by 138 runs is the line to follow. Khyber Pakhtunkhwa in their first innings scoring 384. Sarwar Afridi getting a very good 148. In reply, Sindh 246 for 2 at the moment. Khurram Manzoor with yet another 100 of his career, 116, and Sal Shakil is still unbeaten on 64. 138, and if you look ahead to the game, they always say that if you want to win a test match or a first class game, you only have to bowl the opposition out once cheaply. So if Sindh matches the score of KP in the first innings and have enough time, they will put pressure back on KP, try to get them out cheaply. We've seen on this pitch on day 4, batting is not that difficult. Sarwar Afridi, just the 3 overs. Look at a beautiful sky. Hint of moon. Obviously the sun is shining so brightly, can't see much of it. But good capture, good work from our camera team. Stunning shot. Sarwar Afridi, he was underbowled in my opinion. I think he's a better bowler than this. He should have used him with a semi-new ball. We saw that in National T20. He's in to break this partnership. Sajid Khan is a character. He keeps his team lively with his chants. Flying high are Sindh right now. Yeah, you talked about Sajid Khan. I've never seen somebody mix English and Pashto. Do you even understand what he says? Because when we are sitting outside, he's quite loud. We can clearly hear him, but cannot understand it, what he says. Neither do I. I don't think anyone understands what he's saying. But his chant is mixed with few languages. The only thing I understand is boys is what he says. Come on, boys is. Yeah, that's what he ends his chant with. What comes before that, we have no idea. His claps as well. Looks like he's from a Kawal party, the way. Very loud claps. He's the cheerleader. He's definitely a team man. Always involved in the game. Lee played a lot of cricket, and you know in every team there's a character like him and everybody loves him. Usually we see wicket keepers being like this, chirpy, loud. But Rehan Afridi for KP, such a nice lad. Cool and calm. We hardly see him speak. Very quiet. Good boy. Teacher's delight. Yeah, probably that's the reason Ashfaq next to him was dozing when that chance came around. Wonder how much that catch drop would affect. It was a straightforward chance, went straight to him. Imran Khan was gutted because it's so difficult to get those edges going on rather a slowish pitch. It went straight. Imran Khan finally got it right, that length, expensive drive away from the body. Maher bin Yusuf, and it was a sitter. They say no slip catches are easy, but this was as easy as they come. Just a regulation catch. Disappointed. But talking to Sarwar Afridi in the morning, he said, if we can't get wickets, the plan is to just bowl one side of the wicket and stop the flow of runs. Starts off with a maiden. 246 for 2.
change of bowling at media centre end. As you see, Arshadullah now being brought in, the left arm medium fast bowler. Oh, nearly got the wicket on the first delivery. Inside edge will earn Umar bin Yusuf a boundary. A very lucky one though. Umar bin Yusuf hasn't been at his very best. Look at that, once again away from his body. Very lazy looking stroke. Got lucky on that occasion. Could easily have gone on to hit the stumps. Instead he picks up a boundary. That fine leg is quite wide. Couldn't get around in time. That economy, yeah, he's leaked runs and no maidens, which means that he hasn't given any sort of control to his skipper. Another easy run. They're the same problem for KP. They've struggled to get the length right on this pitch, either too full or too short. We understand that short pitch ploy the last evening, but that was proper planned short pitch deliveries. But if you look at it normally, they haven't bowled consistently in that 5 meter area that we talk about, which has been so dangerous for the batters on this pitch. They haven't utilized it. Very inconsistent, both sides of the stumps. Like you were talking to Khurram Manzoor, he actually came up with a plan. He said to attack them, and that really knocked them off of their feet, which was good from the experienced man. That is really countered the aggression that KP would have had against the Sindh batters. Yeah, he was of this opinion that even if he bowled me 6 bounces, he was going to go after them, because he was dominating and he wanted to carry on dominating. This man on your screen, Saim Ayub, very disappointed he must be. Got a start, got out. That no-look shot he's practicing. How good, how elegant he looks when he plays that shot. But then again, he will have to prove himself by scoring runs. He hasn't done that yet on this level. He's got starts even yesterday. As long as he was there, he looked $1 million. He crunched beautiful drives, few straight drives, and the cover drive. Then that flick that he plays with the straight bat towards mid-wicket. But then that loose stroke, he'll be thinking about that for a while. That's what happens in 4-day cricket, longer version. You make a mistake and then you watch others bat for hours and hours, and then you think to yourself, why not it's me? I should have been there. It should have been me getting all those runs. Especially on a pitch like this, when the ball is coming nicely onto the bat, this even bounce, nothing happening, no movement whatsoever. So if you don't lose your wicket, you don't get out. It's as simple as that on a pitch like this. Especially if you're not a good watcher of a cricket game, it can be very painful, that long wait of watching your fellow teammates piling on the runs. Huge appeal. Nasir Hussain says no. Touch high maybe. Pitching outside the leg stump. Couple of things in the mind of the umpire. Yeah, definitely a few things to consider from that angle. First thing he needs to look is to see if that ball would pitch in line and then straighten. He's a tall boy, so he's likely to get more bounce. It's pitched on and hit him on the back leg where the ball didn't have to travel a lot. Extremely close. Disappointed. The bowler, he thought he's got his man. It hit him on his back leg. Mighty close. Well, if you look at it with naked eyes, it initially thought that might have hit him high, and that pitch. So you got to give it to the umpire. There's a couple of times in this match where umpire Nasir was called into action. Very close leg before shouts.
This was very, very close. Definitely it pitched on. Did straighten a little bit. It was hitting stumps. Just the only question would be the height. This will give us a good example of how I don't think the ball didn't have to travel a lot. Very lucky Umair bin Yusuf. Beautiful drive. That is excellent cricket. That is superb by South Shakil. He's dealing in boundaries. Very elegant. When he's set as he is right now, this is some buffet bowling from Sarwar. The angle gave him the width to go through. Just hitting through the line. The balance is immaculate. Timing is superb. Too full again. They're not learning, are they? This morning Sajid Shah also was telling him the length, the area to bowl. They haven't learned much. That's better. This is where he should be looking. Touch a yard fuller maybe. Easy to leave this length. Still trailing by 128 runs. Shah Faisal, where this match is heading. Yesterday at the same time you had other opinions. Have you changed them yet? Look at that run rate that Sindh has got. That fast pace, that aggressive approach has really opened up the game for them. If you look ahead, 128 runs at current rate. It will take Sindh about 30-35 overs to get there. We're looking at what, middle of the afternoon session probably, just before tea. See if they're content to just bat the 100 overs and get up to 400 and give it back to them, and rely on getting KP out quickly, because that's the hardest thing, to get 10 wickets. Because from that position, I don't think Sindh is in a position to lose that game. So if they make the running, it can be an interesting game still. Good run. Very good run. Good call by Umair bin Yusuf. Yeah, that's how quickly things change in cricket. No wonder they say it's a funny game. Soft hands, placement perfect, good running between the wickets, good cricket all round. Yesterday, same times, we were talking about KP can't lose it. Look at how it has changed in just one day. Now we're talking Sindh might not lose him. Because of the approach they took. I mean, at one stage they were scoring at 5.5 per over. Once again, you go back and give credit to Khurram Manzoor for his knock. Beautifully driven, but straight to the man. Khalid Usman is in. 257 for 2. And Ali, if you look at things, if you look back at the history, teams who had aggressive openers had a good percentage of winning test matches. You go back to that very successful Indian team, the likes of Virender Sehwag. He really changed games because the way he opened the innings. Go back to the famous Australian side, Michael Slater and Matthew Hayden. The starts they used to give to their side, it was not just big in numbers but very quick. That allowed extra time for their bowlers to get the opposition out. Go back to Greenwich and Haynes from an era before that. So that is what aggressive openers can do. And Khurram Manzoor's innings has really changed this game on its head. Yeah, not just Khurram Manzoor but Saim Ayub with him. I think the way they played, it just, dent the chances of the morale of the bowling side. The way they played, the way they attacked, you nearly take the game away from your oppositions. And this is exactly what has happened here. You make a very good point. Saim Ayub definitely was there with Khurram Manzoor. 40 odd runs. So who would you rate better? Gordon, Greenwich, Desmond Hayne pair, Justin Langer,
Matthew Hayden, this pair. In Test match cricket, You can't really compare the eras. yeah, I'm talking about the approach. They had the similar approaches. They had the similar approach, you're right. Probably in that regard, you'd have to give it to Greenwich and Haynes because they were ahead of time, you feel. Because they were playing in the era where the run rates were lower, but they changed it. And when Langer and Hayden came around, one-day cricket had become a norm. The pace of the game had increased overall. Those two from the Caribbean, they set the tone, they set the trend. You know, if you look back at Pakistan side, after Amir Sohail and Saeed Anwar, we haven't really found those that pair, that sort of pair, who would complement each other, play attacking cricket, authoritative cricket. We've not been lucky in that area. Not at all. And you mentioned the great pair of Amir Sohail and Saeed Anwar. That was a very successful era for the Pakistan team as well in Test cricket because of the quality and aggressive nature of both these openers. Took the opposition on, put them under immediate pressure, especially Saeed Anwar, the kind of range of strokes he had. He wouldn't spare anything, even with the new ball against the best of the best. And that meant that Pakistan was always ahead in the game, and especially in that era, Pakistan never had problem to get teams out twice because of the bowling resources Pakistan had. It was such a huge advantage having that sort of bowling along with those batters. No wonder that's the golden era of Pakistan cricket, that 90s cricket team. Some wonderful characters, some wonderful individual performers. Match winners, you name them. All through the lineup you could see them. Batting department, fast bowling department, spin department. Even the wicket keepers, likes of Rashid Latif and Moin Khan, going toe to toe with each other, pushing each other to the limit. And Pakistan was lucky to have two of them at one time. With the kind of pace battery and the spinners we had, we needed good wicket keepers, and we did have good wicket keepers. Yeah, if I have to ask you to name the top 5 match winners all over the world in every format, who would you rate? Just a bit more specifically. The players that have impressed you, that you have seen in front of you. Yeah, you've started watching cricket from your 90s, I believe, from your age. So from 90s onwards till now. Yeah, not talking about 1890s, 1990s. You're not that old. Yeah, this is a difficult question because I love to watch cricket from all over the world. And that the era you mentioned, there were so many around. I just limit to Pakistan, great Imran Khan, Javed Miandad, then 2 Ws, Wasim Akram, Waqar Yunus, and Shoaib Akhtar. That makes 5, and there's quite a few more left that I can name. Probably you name some more. Yeah, after that, no ball being called by the umpire. But I would always rate, as far as Pakistan is concerned, Abdul Razak, definitely right there as a match winner because of his capabilities with both bat and ball. He will definitely be right up there. MS Dhoni, definitely a match winner. Michael Bevan, definitely. It's there in my list. Who else? Ben Stokes, 100%. Coming to the current era, there's quite a few. Joss Butler in shorter format, Ben Stokes, Virat Kohli,
Shaheen Afridi. Their careers are heading to their prime right now. Shaheen Afridi I'm talking about. And he's already done it quite a few times. Yeah, match winner is somebody who can change the game solely on his head. Handy cricketer. It's more times than there's an all-rounder in that list who can ball, bat. Jack Callis, definitely there. Andrew Flintoff, wonderful cricketer. Kevin Peterson. Definitely the trendsetter, Kevin Peterson. I agree with that. All these reverse hits that you see, gone in the days, they used to be reverse sweep or reverse lap. That man came in, he started to hit the ball with a different grip and switch hit. He wasn't looking to lap the ball or place the ball. He was looking to hit the ball out of the ground. Called switch hit. The KP shot. Solid as a rock, South Shakil. Talking about innovations, not to forget Tilkaratne Dilshan, the Dil scoop. What about the bowlers? The innovation that bowlers have brought in. All those slower bouncers, the back of the hand delivery. Do you remember who bowled the first time? The back of the hand deliveries, who introduced it to international side? Have any idea about it? It's a difficult one because we had a debate the other day as well. Somebody needs to find out who bowled the first slower bouncer. We don't know that. We know the batters who started those innovations, but we don't know the bowlers who started that. The first slower bouncer, first back of the hand. Well, if our audience, if you know any, give us a shout out. Let us know. It has to happen from 20 cricket, T20 cricket, because all these innovations coming in has to come from South Africans or Australians maybe. Back of the hand maybe was Simon O'Donnell. Somebody just messaged you, I could see. Yeah, well, You a got little help. bit of help. That's all right. Let's take a breather and have some drinks at the Pindi Cricket Stadium.
ये है सिंध की मुस्तनद बैटिंग लाइनअप और खुर्रम मंजूर की सेंचुरी की बदौलत और उसके साथ सऊद शकील ने जो बेहतरीन बैटिंग की 70 रन अब तक बनाए हैं उनका साथ दे रहे हैं उमर बिन यूसुफ और इसके बाद अभी फवाद आलम जैसे एक मुस्तनद बैटर भी लाइन में है। ये सऊद शकील की शानदार 50 आप देखिए पुल शॉट कवर ड्राइव इस इनिंग्स में आपको तमाम ही शॉट्स देखने को मिलेंगे। क्या खूबसूरती से ये कवर ड्राइव खेला था इमरान खान और अरशदुल्ला दोनों जानिब से ज़बरदस्त स्ट्राइक किया बैटर सऊद शकील ने और इनकी जो ड्राइव्स हैं पुल हैं प्रॉपर टाइमिंग देखने को मिली खूबसूरती देखने को मिली बैटिंग में और बॉलर्स एहसानुल्लाह के अलावा कोई खातिर खा अभी कारकर्दगी देखने को नहीं मिली है। और इस वक्त 125 रन पीछे है अभी सिंध। खुर्रम मंजूर ने सेंचुरी स्कोर की और सऊद शकील की एक ज़बरदस्त बैटिंग यहाँ पर 70 रन पर नॉट आउट है। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। जी शुक्रिया आसिफ। जी हाँ बिल्कुल, सिंध की टीम इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में है और इस वक्त सिर्फ 125 रन पीछे हैं और अब इनके पास एक बहुत अच्छा चांस ये आ गया है कि अगर ये पूरा दिन बैटिंग अगर करते हैं तो उनकी जो लीड है वो ऐसी हो जाएगी कि केपी की टीम दोबारा अगर खेलने आती है तो उनको उस पहले लीड को उतारना पड़ेगा। तो ये अब जो है वो प्लानिंग नज़र आ रही है मुझे और ये होगी सिंध की माइंड में। मेरा सऊद की आप बात कर रहे थे तो 2 शॉटों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलाई किया और वही 2 शॉट देखने को मिली है, ड्राइव और पुल शॉट। और ये फील्ड है, एक स्लिप एक गली, डीप पॉइंट, शॉट मिड विकेट, मिड ऑन। तीसरे दिन का खेल और पहला सेशन जारी है। अब तक रिलाई किया है फास्ट बॉलर्स पर और साजिद को भी हमने देखा था जिस तरह खेल आगे बढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, स्पिनर्स का रोल क्या इस पिच में कुछ नज़र आ रहा है यासिर? जी हाँ बिल्कुल, उनका रोल तो है, डेफिनेटली है साजिद का। और ये मेरे ख्याल से इन्होंने रियलाइज़ किया है कि क्योंकि बॉलिंग लंबी करनी पड़ेगी साजिद को आज के दिन में, तो एटलीस्ट इनको 15 से 18 शायद 20 ओवर्स भी गिराने पड़ जाएं और उसके लिए ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा मॉर्निंग का सेशन है तो फास्ट बॉलर से पूरा चांस ले रही है केपी की टीम। सारे फास्ट बॉलर्स को इन्होंने आजमाया, शुरू में एहसान ने आगाज़ किया था इमरान के साथ और अब अरशदुल्ला जो है वो इधर मीडिया एंड से बॉल कर रहे हैं और सर्वर जो है वो हेल्प कर रहे हैं उनकी। लेकिन यहाँ पे साजिद को लाया जा सकता था सर्वर की जगह, बट यह है कि सर्वर का भी एक रिकॉर्ड है कि वो आपको ब्रेक थ्रू देते हैं, तो शायद उन्होंने वो चांस लिया। इस दफ़ा इसको कट किया था स्ट्रेट टुवर्ड्स गली और उमर बिन यूसुफ आज लकी रहे थे। उमर बिन यूसुफ एक चांस मिलने के बाद ये देखिए इसको कट किया बच्चा सीधा गली में फीडर के पास। जी उमर को अगर देखें उनकी बैटिंग आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना फ्लुएंट नहीं खेल रहे, वो फ्लो नज़र नहीं आ रहा इनकी बैटिंग में, थोड़े से चांसेस दिए। भी ये लास्ट शॉट भी था, ये बॉटम एज लगा था, शायद उनकी वो फीलिंग अभी बैटिंग में उस तरह नहीं है जैसे पिछले मैच में 100 किया था उन्होंने और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो बाज़ दफ़ा वो भी होता है कि 100 की वजह से वहीं से स्टार्ट लेना चाह रहा होता है लेकिन वो चीज़ें होती नहीं है। अरशदुल्ला का मेडियन ओवर
सर्वर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे फॉर एंड से। इस दफ़ा ओवर पिच डिलीवरी, इसको कवर्स में खेले हैं और प्रोटेक्शन वहाँ पर मौजूद है। 2 रन्स आसानी से मिल जाएंगे। सर्वर की आप बात कर रहे थे कि कैप्टन का प्लान यही है कि सर्वर से एक एंड से बॉलिंग करवाई जाए और बैटर को मजबूर किया जाए कि वो किसी लूज शॉट की तरफ जाएं और विकेट हासिल की जाए। जी हाँ, प्लान तो यही है, लेकिन काफ़ी फुल बॉलिंग कर रहे हैं, उनको वो हेल्प नहीं मिल रही पिच से। काफ़ी टाइम है पिच में, अभी तक तो इफेक्टिव नहीं है। और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको खेला पॉइंट की जानिब और 1 रन तेज़ी से हासिल किया। सर्वर ने बैटिंग में तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी और सेंचुरी स्कोर की थी। अब देखते हैं बॉलिंग में अपने जौहर दिखा सकते हैं या नहीं। या थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो पेस इनकी है और जो जिस तरह मतलब पिच में भी इतना हेल्प नहीं है, तो शायद मेरे ख्याल से कप्तान को सोचना पड़ेगा कि वहाँ से एक स्पिनर को ट्राई करें। देखें खालिद उस्मान फील्ड में है, खेल नहीं रहे लेकिन फील्डिंग कर रहे हैं। मिड विकेट की जानिब खेला, स्ट्रेट टू द फील्डर। और जब बात की जाए कि उमर बिन यूसुफ जब एक मौका हासिल कर चुके हैं, अब बड़ी इनिंग्स इनकी मुंतज़र है। तो एक दफ़ा फिर इसको सीधे बल्ले के साथ खेला, स्ट्रेट टूवर्ड्स कवर, साजिद के पास गेंद। और उमर बिन यूसुफ की बात कर रहा था कि जिस तरह से इनको चांस मिला, अब इनको इनिंग्स बिल्ड करनी है और अपने कप्तान सऊद शकील के साथ एक लंबे स्कोर की तरफ जाना है। ये उमर बिन यूसुफ तो अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर, लेकिन इस इनिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्लो वो नहीं है। और शायद थोड़ा सा इनको थोड़ा सा और खेलें, 1-2 बाउंड्रीज इनको मिलें तो फिर उनकी वो बैटिंग में फ़्लो आए। चांसेस दे रहे हैं। एक लेग बिफोर भी बड़ा क्लोज शॉट हुआ था उन पे पिछले ओवर में। और इस दफ़ा इनसाइड एज लकी रहे, अच्छी गेंद इस दफ़ा सर्वर की जानिब से। जी हाँ, अंदर बॉल किया, अंदर आया, ये बॉल अच्छा था, रिवर्स स्विंग हुआ। और ये अगर बल्ले को ना लगता तो डेफिनेटली ये लेग बिफोर थे। जी इनसाइड एज हुआ और काफ़ी क्लोज मामला हो सकता था। और क्योंकि आपने देखा कि उमर बिन यूसुफ ड्राइव के लिए जा रहे हैं और जिस तरह मैं पहले कह रहा था, तो ये 2 फील्डर्स आप देखिए, कवर और शॉर्ट कवर, कैचिंग पोजीशन में। और एक दफ़ा फिर ये कैरी किया है या नहीं किया, ये देखना होगा। आई गेस एक 1 टिप गया है इनके पास, हाथ में नहीं गया बिल्कुल, बॉल आगे गिर गया सर्वर से। ये अच्छी थिंकिंग है, इनको अंदर ला रहे हैं। ओवर भी इख्तिताम हुआ। 262 पर 2। थोड़ा सा हिंट देखे हमने रिवर्स स्विंग का पिछले ओवर में, और अब इस पे थोड़ा सा अगर फोकस करें बॉलर्स, रिवर्स स्विंग हो रहा है, पिछले 2 बॉल अंदर आए सर्वर के। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और यही आपसे जानना भी चाहूँगा कि एक तरफ से अरशदुल्ला अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए हैं, अरशद की पेस भी है और तेज़ बॉल से जब रिवर्स स्विंग होगी तो बॉलर को मदद मिल सकती है। जी हाँ, रिवर्स स्विंग के लिए थोड़ा सा
ज़ोर से शोल्डर से बॉल करना पड़ता है, और डेफिनेटली पेस तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी स्किल भी ज़रूरी है कि रिवर्स होता किस तरह। पेस तो अब सर्वर की तो इतनी पेस नहीं है, लेकिन उसके रिवर्स स्विंग क्यों हुआ था। और इस दफ़ा इसको फिर सीधे बल्ले से खेला, एक दिलकश स्ट्रोक स्ट्रेट टू द फील्डर। बड़ा ज़बरदस्त मिडल कर रहे हैं सऊद शकील, पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, उस तरह टाइम नहीं हुआ जिस तरह कि इन्होंने शॉट्स खेले हैं, लेकिन नीचे लगा, बॉटम लगा। मिडल होता तो फिर प्रॉपर शॉट थी, लेकिन बहुत अच्छा शॉट खेले ये शॉट जो है बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया थ्रू आउट द इनिंग। काफ़ी बाउंड्रीज हासिल की हैं सऊद ने। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि 2 शॉट्स इन पे कॉन्सेंट्रेट किया है, ड्राइव और पुल, ये दोनों शॉट्स इन्होंने नहीं छोड़े और इन्हीं पे रन्स किए इन्होंने, और उसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया। फ्लॉलेस खेले ये दोनों शॉट्स। और अगर ये कैच थाम लेते तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी और सिंध को मज़ीद दबाव में डाला जा सकता था। ज़रूर अफसरदा होंगे, लेकिन अब नई एफर्ट करनी है और मज़ीद चांसेस नहीं देने। अच्छी चीज़ ये है सऊद शकील की कि जहाँ पे मौका मिल रहा है रन्स हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, उमर और यासिर, कल हमने देखा था सिंध ने जिस तरह से आगाज़ किया, ख़ास तौर पर साइम अयूब ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रन रेट से खेले, फिर खुर्रम मंजूर ने बहुत तेज़ बैटिंग की, सो वो मोमेंटम अब नज़र नहीं आ रहा और वो अब कम हो गया। जी, बड़े अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट किए खुर्रम, और इस इनिंग्स में साइम ने, तो वो चीज़ फिर ऑब्वियसली जब नए बैट्समैन आए तो जिस तरह उमर को हम देख रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी बैटिंग में वो फ्लो नज़र नहीं आ रहा। आज काफ़ी सारे बॉल खेले हैं, सिर्फ 21 रन्स किए हैं 80 बॉलों पे, तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि वो उनकी बैटिंग में वो फ्लो नहीं है जिस तरह कल हमने देखा। कल एक तो टाइम ऐसा था लंच के बाद जब बैटिंग आई तो थोड़ी सी बैटिंग इजी थी उस वक्त, वो टाइम ऐसा होता है, और साथ में नया बॉल था, हार्ड बॉल था और अच्छा खेले, वो टाइम किया उन्होंने बॉल को सिर्फ, और जो बॉल पुराना होता है सॉफ्ट होता है उसके बाद उस तरह उस पर शॉट नहीं लगती, सिर्फ बैट बॉल का वेट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, और इस डॉट डिलीवरी के साथ ओवर के अख्ताम 263 पर 2। और यासिर, अगर बॉलिंग गार्ड देखा जाए तो दो के एहसानुल्लाह कल कामयाब हुए थे, लेकिन इमरान खान को भी इस्तेमाल किया, अरशदुल्ला ने भी बॉलिंग की, साजिद खान ने भी, सरवर आफरीदी ने भी। सो केपी मज़ीद किन ऑप्शंस की तरफ जा सकता है? देखिए, अगर बॉलिंग कार्ड को देखें तो सारे बॉलर्स को तकरीबन ऑलमोस्ट सेम तरीके से यूज़ किया गया है, और साजिद के मेरे ख्याल से ओवर्स एंड ऑफ द डे ज़्यादा होंगे, स्पिनर है, अभी तक तो हमें वो नज़र नहीं आए, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, और सर्वर हेल्पिंग हैंड बॉलर्स के लिए। विकेट्स नहीं मिली तो ये एक सेटबैक है केपी के लिए, और ऊपर से थोड़ी फील्डिंग भी हेल्प नहीं कर रही। सर्वर फॉरएंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। सर्वर की जो यूटिलाइजेशन है केपी के लिए अच्छी चीज़ें है कि विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, सिर्फ 15 रन कंसीड किए हैं। कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, केपी इस वक्त ये लुक फॉरवर्ड कर रही है। सऊद शकील एक रियलाइजेशन के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, स्किपर के रोल को समझते हुए, अब तक
बहुत ज़िम्मेदारी से बैटिंग की है सऊद शकील ने, और इसी मोमेंटम को बरकरार रखना होगा। अगर लंच के बाद और फिर टी तक बैटिंग करती है सिंध, तो फिर ये मैच एक ड्रॉ की तरफ जा सकता है यासर। जी हाँ, अगर इसी तरह खेलते हैं, ये थोड़ा स्लो खेलते हैं, जैसे नज़र आ रहा है काफ़ी स्लो खेल रहे हैं अभी। और हाँ, अगर थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, मोमेंटम बनाते हैं अगर थोड़ा, तो ये है कि अगर लीड पे चले जाएं 150-200 की, फिर एक प्रेशर डाल सकते हैं केपी की टीम पे। क्योंकि इनका लगता तो यही है कि आज भी ये खेलें और कल भी ये बैटिंग करें एटलीस्ट लंच तक। या और ये हैं वो बॉलर जो केपी में नुमाया नजर आए। एहसानुल्लाह आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, और इस वक्त भरपूर एंजॉय कर रहे हैं सऊद शकील अपनी बैटिंग को, इन परफेक्ट कंडीशंस को, साजगार माहौल बैटिंग के लिए। एक 121 रन की दूरी है सिंध के लिए, लेकिन सिंध के पास जो बैटिंग लाइनअप है अभी भी मुस्तनद बैटिंग लाइनअप, मजबूत बैटिंग है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सर्वर को एक लाइन और लेंथ और रोल ये दिया गया है कि विकेट टू विकेट बॉल करनी है और कोशिश ये करनी है कहीं से बैटर से गलती करवाई जाए, लेकिन सऊद शकील इतनी मुस्तनद बैटिंग कर रहे हैं कि कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अगर आप सर्वर के फिगर्स देखें तो उन्होंने बॉलिंग ठीक की, 8वां ओवर है और एक बॉल रहता है, अभी 15 रन दिए सिर्फ। इट मींस कि उन्होंने अपनी लिमिटेशंस में बॉल किए हैं, जहाँ पे उनको बोला गया वहीं पे बॉल किए। और अपील ज़रूर हुई है, लेकिन देखना होगा कि ये बॉलर के हाथ से टच हुई थी या नहीं। और डॉट डिलीवरी, ये देखिए इसको सीधे बल्ले से खेला था लेकिन काफ़ी दूर था हाथ ऐसा लगता है, और बैट्समैन अंदर ही खड़े हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही ओवर का अख्ताम हुआ 263 पर 2। और बॉलिंग में तब्दीली हुई है, अशफाक को बॉलिंग के लिए लाया गया है। ये रेगुलर बॉलिंग तो नहीं करते लेकिन पार्ट टाइम बॉलर हैं। जी आज देखेंगे अशफाक की बॉलिंग। जी मैं भी आज ही देखूंगा। कामरान गुलाम, इस वक्त कामरान गुलाम को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और यही उन्होंने किया। और एक कोशिश यहाँ पर, ये देखिए कि फील्डिंग एक स्लिप और गली के साथ, और एक फील्डर जो है वो डीप में है। जी हाँ बिल्कुल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब देखना ही होगा, इस बॉल के बाद पता चलेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो कैसी रहेगी, ये बॉक्स है कैसा। जी हाँ, अशफाक ने पहली गेंद, अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 61.50 की औसत से 2 विकेट्स हासिल किए हैं 66 मैचेस में। ये तो ओवर पिच डिलीवरी और इसको खेले टूवर्ड्स एक्स्ट्रा कवर और ये एक्शन
फील्डर की जानिब से? जी हाँ, प्लान बिल्कुल यही है कि बहुत ही कैजुअल किया जाए इन्हें। अब ये बैट्समैनों को कैजुअल कर रहे हैं, ये अप्रोच जो है ये मेरे ख्याल से अब यहाँ पे थोड़ा सा साजिद खान आज बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं फील्ड में, और शायद कल जो उन्होंने बॉलिंग की तो थोड़ा सा ये था कि उनकी लाइन थोड़ी सी फ्लैटर थी, और आज उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि स्पिन बॉलिंग इज़ मोर अबाउट फ्लाइट इन 4-day गेम। और अशफाक की इस गेंद को खेला है डीप पॉइंट की जाने, प्रोटेक्शन वहाँ पर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। अशफाक आज एक गलती ज़रूर कर गए थे स्लिप में, एक अगर कैच थाम लेते। और यासिर, आप भी अशफाक के साथ कहीं क्लब में क्रिकेट खेलें? नहीं, अभी आए हैं ये प्लेयर्स, मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए। मेरे साथ नहीं खेले इशफाक, इफ्तिखार अलबत्ता खेले हैं, और रिजवान। लेकिन इशफाक ने पिछले साल आई गेस ऊपर नीचे 3 सेंचुरीज की थी, और बैट्समैन अच्छे बैट्समैन हैं ये, साथ में बॉल भी कर लेते हैं। जी हाँ, और बॉल 1 रन अब तक दिया है इस ओवर में, और बिल्कुल ही विकेट टू विकेट उनका टारगेट है, और इसी के ऊपर उनको बॉलिंग करनी है। सॉफ्ट हैंड से इसको सीधा खेल दिया मिड ऑफ की जानिब, और इस गेंद के साथ अशफाक के ओवर के इख्तिताम 264 पर 2 सेन। और फाइनली जो है ऑफ स्पिनर एक्शन में नज़र आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इनका इंतज़ार था। साजिद खान जो कि इस इनिंग्स में केपी के लिए बड़े वाइटल होने चाहिए, विकेट्स एक्सपेक्टेड हैं इनसे, अच्छी बॉलिंग की तवक्को है। बॉक्स में भी तब्दीली, शाह फैसल और अली यूनुस। Sajid Khan for the first time. Slow going, you have to say, this morning from the Sindh batters. That run rate at one stage was at 5.5 runs, has been pulled back by the KP bowlers this morning. 3.83 now is the run rate. Still very good, you have to say that. What happened there? So just pulled away. Sajid, we know that. He wants to sneak through his overs very quickly. Is what he was trying to do. Not much fuss, no drama. Pulling around the wicket to left-handed Saud.
We were there in the morning, the same end we were doing the pitch report, and there is hardly anything in the rough, and the straight is just beautiful. Nothing for Sajid to work from. Yeah, it's been struggle for Sajid Khan. He hasn't got any turn off the pitch. He was really pumped up today, and he was like, this is going to be my day. I'm going to be the hero of the day. So can he be the hero for KP at the moment? They need wicket, quick couple of wickets. That will do. Yeah, his only weapons are change of pace, change of trajectory. Maybe a little bit of slow, low bounce. So wicket is losing pace every day. We've seen that because it's been hot. The sun is beating down. But in terms of turn, there's nothing for him. Yeah, no pace either. So nothing really working for Sajid Khan. And also his line has been very defensive since yesterday. He's bowled more of leg side-ish, middle and leg side-ish, whereas he should be looking to bowl outside the off stump and look to turn. But it hasn't turned. That has made it change his line. 266 for 2. That's the story so far. 384 plays, 266 for 2. The trail 118 runs at the moment. The key is to look forward to that 100 over mark to see if Sindh can get up to 400 and pick up maximum batting points. That will give them a slight lead as well, like we were discussing in the previous stint. As we watch Ashfaq. Gentle medium pacers. So Ali, what do you think, which way this match is heading? I don't know yet. I can't say much, but definitely I'm looking for a result. We have had enough draws here already. This is the 4th game, 3 draws out of 3. Most likely it's heading towards another one. It won't be unfair to say that. The only thing that I can think of that this game can have a result is if Sindh can bowl out KP cheaply in their second innings. And how can that happen? Like I said, if they play 100 overs, Sindh, and just declare at 100 overs, get KP in. Because from there, with 4 sessions left, Sindh are not going to lose that match. And also they can always rely on the magic of Abrar. They have that potential. Abrar, he can run through the side of KP. So if any chance of having a result, I think it will be Sindh from here on. That is because of Abrar, because he is a huge factor in the second inning. Yeah, that's the reason I'm saying Abrar is the trump card. I said the wicket is getting drier and drier. In the air for a little while, but just away from all the fielders. Abrar is, he can give you control on one end. You can let him bowl, and then the seamers can rotate from the other end. Yeah, the question to you would be, are Sindh brave enough to declare at 100 overs, regardless of if they've got the lead or not? Even if that score is even, if they score 118 more runs in the next 30 overs, would they be brave enough to declare and go for a result? The obvious answer, you want me to tell you the truth? But let's just not go there, and let's just hope that they get attacking and get proactive, because if you're not losing a game, then there is no harm and just looking for a result. And if they get a win,
No teams is winning, because I think the games in this round more likely are going to be draws. So if you get away with a win here, it's a huge bonus. You will get ahead in the table. And if for such a big prize, is the risk worth taking? Actually, it's not a risk, because you're not losing the game. And remember, Northern has won their 2 games out of 4. So they're right there at the top of the table. We'll continue talking about it. 266 for 2. Not given enough boundary deliveries. Yesterday they were all over the place. They're coming back to the debate again. So 29 overs for that mark that you talk about, 100 overs, 118 runs they trail by. Let's say 29 overs. If they can get to 130 runs, 30 runs lead, would they still be brave enough? That's the question, to go for the result and give themselves the chance to bowl KP out cheaply and then chase down whatever they have scored. Because both sides are such a quality sides. In fact, all 6 of them. That you have to have those brave decisions going. Yeah, but again, if you look at Sindh's approach today, they've only scored 52 runs so far in the session. Only 2 wickets down, not much threat. That is really not on. I think KP has bowled better today than yesterday evening. I think they've learned a lesson. They've not given enough boundary deliveries. They've stuck to the plan. They've executed it today better. Especially to Umar bin Yusuf, they bowled really well. Look at that, 84 deliveries for just 23 runs. Yeah, but it's not enough threat. That is very unlike Umar bin Yusuf. KP has bowled better. I give them that. With just 2 wickets down, you can understand this approach for the first half an hour, 40 minutes of the day. Get your eye in. But then after that, to bat without any purpose shows that big inside edge. Big inside edge. It's been a very purposeless batting this morning from Sindh. Yeah, spin, hint of spin for Sajid Khan. That will give him a lot of confidence. That is the first time that we've seen him get that spin out of this pitch. That is the benefit you get if you bowl those loopy deliveries, give ball the air, enough time to spin. It's a maiden for Sajid Khan. Still 266 for 2. KP needs to break this partnership ASAP. 118, the trail. Ishfaq will continue. He dropped a sitter in the morning, that of Umar bin Yusuf. He's a seasoned camper. He's been around for a long, long time in KP cricket. He's got a job to do. That of breaking this partnership. Who would be the bowler that will break the partnership? I think Sajid Khan. All eyes on him for KP. He just stopped the scoring completely. Just 2.1 overs and 1 run, which means that Saud and Umar has allowed him to bowl from a position of dominance. This is really inexplicable from Sindh. They're experienced players. They know the trap. One side has been packed and the bowling is done on that side. What do you do about it? Just let them bowl? But I think we got to bowl better too. Regardless of the fielding position, regardless of the plan, you got to be executing it nicely. Yesterday, if you take that example, they had similar sort of field set, but the bowling was too full, easy drive deliveries. And Khurram Manzoor was smashing it all over. But now with this field and bowling according to that length,
I think this is better ploy. They're saving runs. They're not giving away freebies. There you go. Once again, that packed offside field. Saud has really struggled to pierce it in the last half an hour or so. I think, what, 22 overs this morning? And they've only scored 52 runs. Compare that to what they were striking at 5.5 runs per over yesterday. So KP has pulled things back, and which means that Sindh are no longer in that dominant position where they can force for the result. I mean, they can if they want to, but at the moment they're sitting back. Both the teams are just sitting back and waiting for each other to make mistakes. 7-2 field. Did we see how Khurram Manzoor broke that 7-2 field yesterday? He just walked across his stumps and whipped one, and all it take was one shot for the skipper to plug that mid-wicket gap, which means that other gaps opened up on the offside. 266 for 2. Very slow and sluggish from Sindh. It's completely against the directives of the brand of cricket that the Pakistan Cricket Board wanted the domestic teams to play. No purpose. It was all right till yesterday evening, but this morning, yes, I would agree they've been a little slow. Still, they can afford it. The session to follow, I think that will be the session where they would really look to accelerate. They don't want to be in a position where they try to accelerate and lose wicket and give back that chance to KP. Instead, they want to be in the safer zone first and then look to attack in the second session and get maximum runs. Okay, now I'll put you on the spot, Ali. How can Sindh lose this game from here? Just explain to me. Then I would understand why they're batting so defensively. Well, last time you said that yourself, and they just take one bad inning. That can happen in the 4th inning. They can get out early, as you were talking about. As we were talking about KP. Oh, there's a chance. Not quite. So just this one bad inning, maybe it can be the last one. When will Sindh get to bat for that bad innings? Almost a wicket against the run of play. Just came back in time. Neatly played. Just using the pace. Good chase from Waqar. A little bit more purpose in the running. 3 runs taken. Nicely done. Okay, that's positive from both. Played it late. Saud Shakil looks very elegant. And that's the way he plays. Plays it late, plays it into the gap. Good cricket and good running too. But if you look at that run rate, it's still 3.67, which is very good. And I still believe if they can accelerate in this next session after lunch and get some quick runs, declare by T. Why wait till lunch? Come on. They have to be in the safer zone. There's no point losing wickets, early wickets, and put pressure on yourself or the lower batting order. It's 271 for 2. Look at those strike rates from the first two. 116 of 130, 42 of 43. Really gave Sindh a chance to force the issue here, but then Saud and Umar bin Yusuf, especially this morning, they've dropped anchor.
Playing it safe. 25 of 92, Umair bin Yusuf. Saud Shakil, who's also very, very free-flowing player. 78 of 182. See what this foundation does, it puts Sindh in a commanding position. Yeah, that is one way of thinking that they can declare till tea, but if they continue playing till the end of the day, the way these two are playing, they can well get that lead of 200 maybe, 150 by the day end, 150, and then look to put the pressure back on KP tomorrow. If you're giving them a lead of 150 at the end of the day, they need to score 263. Currently they're scoring at 2 runs per over. So that's not going to happen with this approach. This time he's found the gap, but that field is well set. The gap between these two. Just the opportunity for a single. So at current rate, today they batted at 2.25. Give them another 60 overs, they'll only get 130 runs. Come on, they're not going to continue playing like this. I'm pretty sure that after this, the second session after lunch, they're gonna get some runs, some quick runs. They're gonna look to accelerate. Exactly, that's my point. They had no reason to bat like this after the first hour. Just wait. Why are you in so hurry? It's a result, you said. It's a 4-day game. Why did we like it yesterday so much? Because they were proactive. They counter-attacked, gave themselves half a chance, and with this batting, they've squandered that opportunity, in my opinion. See, it's not going to happen every time that KP is going to bowl poorly, or Khurram Manzoor, player like him, will play excellent cricket. It's cricket, it changes. The length has been better today from KP bowlers. They haven't given enough boundary deliveries. They bowled according to the plan, away from the batters. So they've learned. This is what quality cricket is all about. One team dominates one session, you never know the other team dominates in the other one. He was called into question earlier. Just playing well within himself. Saud Shakil just prepared to allow the ball to come close and just... Well, I'm sure this is what Yasir Hamid is saying. Yasir Hamid is agreeing with what I'm saying. With all due respect, I would not like to agree with you. It's 272 for 2. Don't ask for a result. Still wants to play cricket, still involved, still loves this game. It's so difficult. Once you start loving this game, you just can't get over it. Such a lovely game, this cricket. Looks lean and fit. Looking for 2. We'll get there easily. The tall fast bowler couldn't get around in time. You're talking about Sajid. He's got a little bit of rough outside the off stump to work against the right-hander. But like you were making a point, he bowled 2 straight yesterday. Off spinners, aggressive lines are more towards the 4th off stump. He can challenge Umair to drive through the covers and hit those roughs. That first one closer to the bat, maybe just too close, but the second one, he can work on that. Still too close for my liking. It's still better than yesterday. Yesterday it was all leg side-ish. It was all defensive. A little better this morning. Yes, as you said, more towards offside, a little more. See, this is better. This is not bad. Just a change in approach as well, because Khurram Manzoor was slog sweeping those deliveries.
He's a tall man. Put the foot down. And Sajid was all praise for Khurram Manzoor. He said Khurram Manzoor played an extraordinary knock. These two are allowing him to bowl. And when you're in that kind of defensive mode, you miss out on rank long hops. So clearly missed out there. Yeah, this was there to be hit. The length was there, kept a little low maybe. It's been rock solid from these two since morning. That seems to be the plan. 188 deliveries for South Shakil, 97 for Umair bin Yusuf. Nothing's happened off the straight. That makes your bat look wider, especially when you're ultra defensive, like these two have been all morning. 275 for 2. It's gonna change, Shah Faisal, don't worry. After lunch, they'll have some energy, some nice lunch. Come back, look to attack, score at that 4 run per over, what we used to yesterday. You can never compare that 500 they were getting yesterday because Khurram Manzoor was on another level. He was middling every delivery to boundaries. 2.25 on this pitch. I agree, they've been a little extra cautious. They're just waiting. They don't want to give back the initiative they have at the moment. They're in command. He just told me, don't worry. Reminds me of an angry wicketkeeper that I used to play with. He dropped a catch and I just went up to him and I said, it's okay, don't worry. And he said, I'm not worried. So yeah, neither am I. Yeah, but the look on your face says something else. And you're right also, because we've seen 3 draws, we need a result. Outside the off stump. Lots of oohs and ahs without a wicket. This last delivery further illustrates my point. When you're in that kind of mode, look at that. Slow, gentle, wide, you can't put bat to ball. Because it's the mental state that you're in. You're trying to hit it too hard. You lose your rhythm. And batters do lose their rhythm, especially stroke players like these two. Yeah, a lot of people suggesting that a couple of hits over the top and Ashfaq wouldn't be bowling. Look at those figures. He's not throwing hand grenades. 4.3 overs for 2 runs. It makes a lot of sense. Just charge him a little. Just unsettle him. I'll just milk it for 1. Well, his colleagues, Ashfaq's colleagues, call him James Anderson. He's not James Anderson, but if you look at his figures, you may think he is James Anderson. Yeah, only put the figures on. No name. Stats. But he's bowled better. He's bowled that length, that teasing length. So that is probably has held the batters back. Yeah, that's the length. And now, right at the verge of lunch break, I think all Sindh would be hoping is that they go to lunch without losing a wicket, and that will definitely put them in a front seat. With trailing by 108 runs, lots of time left in the game. How much time left? And they can always dominate in the session to follow. I really want South Shakil to get another 100. He's already had 150. With England coming on for Test series, I think he can be a very good prospect. 276 for 2. South Shakil 78 at the moment. So with England coming up,
and the type of form Saud Shakil is in. He plays at number 3. Azhar Ali, on the other hand, scored 100 and a double 100 already in this tournament. 95 test matches to his name. He's one contender. But for that number 3 position, Shah Faisal, what are you going to go with? Saud Shakil or Azhar Ali? Look, at the moment, Ali, there's a lot of people scoring huge runs in this first class season, and middle order batters as well. That opening slot is pretty much sealed with Imam and Abdullah Shafiq. And although Shan is in contention as well, but the middle order, starting with number 3, there's a lot of contenders. Azhar Ali definitely is there, right up there, just 5 tests away from his 100 test match. So is Saud Shakil. Tayyib Tahir has scored 300s. Salman Ali Agha played in Sri Lanka, although he hasn't made many runs. But I think what selectors will be looking for, the runs that matter, the runs that have more impact on games. Which runs have made impact on games in this season? Azhar Ali or Saud Shakil? That was the question. Because if you look at the impact, we haven't seen many results. So those runs. Thank you very much. Still, my question remains the same. Who would you pick, Saud Shakil or Azhar Ali, for number 3 position? Azhar Ali, because he's still holding that position at number 3. And like I said, just 5 tests away from his 100 test. The kind of form he's in, he will be the first pick, I think, on the selectors list. 277 for 2. Kamran Ghulam has decided to try his luck. Yeah, just hoping for this last over before lunch. 40 matches, 26 wickets. Best of 4 for 58. Can he be the magician? Can he break this partnership? That's the question. It does happen in partnerships like these, when you're batting without intent, get so close to the break and they do make a mistake generally, especially against the non-regular bowlers. Set up very nicely. Short is for 2. So we'll really have to hustle to get back. And nicely placed. Just going through the motions. 3 deliveries to go as umpire Nasir had a quick glance at his watch. We'll have to wait a little longer though. Looks like Saud is about to change his bat. Quite a few of the substitutes had already started their net sessions for the lunch break. So let's see who's got the bat for Saud. Just a couple. Normally these days the batters, they do carry a lot more than that, but Saud knew which one he wanted. So what is Rehan Afridi telling him, Ali? You just have to face 3 deliveries. Why change it?
runs there. Just the one. South probably wants to see the rest of the two deliveries from the non-striker end. Leg buys the signal. Nice flight, but the line towards leg side. Easy pickings for a talent like South Shakil. That should signal the end of the first session. Umpire Nasser Hussain calls time on the first session on day 3 here at the Pindi Cricket Stadium. Session, unlike the others, went at a snail's pace. Sindh really took their time. These two batters, good over rate, 28 overs, just the 67 runs. That run rate 2.39 shows there was no intent to push things along from Sindh. Free-flowing stroke players played the whole session and they just made 67 runs in 28 overs. Yeah, KP would be disappointed. They had the opportunity to get that wicket, but the catch gone down in slips. I think that have really put them on the back foot. Had they taken that catch, things would have been different. But they've done a good job for Sindh, these two batters. They started off the day, same wickets down, they haven't lost one and they've looked rock solid. South Shakil is on the verge of getting another 100 for himself, 78 at the moment. Umair bin Yusuf 34, look at that. Khurram Manzoor, Saim Ayub gave them a brilliant start with 116 and 42. And since then it's South Shakil on 78 of 195 alongside Umair bin Yusuf, who supported him well for 34 runs. It's 281 for 2. No wickets in the morning session, although Imran Khan came close. The edge was dropped by Shfaq in the
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के वक्फे के बाद का खेल शुरू होने को है। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस सिंध, डे 3 पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और बैटिंग इस वक्त तक बहुत आसान है। 78 और 34 बिल तरतीब सऊद शकील और उमैर बिन यूसुफ ने बना रखे हैं। 281 है कुल मजमुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये 2 विकेटें कल गिरी थी, आज फिलहाल संभल कर खेल रहे हैं। बॉलर्स के लिए बड़ा हार्ड डे। 2 विकेट सिर्फ मिले 66 रन पे एहसानुल्लाह को। उसके अलावा इमरान खान को कि वो चांस निकालने में कामयाब हुए लेकिन उसको प्रॉपर्ली ग्रैब नहीं कर पाए। स्लिप फील्डर अरशदुल्ला, सरवर आफरीदी, अशफाक अहमद, कामरान गुलाम सब ने स्ट्रगल किया। 384 कुल मजमूआ था 115 ओवर्स में, जबकि सरवर आफरीदी हाईलाइट रहे 148 रन के साथ। कामरान गुलाम ने 93 रन की अच्छी बारी की। 4 विकेट शेयर किए मोहम्मद उमर और अबरार अहमद ने। और अब 281 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं सिंध के। 103 रन पीछे है इस वक्त सिंध की टीम। और लगता यही है इस सरफेस को देखकर कि उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और जिस तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है, बैटर्स के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। 34 रन पे हैं, काफ़ी वक्त स्पेंड किया इन्होंने। और कप्तान दूसरे एंड पे खड़े हुए, इन्होंने भी अब तक 78 रन बनाए और अच्छा वक्त जो है इन्होंने भी स्पेंड किया। 195 बॉलें खेली हैं। तो दोनों इस वक्त अपनी बारी सही जमकर कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हमें तवक्को थी कि स्पिनर्स आएंगे तो कुछ ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे, लेकिन साजिद भी उस तरीके से कोई विकेट नहीं दिलवा पाए अब तक। साजिद खान 21 ओवर्स 62 रन, लेकिन विकेट कॉलम जो है ये डिस्टर्बिंग है इनके लिए। और हम इससे पहले भी बात कर चुके कि साजिद खान का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एक स्लिप के साथ ऑफ साइड पे पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर। और शुरुआत कर दी है स्पिन से। मेरे साथ हैं इस वक्त कॉम बॉक्स में यासिर हमीद, टेस्ट क्रिकेटर। और यासिर, इतना आसान विकेट देखकर जब 103 रन पीछे है सिंध, तो क्या समझते हैं, थोड़ा सा अपलिफ्ट करना चाहिए, अब बैटिंग को थोड़ा तेज़ होना चाहिए? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे। और जिस तरह सऊद शकील 78 पे खड़े हैं, यकीनी तौर पे अपने 100 को टारगेट कर रहे होंगे। और उमैर बिन यूसुफ भी अब थोड़ा सा ये कि थोड़ा बेहतर स्ट्राइक रेट दोनों का स्लो है, बट बारी ले रहे हैं। इस सेशन में, आखिरी सेशन में सिर्फ 64 रन बनाए इन्होंने। तो थोड़ा सा अगर देखें उस प्रॉस्पेक्टिव से जिससे आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से फिर थोड़ा सा इन्हें तेज़ खेलना चाहिए ताकि रन्स ये ऊपर कर सकें। KPK के ऊपर थोड़े रन्स, अच्छे रन्स हों, तो जिससे ये इनकी बॉलिंग को भी एक चांस नज़र आए, तो थोड़ा सा थ्रिल क्रिएट हो सकता है मैच में। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम कम्बिनेशन की बात करें बॉलर्स की, तो थोड़ा सा उम्मीद थी कि अर्लियर ऑन पहले सेशन में जो पेसर्स हैं वो विकेट निकालने में शायद कामयाब हो जाएं। तो कहाँ पे आप दाद देंगे, बैटिंग को, पिच को, या बॉलर्स ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया? जी हाँ, पिच में थोड़ा सा हेल्प है बैट्समैनों के लिए। और जिसमें थोड़े रिलैक्स शॉट्स भी खेले हैं, जिसमें उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तो मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा कम है बॉलर के लिए इस पिच में। और साजिद आज इन्होंने लंच से पहले आए थे बॉलिंग की। कल खुरम मंजूर ने अच्छी बैटिंग की इनके अगेंस्ट, इनको बिल्कुल सेटल डाउन नहीं होने दिया। कदमों का अच्छा इस्तेमाल 1 रन के लिए। एज यूजुअल साजिद का ओवर जल्दी खत्म हुआ। 283 इनफैक्ट 2 के नुकसान पे। इमरान खान टेस्ट क्रिकेटर, 13 ओवर्स में इनके पास भी विकेट कॉलम खाली है। और अपने जो फील्डर्स हैं उनसे सपोर्ट चाहिए होती है किसी भी पेसर को या किसी भी बॉलर को। इनफैक्ट
इमरान खान और एक स्लिप काफ़ी वाइड है और एक गली। और कल भी हमने देखा बसा औकात जो बॉल है वो स्लिप और विकेट कीपर के दरमियान से गुजरती रही, 2-3 मौके ऐसे आए। लेकिन इस वक्त इमरान का वो एफर्ट डिलीवरी एक आध अगर निकले जिससे कोई एज होने का ख़तरा हो तो मे भी कुछ प्रोडक्शन हो सके विकेट के लिए। अदरवाइज इस तर्ज की डिलीवरीज पे यासिर बहुत आसान है बैटिंग। पिछले स्पेल में इन्होंने एक चांस क्रिएट किया था जो कि स्लिप में गिरा दिया गया था। ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। एहसान यंग प्रॉमिसिंग तीसरा मैच खेल रहे अपना। लेकिन इमरान खान से इस वक्त कप्तान को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद ज़रूर होगी कि ये कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोई चांस। और क्रिकेट नाम ही चांसेस का है कि आपको कभी, पहले भी हमने बात की, पेशेंस सब्र का मुजाहिरा करना पड़ता है और कभी एग्रेशन भी। सिंध की टीम जो थी वो ये अब्रार हमें नज़र आ रहे हैं। अब्रार का एडवांटेज था सिंध की टीम को क्योंकि उन्होंने उन पे रिलाई किया और उन्होंने डिलीवर भी किया। अब्रार ने, कप्तान ने पूरा रिलाई किया था। जबकि साजिद खान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद इनका पहला मैच है काउंटी के बाद, तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फुलर और उतना ही अच्छा रिप्लाई। वेल, जहाँ पर हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर अगर हम देखें जो बैटर्स हैं वो भी इक्का दुक्का ही कुछ मौके निकले हैं। अदरवाइज़ जैसे आपने बात की अबरार की, उन्होंने कल फिनिश किया, रैप अप की थिंग्स, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पेसर से स्पिनर्स का यहाँ पर ज़्यादा नज़र आता है। जी हाँ, बैटर्स के लिए जो आपने बात की परफेक्ट बैटिंग स्ट्रिप है ये। अरशदुल्ला जिन्होंने पहला स्पेल किया, एफर्ट की इन्होंने, लेकिन वही बात है पिच से इनको इतना फेवर नहीं मिला, तो जिसकी वजह से बैटिंग कदरे आसान। इस बार मिस टाइम किया ये शॉट, स्टम्प्स में बॉल था, थोड़ा सा फ्रैक्शन। उमैर आज थोड़ा सा स्ट्रगल करते नज़र आए। शुरू में एक चांस भी मिला इनको और ये देखिए मिड ऑन की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन बाहरा किनारा लेके बॉल 1 रन के लिए लकी रहे, मैं समझता हूँ। फिर जी, इमरान जो बॉल है वो लगभग 2-3 दफ़ा मैंने देखा कि आगे रख रहे हैं। दिन के इस हिस्से में कोई मूवमेंट की तलाश में या कुछ बॉल हिले, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन तजर्बा है, स्किल्स हैं, अप्लाई करना है। बहुत ही दिलचस्प मनाज़र हैं और कितनी जल्दी कॉलिंग है, पॉजिटिव, और उतनी अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड बैटर्स की जानिब से। ये बहुत गंदी फील्डिंग, बैकअप जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जी हाँ, शॉर्ट कवर पे टैप किया था और बैकअप के लिए आए थे सर्वर। लेजी एफर्ट, मिस फील्ड हुई और दूसरा रन भी हासिल किया सऊद शकील ने। फ्रेश सेशन का आगाज़ है लंच के बाद, थोड़ा सा फील्डर्स को फुर्ती दिखानी होगी। अच्छा क्लिप किया सऊद शकील ने, टांग पे बॉल थी और उसे 2 रन हासिल किए। एक बार फिर 286 पे 2।
वेल साजिद वर्सेस अबरार अगर देखें तो जो स्पिन है इस विकेट से, उसमें आपको कहीं ना कहीं अबरार को एज अ यंगस्टर ज़्यादा मार्क्स देने होंगे, क्योंकि जब भी स्पिनर प्रोडक्टिविटी दिखाता है, कप्तान की जो एडवाइसेस हैं उन पे अमल करता है या ब्रेक थ्रू दिलवाता है, तो वहाँ स्पिनर एक्सपीरियंस और परफॉर्मर बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। जी हाँ, स्पिन तो देखने को मिलेगी इस पिच पे, ये तो चांसेस हैं, क्योंकि जो जो टाइम गुजर रहा है तो इब्रार शायद इनको दोबारा बॉलिंग का मौका मिले अगर थोड़ा सा पॉजिटिव खेलते हैं सिंध की टीम। तो एक चांस ये भी है कि इब्रार से ये लोग अटैक करवा सकते हैं। रिस्ट स्पिनर और फिंगर स्पिनर में यही डिफरेंस होता है। रिस्ट स्पिनर जो है वो ब्रेक हासिल कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि इब्रार जो है उन्होंने वो काफ़ी इंटेलिजेंट बॉलर हैं, अपनी लाइन लेंथ को मिक्स करते रहते हैं। 288 पे 2 मेडन ओवर हुआ। वेल इमरान खान से कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बात की ऑप्शंस की, इसरार या अरशद या कामरान गुलाम या इवन हम साजिद। अभी ये जो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, लेकिन जो रिजल्ट ओरिएंटेड है वो किसी से भी उस तरह से कुछ चाम नज़र नहीं आ रहा बॉलिंग। ये बिल्कुल, इसकी एक वजह ये भी है कि इन्होंने शॉट्स भी इतने नहीं खेले, कोई चांस ज़्यादा नहीं लिया बॉलर्स ने भी, बैट्समैनों ने भी, और बॉलर्स को वो चांस नहीं दिया कि जहाँ से वो करना चाह रहे थे। जो प्लान भी था उसको अच्छी तरह डिफेंस उनका अच्छा रहा, इसीलिए रन्स भी थोड़े कम बने। शॉट्स पे वो इतना गए नहीं है। इमरान खान के हमने कुछ देर पहले जो रनअप देखा, अच्छा खासा लंबा रनअप है इनका, जहाँ से ये भागते हुए आते हैं। तो यासिर, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लंबे रनअप से जो इनका बॉल है, या फिर उसको कम करके उसमें कोई वेरिएशन ला सकते हैं अपनी बॉलिंग में? देखिए, ये चीज़ इन्होंने ओवर द ईयर्स डेवलप की है, और इसमें इन्होंने शुरू से, इनको जब से हम देख रहे हैं, जब से ये स्टार्ट इन्होंने लिया, इनका रनअप इसी तरह लंबा है। तो उसको अब शॉर्ट करेंगे तो शायद उनकी इंटेंसिटी में कमी आए, क्योंकि लंबा भाग के आते हैं तो इनको एक, इनके रनअप से इनको एक स्ट्रेंथ मिलती है इनकी बॉडी को। तो वो थोड़ा सा इस स्टेज पे आके मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ये काफ़ी सारे साल हो गए खेल रहे हैं, 10 साल हो गए हैं एटलीस्ट। तो अब थोड़ा इनके लिए मुश्किल है, बट यह है कि कोई जिस तरह यंगस्टर होता है उसके लिए आसान होता है ये चीज़ें करना। एक्शन की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह का जो एक्शन है जो हमने कुछ देर पहले साजिद की जानिब से देखा, ये अक्सर जो प्लेयर्स हैं वो बॉल से जो है वो फुटबॉल की तरह का पिकअप करने की कोशिश करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर बआसानी एक रन मुकम्मल किया, और यही अब तक की हाईलाइट है इस बैटिंग की कि जहाँ जहाँ पर रन्स आते हैं ये उसको कलेक्ट करते हैं। और दूसरी जानिब जो हम पहले भी बात कर रहे थे ऑप्शंस की, कि
आप क्या समझते हैं, यासिर छोटे स्पेल्स बेहतर हैं इस तरह की फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में कि जब आपको विकेट ना मिल रहे हो तो जल्दी जल्दी तब्दीली बेहतर होगी? जी हाँ, बिल्कुल बेहतर यही है कि छोटे स्पेल्स कराए जाएं और एक ही जगह पे। और जिस तरह हमने देखा कि देखिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ये भी एक जी एक ये भी है कि आप छोटे छोटे स्पेल्स करें, और एक ये कि आपके जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं उनसे आप लंबा स्पेल करवाएं एक एंड से, और बाकी दूसरे एंड से उनको हेल्प मिलती रहे। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी लंबा खेल चुके हैं, तो ये थोड़ा सा इनको अब थोड़ा प्लान में अपनी वेरिएशन लेके आनी पड़ेगी केपी को। और जिस तरह कामरान ग़ुलाम को हमने देखा, कुछ ओवर्स वो भी कर सकते हैं। अभी इनके एहसान जो हैं वो भी, उन्होंने भी इतनी बॉलिंग नहीं की, आज एक ही स्पेल किया है। तो काफ़ी सारे बॉलर्स यूज़ किए हैं कामरान ग़ुलाम ने, इशफाक अहमद से भी बॉल करवाए और सरवर से भी बॉल करवाए, ख़ुद भी बॉलिंग की, साजिद से करवाई, साजिद तो कर रहे हैं दूसरे एंड से। एक दफ़ा फिर शॉट खेला लेकिन पूरी तरह टाइम नहीं कर पाए, एक्स्ट्रा कवर की तरफ और एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाहते थे। 2 रन्स बनाए, 291 पे 2। जी हाँ, इसको स्ट्रेच किया था जिसको आगे की तरफ खेलने गए, दूर था बॉल, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रॉपर्ली टाइम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अगर अच्छा ये टाइम होता तो मे भी चौका मिल सकता था। 83 ओवर गए, 291 पे 2। यासिर, आप बात कर रहे थे एक एंड से अपने स्टॉक बॉलर को लगाने की, दूसरे एंड से थोड़ी सी तब्दीलियां होती रहें, तो वो जो पेस की वेरिएशंस हैं वो इस लेवल पे बैटर को, जो बैटर है वेल सेटल्ड है, क्या इतना डिस्टर्ब कर पाएंगे? लेकिन कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर क्रिएट करेंगे इनके माइंड में, क्योंकि खुले रन भी नहीं दे रहे। ये एक अच्छी बात है आज के दिन में, ये अच्छा बॉल था, फ्लाइट में डिसीव किया। इस तरह की बॉलिंग, थोड़ा सा ब्रेक भी हुआ, बॉल ऊपर आया। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अब साजिद, अच्छी लाइन है। काफ़ी देर बाद उन्होंने कोई अच्छा गेंद किया, और एक बार फिर जो है बहुत पीछे बॉल, मिस अपॉर्चुनिटी सऊद शकील की। ये बॉल फिर अच्छा किया इन्होंने, तो अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, 291 पे 2। वेल यासिर, इस वक्त साजिद खान जो ऑपरेशन कर रहे हैं या बॉलिंग करवा रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि इक्का दुक्का बॉल जो उनके विपाप हुए, बाउंस मिला। उसके अलावा एहसान उल्ला और अरशद उल्ला जो हैं, इन दोनों में से अगर इमरान खान को एक तरफ से लगाकर अरशद और एहसान के 2 छोटे छोटे स्पेल्स करवाए जाएं। अच्छी फील्डिंग। दूसरी जानिब एहसान अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए कि किसी भी वक्त कॉल आ सकती है, हल्का फुल्का वार्म अप करते हुए। पिछली 2 बॉल्स में जो कि इमरान ने करवाई, थोड़ा ऑफ स्टम्प से बाहर थी लेफ्ट हैंडर सऊद को, और इस दफ़ा इस स्ट्रोक पे
पर काफ़ी क्वाइट लम्हात, खामोश लम्हात इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और यही वो टाइम होता है जिस वक्त अपने प्लेयर जो है वो जेल करते हैं या फिर डीप ब्रीथ के बाद इतने लंबे सेशंस में ऐसा अवसर पैदा करें जिससे थोड़ी एनर्जी आए, क्लैपिंग, चर्पिंग, एक दूसरे को सपोर्ट करना, थोड़ा अलाइव हो गेम। फील्डिंग में कोई स्पेशल एफर्ट चाहिए, कोई अच्छा कैच, बीट हुए लेकिन बॉल कैरी नहीं हुआ पीछे कीपर को। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, नीचे रहा इस जगह से। अप एंड डाउन भी हो सकती पिच, निकला बॉल, अंदर आता तो थोड़ा सा मुश्किल शायद पेश आ सकती थी। रिवर्स स्विंग भी थोड़ी सी नज़र आई, रिवर्स स्विंग। साजिद खान कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जी के साथ आ रहे हैं। लेकिन एक दो डिलीवरीज जो उन्होंने अपने पिछले ओवर में करवाई जहां बैटर को सरप्राइज किया। जी हाँ, बॉलिंग में तब्दीली, एहसानुल्लाह को वापस लाए हैं मीडिया एंड से। 15 ओवरों में 66 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया एहसान ने। नया बॉल भी ड्यू हो गया है केपी के लिए, अवेलेबल है अगर ये लेना चाहें। आगे गिरा हुआ बॉल, सऊद शकील ने आराम से इससे मिड ऑफ की तरफ खेला, लेकिन ये गैप मारना चाह रहे हैं लेकिन वो लग नहीं रहा। अभी 2-3 ओवर्स में हमने देखा लंच के बाद जो कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ जो शॉट खेलना चाह रहे हैं पूरी तरह लग नहीं रहा। अच्छे शॉट्स खेले इन्होंने स्पेशली कवर्स में। जो ऑफ साइड पे अब गैप अवेलेबल है, यहाँ से कोशिश है साउथ की कि वो गैप निकालें, लेकिन प्रॉपरली सही टाइम नहीं कर पा रहे। बोल यासिर, आपने बात की नए बॉल की, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा साजिद का जो पिछला ओवर था इस पुराने बॉल से वो बहुत बेहतर था। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए शायद वो नहीं सोच रहे, अब थोड़ा सा अब साजिद रिदम में नज़र आ रहे हैं। और पिछले 2 ओवर्स जो किए थे वो बेहतर किए थे इन्होंने काफ़ी देर बाद। अच्छा बॉल था। बिल वही छोटी छोटी जो तब्दीलियां वो बेहतर हैं सर कामरान के लिए। एक एंड से उन्होंने इमरान खान को लगाया, दूसरे एंड से साजिद और अब एहसानुल्लाह को। ये बॉल भी उस तरह ऊपर नहीं आया, थोड़ा सा देखें नीचे आया स्टम्प्स की तरफ। शायद बॉल जो है वो विकेट भी अपना थोड़ा सा रंग दिखाना शुरू करे। काफ़ी देर से इस कोशिश में है कि यहाँ से रन्स हासिल करें, लेकिन गैप नहीं निकाल पा रहे। एक रन हासिल किया, लेकिन जो अटेम्प्ट है उनकी, इससे पहले भी हमने देखा कि वो चौके के लिए जा रहे थे कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से। एक अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली जहाँ पर उन्होंने बॉल को तकरीबन हाफ टाइम किया। जी एहसानुल्लाह
काफ़ी उम्मीदें हैं इनको अपने आप से भी और उनकी टीम को भी इनसे उम्मीदें हैं कि कोई शायद एक आध विकेट और हासिल कर सकें। ऊपर खेले, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहा है बॉल लेकिन बाउंड्री नहीं होगी। काफ़ी अनयूजुअल स्ट्रेंज शॉट खेले स्पेशली 4 डे में। ऑफ स्टंप पे पुल शॉट खेले पुल शॉट ऑन द एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। जी इंटेंशंस उनकी यही थी कि बॉल थोड़ा सा शॉर्ट है, इसको खेल जाए ऑन साइड पे, लेकिन स्ट्रोक में थोड़ा अर्ली गए और कहीं ना कहीं कोई क्रिएट हो सकता था चांस, लेकिन लक इस वक्त बैटर के साथ। इस दफा ऑन साइड पे हार्ड हिट, इनफ स्पेस और बॉल फेंस को टच कर गई 4 रन्स के लिए। एक और बैकअप लेंथ बॉल, उसको प्रॉपर्ली यूज किया, 301 रन मुकम्मल किए यहां पर इस चौके की बदौलत। ये देखिए इस दफा बॉल को थोड़ा सा नीचे खेलकर 4 रन हासिल किए और इसके साथ 301 रन का हिंसा भी टीम का अबूर हुआ। .301 for 2. 300 has been brought up with that last boundary in the last over. South getting ever closer to that 100. Now batting on 86. KP still searching for their first wicket of the day. Marvin Yusuf 46. He's also closing in on another 50, following up from that 100 in the second innings last week. Sindh trailing by 83 runs. Still persisting with the old ball. Also that 100 over mark is approaching quickly. Sindh probably would need at least 49 more runs to get that extra point. KP so far no bowling points by virtue of only having 2 wickets. Good afternoon, Asif. Good afternoon, ladies and gentlemen. Another very struggling day for KP. And I just want to ask you about their intentions about Sindh. Bit defensive in bowling, and once again in batting we have seen some intentions from Khurram Manzoor and Saim Ayub, but after that now they're just on defense. I'll come back to that after this over. It's 88 gone, 301 for 2. About Sindh's approach this morning especially, or today overall, I was just talking to Ali before lunch and thinking about it. The only reason that I can think of is that the bowlers have played non-stop cricket since the National T20, and when I was talking to a couple of them, they really also felt tired. Probably the Sindh management wants them to have a good break and probably bat long and once in this game and not put their bowlers into any test unless they just break down. That's the only reason I can think of. But definitely will be worth asking Saud Shakil when Ali Yunus get down to him with the post-match interviews to see what was the thinking behind this approach. But at the moment, that's the only thing I can think of.
Abrar, smiling faces, and when you were talking about the rest of their bowlers, one thing important which I would definitely ask you, that could you see that any change of behavior of pitch, uneven bounces there? Quick run to Umair. Yeah, there is slight change in the pitch today. The ball is keeping a little bit low. We've seen the odd ball hit a crack. In the morning when we saw those cracks, they were there, but they weren't open enough. When the sun beats down, the pace of the wicket, it goes away and gets lower and lower. So yeah, it has been, but nothing really alarming. This is not a minefield at all. See those rough patches either side of the wicket, but they really have no impact. It's just the pace is reducing as the game is progressing. Probably that could hinder in stroke play a little bit. Nice solid punch down the ground, but Ahsan is very, very tall. Good reach to pull that ball down and prevent the runs. This guy is impressive, Ehsanullah. I was talking to him earlier. He's from Mata, Sawat, a village of Sawat actually. So whenever we observed his line of length, his body language, looks very confident, isn't it? We've seen him in National T20, full of promise. It's good to see him in red ball cricket. That's good for his progression. That is elegant. That is beautifully played by Saud Shakil. Just leant into it, just a caress. And the timing and placement was top class. Glorious shot. Glorious straight drive. I must say that this is super classic. He's got such beautiful hands. Not necessarily close enough to the ball with the foot, but he lines them up so nicely. And that bat comes down very straight as well. Left-handers always look elegant when they're driving. Saud Shakil is no different. Into the 90s now. This is not one of his most fluent innings that I have ever seen, but he's still playing a good hand for his side. Change of angle. Round the wicket now with a wide slip and a gully. Saud's defense has been immaculate. Umair bin Yusuf offered a chance, and also a very close leg before, as we watch some trickery. Sajid Khan, like a juggler in a circus. Looks pretty impressed by Saqlan Mushtaq, the former Test cricketer and the head coach of Pakistan cricket team. We have seen his magic during the bowling as well. Good bit of fielding there, the extra cover. He's got a hand to it. Is that man Sajid Khan, full of trickery, not just with the ball in hand at the bowling crease. Look at that, some football skills, but the skills that came to the end. I want to see him do it with a few more balls, just 3 at a time maybe. And then some volleyball skills towards the end. There you go. He needs to do some of that magic when he's at the bowling crease, because his team needs a breakthrough. Yes. If he could show something with his, the magic with his spin, with his fingers coming up. This is the onside fielding. A short leg. Oh. Remain bit down. Yeah, it did keep low. We'll have to see where it landed, because there are 2 foot marks. One is closer to the batsman. This is slightly further back, slightly more outside the line of off stump.
clearly into that rough created by Hamza. And this is good from Umar bin Yusuf. He really preempted that Sajid was looking for that rough. Use of the feet, got down to the pitch of the ball. 48 now to Umar. He's also batted quite slowly for his own standards. He's a very fluent stroke player. He's keeping the field up, Sajid. Both mid-on and mid-off are up. Tempting Saud to go big down the ground. Off the leading edge. It went in the air past the silly mid-off fielder. I'm sure not a chance, but just a little bit of drama. This is what we were waiting for. Landed in the same area. Played on the front foot. In the air, but in the end it was safe. Khurram Manzoor really attacked him, but he's made a good comeback, Sajid. Scoring rate has been down. Look at his economy rate now. He's into his 27th over and just 65 runs. He's put the brakes on. His skipper would like that. Just the one off the over. 307 for 2. Well, plenty of runs from the batters of Sindh. Saud Shakil looking forward to get his 100 and Umar bin Yusuf looking forward to get his half century. A good and strong batting lineup there. A partnership of 110 between these two. 90 overs bowled, still waiting for that new ball. That Kookaburra ball gets really soft very early. So Arshadullah has been brought back into the attack. And like I was saying in the morning, that Hasanullah really wanted to bowl from the far end. He thinks there's more help for the seamers from the pavilion end. Probably this is a signal that the new ball will come. Like all other KP bowlers, Arshadullah has also pulled back his strike, his run rate as well, because he was conceding at more than a 6 and over yesterday. Pulled a good spell in the morning. He could easily have had a couple of wickets had Umar dropped, and a very close leg before shout went against Arshad. Umar is not on 48 if you talk about his batting. Yesterday we observed that the way Khurram Manzoor and Saim Ayub, they were attacking, but Umar came up with a plan, and the plan was to support just his captain. He came towards the close of yesterday, still had 30 balls for his 5 runs overnight. Yeah. That single has been available to them for quite some time. Talking about Arshadullah's spell in the morning, there is Imran Khan, who actually had the chance against Umar, and this one looked very, very close, mighty close. The professor said no, to the dismay of Arshadullah. Yeah, the drop catch came against Imran's bowling. We were talking about Professor. He's Professor of Biology and teaching in a government college, Lahore. And interestingly, he was talking about some anthropology as well when he asked me about, what about your speciality? What was your subject? So he's a keen learner, keen observer. Look at the looks. I'm just missing his glasses.
He had those dark shades on the first day. He's put them in the closet, I think. Hasn't seen them for the last couple of days. A professor of biology doing cricket umpiring. His way of concentrating is that after every ball he turns around, looks at the media center. I don't know if he's searching for you or what. We're anxious to get to that 50. Generally, the standard of umpiring has been pretty good. Very thankless job. Shah Faisal, how important this is that a batter is playing close towards his body, because the last delivery we have observed that he was away, playing away. How important this is, because he's already played 141 deliveries, plenty of time there. .309 for 2. Everybody is taking it easy. Ian Fisher, I'm sure he's a keen follower of football. Need to find out which team he supports. Being from England, I'm sure he'll have a club that he supports. Everybody does in England. So this called for the run. Mid-off was on his heels. Good call from Saud and well responded by Umar. Played with soft hand, and then there's a call. Yes, comfortably taken in the end. Server was late to react. Umar has realized that Sajid is targeting those rough areas, so he's looking to use his feet. Umar was very proactive in the last game when he was batting against spin, and although they were in a very, very huge run chase in the fourth innings, he was a lot more positive than what he's been today. Umar is using his steps. This is the third delivery that he came out. 1, 2, 3 steps. Because Sajid is now started to flight the ball. Earlier he was pushing, and he's targeting those rough patches outside the off stump. There was some anxiety from Umar bin Yusuf. He's not still at the crease. This time he was backing away, looking for that one run. And offside, he's got plenty of gaps. Sweep in the air, and finally he'll get to his 50. This has been a subdued knock by his own very high standards. Umar bin Yusuf, who is a very fluent stroke maker, will still raise the bat to his gallery. The celebration, I think he was on demand celebration from his dugout. 50 not out, Umar. 311 for 2. It was the shot
He was looking to get that, and after that, a small celebrations. And having fun with Sajid. Bit surprised that KP hasn't taken the new ball. Probably they will wait till the 100th over because that's where the points are at stake. But again, they haven't got any bowling point at the moment. They need one wicket to get at least one bowling point. They're just content to stop the flow of runs. This time Umar was allowed to free his arms, but server is placed strategically. Was towards deep point and protection there. He's scored his 50 and got 3 boundaries in his 50. Yeah, he's a very free-flowing stroke player normally, so it's a bit of a surprise, but that has been their approach today. Clipped away nicely, string onto the pad. Saud is very, very strong in that area. Will earn himself a couple of runs. A rare offline delivery from the KP bowlers today. They mainly concentrated on the off stump and outside. They packed that, but Saud was quick to pounce on that rare opportunity. Pretty much settled there. Spent a lot of time on this track, understanding. 6 runs away from his another ton. He looks very, very elegant when he drives through the offside. In the second half of his innings, he's not content with his timing. You saw that look of frustration. He wasn't happy with his stroke. Probably that's the point that Asif was making earlier, that the ball is not coming on as much or as nicely as it did yesterday. The wicket slowing up a little bit, and that will make stroke play a bit difficult. Instead, he drops the wrist, soft hands, and a run closer to his 100. Arshadullah still struggling and working hard to get a wicket, a breakthrough there. A big partnership between these two. Wait. 315 for 2. The photographers are ready now. Photographer is ready now to catch up Saud's. Yeah, ready to capture Saud Shakil's moment of glory. We've seen some great pictures yesterday when Khurram Manzoor got to his 100. He posted some of them on social media. Definitely the moments to cherish, moments to remember. Despite all the videos available, the stills still have their importance and their own old charm.
At the rate Saud has been batting, probably he needs to wait a little longer. I don't see Saud charging down and hitting him for 6 over mid-off. And Khurram Manzoor knew that as well. He said, I'll come back when he gets closer. Runs coming mostly in singles. A boundary required for Saud. Sajid, though he didn't get wicket, but overall he's enjoying in the field. And now change in the fielding. Switched for the right-hander. Long on his back for Umair. Mid-wicket and square leg, just about 15-20 yards inside the fence. Now Sindh trail by 67 runs. Points up for grabs in the next 6 overs. Looks like Sindh are not looking in that direction because they need 33 more runs to get the 3rd point. Personal landmarks probably at the forefront. Good change of pace from Sajid. Really hurried Saud. That's all he's been able to do because nothing much from the pitch. 317 for 2. Well, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bowler has been used now. 7, I beg your pardon. And only Ehsanullah was the successful bowler there. Even Kamran Ghulam tried himself before the lunch. I wouldn't mind seeing Kamran Ghulam bowling to the left-hander on outside his off stump because there is some rough. Off the straight there is nothing for the bowlers. Remember, Kamran Ghulam started off his career as a left-arm spinner. But the arrival of Imran Khan may mean that it's time for the new ball. .67 runs behind Sindh. Keep an eye on that umpire. Are we going to see a new red cherry? There you go. Second time of asking, could Imran Khan break this partnership? Straighten it up. That's a good line, good length. KP of all teams, we've seen, Asif, that they were able to extract less movement than any of the previous teams that we've seen here at the Pindi Cricket Stadium with the new ball. Could this be different, the second new ball? Yes, Imran Khan is an experienced campaigner and remain unlucky this morning. But I think that this is the time for him to do something special for KP. It's gentle northwesterly, so it may help him with his in-swinger. But he straightens the ball down the line. That's his stock ball. Wide of the crease, gets the edge. Unlucky there for Imran Khan. Moral victory here. But Umair will collect a boundary. Again. It was a healthy edge and comfortably landed there. There was no pace actually.
Once again using the crease. Looking to angle the ball in and then get it straightened. Found little bit of movement with those first 3 deliveries. Challenging Umair. See in the distance Ahsanullah warming up. Will he get the chance to bowl with the new ball? Because remember, Arshadullah bowled with the first new ball. Ahsan came one change. There you go. The big man is getting ready. Yes, a call from the captain. Get ready for thrilling action. He was really aggressive yesterday. Watchful. There you go. Sajid Khan, the juggler, the footballer, the magician, and the entertainer. Yes, Sajid Khan enjoying himself there. Trying well. Found the gap. Will it have enough legs to go over the fence? Umair is running hard. Sarwar Afridi holds the ball back inside the field of play. New ball travelled nicely. Umair wasn't looking to hit it hard, just timed it. Yes, nicely timed towards mid-wicket and found the gap for this couple. Yeah, it was a long chase for Sarwar. Does well in the end. .324 for 2. First hour in the afternoon session is done and dusted. Time to have some drinks.
वेल 324 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पे, जब सऊद शकील और उमैर बिन यूसुफ इस वक्त बिलतरतीब 96 और 59 पे खेल रहे हैं। पानी का वक्फा ख़त्म हो चुका और इन दोनों के दरमियान जो शराकत दारी है अब तक की, ये देखिए किस अंदाज से इन्होंने रन्स बनाए। दोनों ने अपना अपना हिस्सा रन्स का इसमें डाला और ग्राउंड्स के तमाम इतराफ में स्ट्रोक्स खेले। पेसर हो, स्पिनर हो, रिप्लाई बेहतरीन था दोनों बैटर्स का और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ सिंगल लिए, जहाँ पर बुरे बॉल थे वहाँ पर उन्होंने अच्छे फ्री स्ट्रोक्स भी लगाए। मुझे ज्वाइन किया अली यूनुस ने। अली, वेलकम करते हैं आपको कॉम बॉक्स में। जहाँ बहुत ही शानदार ये पार्टनरशिप रही सिंध के लिए। यहाँ मुश्किलात रही हैं, सिर्फ एक ही बॉलर 2 विकेट हासिल कर चुके वो हैं एहसानुल्लाह। उसके अलावा अगर आप देखें तो सभी को मार पड़ी है, इकॉनमी हायर साइड पे है। 324 रन 2 विकेट्स गवा के 384 रन बनाए केबी ने पहली इनिंग में। सरवर आफरीदी 148 रन बना सके। जवाब में अच्छा धुएंधार जवाब है ये। 324 रन 2 विकेट गवा के। खुर्रम मंजूर की सेंचुरी, एहसानुल्लाह ने 2 विकेट हासिल किए। सिंध ट्रेल कर रहा है 60 रन से। वेल एहसान के पास इस वक्त है नया बॉल और कितनी अच्छी कारकर्दगी होगी ये अगले आधे एक घंटे में पता लगेगा, जिस अंदाज से वो इस बॉल को यूज़ करेंगे। और इससे पहले भी अली हमने देखा आज सुबह के सेशन में, उम्मीद थी कि बॉलर्स कहीं ना कहीं कुछ तेज़ करेंगे जो केपी के बॉलर्स हैं, लेकिन उस तरीके से प्रॉपर्ली हमें कुछ नज़र नहीं आया। तो क्या इस नए बॉल से कहीं ना कहीं कुछ लक तब्दील करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली। जब नया बॉल आता है तो थोड़ी पेस भी ज़्यादा होती है। अब डिपेंड करता है कि अब कैप्टनसी कैसी होती है, कैचिंग कैसी होती है। सुबह के सेशन में हमने देखा एक आसान से कैच भी छोड़ दिया गया। तो ऐसी पिच पे जहाँ पे हार्ड वर्क होता है बॉलर्स के लिए, वहाँ पे कैचर्स को एक्स्ट्रा एफिशिएंट रहना पड़ता है, हर चांस को लेना पड़ता है। ऑफ स्टंप से बाहर, गली और स्लिप के दरमियान से। जैसे अली बात कर रहे थे, नया बॉल, इसको जरा सा फ्लैश करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ ये आइदर वेज जा सकता है। नया बॉल अगर विकेट्स ले सकता है तो रन्स भी तेज़ी से होंगे क्योंकि पेस मिलेगी। देखिए फ्लैश किया था आउटसाइड द ऑफ स्टंप और तेज़ घुमाया था बल्ले को ज़ोरदार तरीके से। इसी वजह से ये बॉल उड़ता हुआ स्लिप के ऊपर से 4 रन के लिए चला गया। अब ये वो वक्त है इजाज़ जहाँ पे सिंध को तेज़ खेलना होगा, रन्स की तरफ जाना होगा क्योंकि अब सिर्फ 56 रन की ट्रेल रह गई है। यहाँ से प्रेशर डालना होगा केपी के ऊपर, तेज़ रन्स करने होंगे। कोशिश करनी होगी कि अगर दिन के एंड तक एटलीस्ट ये जो लीड है, लीड की तरफ जाएं और 150 रन तक की लीड हासिल कर सकें। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। बॉल की रफ्तार, पेस इनफैक्ट ज़्यादा हुई है क्योंकि ये नया बॉल है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है। एहसानुल्लाह ने बहुत इम्प्रेस किया था नेशनल T20 में। थोड़ा ज़रा बाउंसी पिचेस थी, इस डिफरेंट पिचेस थी, कंडीशंस डिफरेंट थी, तो अच्छी बॉलिंग की है। ये एक अच्छी लर्निंग है कि मुश्किल विकेट्स पे जहाँ पे बैटर्स को मदद मिल रही हो वहाँ पे बॉलिंग कैसे करनी है, आपने कैसे चांस लेना है। रन सेविंग लेंथ नहीं होनी चाहिए, विकेट टेकिंग लेंथ होनी चाहिए। ये बेहतर लाइन है। रन लेना चाहते थे, एहसानुल्लाह को उठते उठते बहुत टाइम लग गया क्योंकि इतने लंबे कद के हैं, काफ़ी टाइम लगता है नीचे से ऊपर आते हुए। तो विकेट्स हासिल करनी होंगी और ये बेहतर बॉलिंग थी। थोड़ा मुश्किलात में डाला उमैर बिन यूसुफ को और वाहिद यही ऐसे बॉलर नज़र आए जो थोड़ा थ्रेट लगे हैं सिंध की बैटर्स के लिए। थोड़ी पेस जनरेट की है, बाउंस जनरेट किया है। काफ़ी इम्प्रेस किया इन्होंने, पहला सीज़न खेल रहे हैं प्रॉपर सीज़न। नेशनल T20 में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही, यहाँ पे भी अच्छा आगाज़ किया अपने करियर का। एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है एज़ फार एज बॉलिंग इज़ कंसर्न। जी हाँ, स्ट्रेट इनफ। और उससे ऊपर जो इस वक्त लम्हात हैं, इनके लिए ये भी सीखने का मौका है कि जब आपको विकेट नहीं मिल रहे और बैटर्स जो हैं वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, पार्टनरशिप अच्छी है, पिच जो है वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है,
तो अभी जो बॉल करवाया हमने देखा कि जो उनके अपने जैसे बात की जो आगे पड़े हुए बॉल हैं या फुलर हैं थोड़े से ऑफ स्टंप से बाहर होना चाहिए, जहाँ पर बैट्समैनों को आप खिलाएं, जैसे आपने 2 स्लिप ले रखी हैं। जहाँ थोड़ा लालच देना होगा बैटर्स को, एक ऐसी लेंथ जहाँ पे बैटर को भी लगे कि ड्राइव लग सकता है, लेकिन वो ड्राइव वाला एक्चुअली होना नहीं चाहिए, थोड़ा खिंचा होना चाहिए, तभी आपको वो स्लिप कॉर्डन जो आप 2 फील्डर्स देख रहे हैं वो काम में आएंगे। क्योंकि जो सीधा बॉल कर रहे हैं वो निगोशिएट आसानी से कर रहे हैं दोनों बैटर्स। जिस तरीके से जितना शानदार डिफेंस उमैर बिन यूसुफ का है, अगर आप विकेट्स में बॉल करते रहेंगे तो वो डॉट होता रहेगा, सीधा खेलते रहेंगे, आपको थोड़ा चांस लेना होगा। 328 पर 2 सिंध। साउथ शकील ने बहुत ही सॉलिड इनिंग खेली है और यहाँ पे नींद का टाइम हो गया और ऐसी ही बैटिंग चलती रही तो यहाँ पे सब सो जाएंगे। थोड़ी इंटेंट बेहतर करनी होगी, थोड़ा पॉजिटिव और खेलना होगा। शायद हम होप कर रहे हैं कि जब से साउथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे हमें थोड़ा एग्रेशन नज़र आएगा, थोड़ी स्ट्रोक मेकिंग नज़र आएगी, क्योंकि भी टी का सेशन होना है, उसके बाद वाला सेशन डिफाइन करेगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। इन्हें कोई परवाह नहीं है मैच किधर जा रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन 100 कर रहा है, ये अपनी धुन में मगन है। रिलैक्स कर रहे हैं सिंध के बॉलर्स भी। मीर हमजा लेफ्ट साइड पे, सब स्लो हैं, इंतज़ार कर रहे हैं साउथ शकील के 100 का। और इनकी तो क्या ही बात है, टेंशन में है, परेशान है साउथ शकील के लिए, शायद यही सोच रहे हैं। जैसा कि रिलैक्सिंग मोमेंट है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, हकीकी तौर पर जो बैटिंग है उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सबकी नज़र शायद इसी पे है कि साउथ एक और सेंचुरी बनाने के करीब है और बहुत वक्त लिया इन्होंने। 246 बॉल हैं। जी हाँ, नॉर्मल आज से कुछ साल पहले अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की तो ये नॉर्मल इनिंग है, एक अच्छी सॉलिड इनिंग है। लेकिन अब जब हम इंटेंट की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, रन स्कोरिंग की बात करते हैं, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो जी हाँ शायद थोड़ा स्लोअर साइड पे है। लेकिन मैं होपफुल हूँ कि जब 100 मुकम्मल कर लेंगे तभी इस मैच को चलाएंगे, थोड़े रन्स करेंगे ताकि रिज़ल्ट की तरफ मैच आए। हमने काफ़ी ड्रॉ देख लिए, 3 मैचेस देख लिए, एक और देखने की हिम्मत नहीं है जास, एक तो रिज़ल्ट आना चाहिए। एज हुआ और बॉल गैप से होती हुई फेंस पार कर गई 4 रन्स के लिए। ये शायद शॉट कुछ जगा सके लोगों को। या और इसके साथ ही अपने 100 रन्स मुकम्मल किए। एक बहुत ही शानदार, एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग रही है साउथ शकील की जानिब से। एक ऐसे टाइम पे जब सिंध को ज़रूरत थी एक सॉलिड इनिंग की, इन्होंने यहाँ पे अपनी टीम के लिए स्टैंड अप किया है और एक शानदार सेंचुरी स्कोर की है। एक कैप्टन इनिंग, एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग, फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ स्किल, जितनी भी तारीफ की जाए साउथ की कम है। बहुत ही शानदार रही है इनिंग। .49 ये स्ट्राइक रेट है इस 100 का। कुछ भी करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 100 बहुत मायने रखता है इन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए। वेल अब देखना यह है कि इन 3 फिगर्स के बाद साउथ की जो बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट है वो कितना इंप्रूव होता है। ये अपने 100 रन्स एक रिस्की शॉट से मुकम्मल किए। नया बॉल है, सिर्फ एक स्लिप रखी है, गली है। यहाँ पे थोड़ी टैक्टिक्स देखने होंगे और बहुत ही हम्बल सी, सिंपल सी सेलिब्रेशन रही, क्योंकि इनिंग अच्छी रही है ये। और इनके बरक्स अगर आप देखें तो जब खुर्रम मंजूर ने कल 100 रन मुकम्मल किए थे तो सेलिब्रेशन देखने लायक थी, लेकिन यहाँ पे एक हम्बल तरीके से
शायद उनको शायद ये अंदाज़ा है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा काम हुआ है, मुझे बैटिंग करते रहना है, रन्स करने हैं, लीड बढ़ानी है। लेकिन लीड बढ़ाने के लिए अब थोड़ी 100 रन्स के बाद इंटेंट चेंज करनी होगी। जी, और उसके साथ ही जो रोटेशन है ऑन मेरिट खेला। अगर हम देखें उनकी इस इनिंग को, जहाँ पर बुरे बॉल थे वहाँ पर उन्होंने उनको उस अंदाज से खेला जहाँ पर रोटेशन करनी चाहिए थी, उस अंदाज से। तो अब जैसे आप बात करें कि जो स्ट्राइक रेट है वो इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि 51 रन पीछे है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चाहे के वक्फे तक ये जो 51 रन है इसको उतार के उसके बाद का जो सेशन है थोड़ा सा एग्रेसिव नज़र आना चाहिए। जी बिल्कुल, और अब ऐसी सिचुएशन में है सिंध कि यहाँ से हार नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम है और मैच में अगर एक ही रिज़ल्ट इनको जाना चाहिए वो जीत का है। इस दफ़ा फिर एज लगा और खाली जगह थी, फुटवर्क किया फुटबॉल के ऐसे अंदाज में और चौका करवा दिया। यहाँ स्लाइड हो बेहतर थी। जहाँ डिसअपॉइंटेड नजर आए हमें इमरान खान, एक कैच छूट गया, एक कैच बीच में से चला गया, कुछ फील्डिंग लैप्सेस देखने को मिले। 9 रन आ गए इस ओवर में। फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह मौजूद थे लेकिन बेहतर एफर्ट रिक्वायर्ड थी। हवा में बॉल गई, जैसे आपने कहा कि स्लाइड बेहतर ऑप्शन होती। ये एरिया अच्छा है, दूर से खेलने चले गए थे, यहाँ पे स्लाइड मारी जा सकती थी, लेकिन फास्ट बॉलर हैं, फुटबॉल स्किल्स भी अच्छे नहीं हैं। 337 पर 2। एहसानुल्लाह, नज़रें जो हैं इन पे जड़ी हुई हैं कि कैसे केपी को इस मैच में वापस लाया जाए। सवाल ये है एजाज, क्या आपके पास जवाब है इसका? शॉर्ट पिच डिलीवरीज, टारगेटेड बाउंसर्स, अदरवाइज आपको इस तरह से पंचेस पड़ते रहेंगे। एक और चौका। जहाँ अप्रोच और इंटेंट में वाज़े फ़र्क नज़र आया हमें। 100 रन के बाद अब हम देख रहे हैं कि रन्स की तरफ जा रहे हैं साउथ शकील। एहसानुल्लाह का बॉल थोड़ा खिंचा हुआ था लेकिन अच्छे तरीके से इसको मनूवर किया है ऑफ साइड पे साउथ शकील ने। क्वालिटी बैटर है, देखिए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। यहाँ बॉल ऐसी पिच पे तो हमेशा ही 4 रन के लिए जाएगा। इतना अच्छा टाइम हुआ था कि फील्डर मौजूद थे लेकिन उनके पास भी कोई चांस नहीं था कि बॉल रोक सकें। तो अब हम शायद थोड़ा फायरवर्क्स, थोड़ा धुआंधार बैटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे साउद और उमैर बिन यूसुफ से, क्योंकि ट्रेल जो है सिर्फ 43 रन की रह गई है। जी, और साउथ की बैटिंग की अगर हम बात करें तो एट टाइम्स थोड़े फ्लैशी थे, क्योंकि हमने देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर गली की जो पोजीशन का एरिया है वहाँ से कहीं ना कहीं उनके जो स्ट्रोक्स है वो निकलते रहे। मुझे लगता यही है कहीं ना कहीं कोई वेट एरिया था जहाँ पर बॉल गया। उसके बाद अब कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द सुखा सकें। क्लोज आई अंपायर प्रोफेसर नासिर और उनके साथ खालिद महमूद। थोड़ा तसल्ली बख्श कैंप होगा सिंध का, और अगर कपड़े से ना सूखे तो उसे हवा में फेंका जाता है बॉल को सुखाने के लिए। साजिद खान, देखिए अंपायर को मत अनफिट कर दीजिएगा, क्योंकि तीसरा अंपायर मौजूद नहीं है। आखिरी मैच में भी अंपायर आफरीदी अनफिट हो गए थे तो मैच रेफरी अली नकवी को अंपायरिंग करनी पड़ी थी आके। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसी पर्सनालिटी है वैसा ही रुमाल है, कलरफुल, बहुत ही शानदार इंसान है, नफीस इंसान है, अच्छे डिसीजंस देते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब के फेवरेट हैं। बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर भी, और मैं पहले भी बता दूं कि इनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है जो ये पढ़ाते हैं। एज हुआ और इस दफा आसानी के साथ कैच थामा। और साउथ की पहले भी हमने बात की कि थोड़ा सा फ्लैशी हो सकते हैं और इस अटेम्प्ट में अपनी विकेट गंवा बैठे। जहाँ इंटेंट थोड़ी चेंज की थी, रन्स के लिए जा रहे थे, आगे पिच हुआ, बॉल ड्राइव करने गए, लेकिन अच्छी इनिंग रही, शानदार इनिंग रही, सॉलिड इनिंग रही साउथ शकील की जानिब से।
और शायद रन्स की तलाश में थोड़ा जल्दी कर गए। और ये लेंथ, इस लेंथ की हम बात कर रहे हैं, चौथा मैच है, यही लेंथ है जो आपको विकेट्स दिला सकती है इस पिच के ऊपर। अगर आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं इस लेंथ के ऊपर तो आप कामयाब हो सकते हैं। कि अच्छा कैच साहबजादा फरहान की जानिब से, और एक ऐसी ही बॉलिंग और ऐसी ही कैचिंग की ज़रूरत थी सॉलिड इनिंग का इख्तिताम करने के लिए। सऊद शकील ने 105 रन बनाए और अब 341 पर 3 सिंध। डिजर्व करते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। सऊद शकील कैप्टन नॉक रही, बहुत ही सॉलिड नॉक रही, टेम्परामेंट बहुत शानदार, पेशेंस बहुत शानदार, और जिस तरह की ड्राइव्स खेली हैं दिल खुश कर देने वाली। जितने स्टाइलिश नज़र आते हैं जब ये अपने फुल फ्लो में होते हैं। और अब उनको रिप्लेस किया एक और शानदार प्लेयर ने, फवाद आलम, एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर। और तो शायद कई लोगों को इत्तेफाक नहीं होगा उनके स्टांस से, लेकिन जिस इफेक्टिव हैं, रन्स करने आते हैं और बहुत सारे रन्स करने आते हैं। ये क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, पैशन है, और इस वक्त तो टीम की ज़रूरत भी है। जी हाँ, एग्जैक्टली। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ फिटनेस, स्टेमिना, 195 मैच, 14,000 से ज़ायद रन्स, 296 हाईएस्ट और 4200। यहाँ 66-50 हैं, 4200 हैं। कन्वर्जन रेट बहुत शानदार है, और फर्स्ट क्लास लेवल में मुझे नहीं लगता कि इतनी शानदार कन्वर्जन रेट किसी और की होगी। ये शो करती है कि जब ये 50 रन करते हैं तो ये 100 ही करते हैं। लेकिन इनका जो सामना है, अब एहसानुल्लाह के सामने है, 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, और शायद अब उनको आइडिया हो गया किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। 2 स्लिप से एक गली के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। मिड विकेट का फील्डर मुझे लगता है कि शायद उसको अगर तीसरी स्लिप में ले लिया जाए, जो शॉर्ट को स्क्वायर कहेंगे इसको, एग्जैक्ट मिड विकेट तो नहीं कहेंगे, तो शायद थोड़ा बेहतर हो सके, क्योंकि अब थोड़ी समझ आई है एहसानुल्लाह को कि कहाँ बॉल पिच करना है। आते ही वेलकम किया इस शॉर्ट बॉल से, और ये बेहतर है कि अब जब आप गो के एक्सपीरियंस है, लेकिन है नहीं अभी इस क्रीज पे। या वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, सर से काफ़ी ऊपर बॉल था, लेकिन जिस ये सऊद शकील की विकेट, अच्छी लेंथ पे गिरा हुआ बॉल, एक्सपेंसिव ड्राइव करने चले गए, खड़े खड़े फुटवर्क ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और एक आसान सा कैच साहबजादा फरहान के हाथ में दे डाला। और शुक्र किया होगा कि कैच नहीं छोड़ा है, कितनी मुश्किल से एज लगता है एजाज कि उसके बाद अगर स्लिप फील्डिंग कैच नहीं पकड़ती है तो दिल टूट सा जाता है बॉलर का। स्टंप से बाहर, ऑन साइड पे ये खेला इनफैक्ट। और जैसे अभी अली बात कर रहे थे कि शॉट्स के लेग पे एक फील्डर है, वैसे इस वक्त जहन की तारीफ करनी चाहिए, इस जहानत की इनफैक्ट, कि जिस अंदाज से वो बॉलिंग करवा रहे हैं। जी अकॉर्डिंग टू द प्लान, और शायद इसी वजह से ये फील्डर यहाँ मौजूद था। काफ़ी डीप चले गए थे क्रीज में, ऑलमोस्ट के विकेट के काफ़ी पास आ गए थे। फवाद आलम बहुत ही शानदार क्रिकेटर, बहुत कम इतने सब्र वाले क्रिकेटर देखे होंगे एजाज हमने जो फवाद आलम है। 10 साल इंतज़ार किया अपनी बारी का, और जब बारी आई तो क्या खूब जवाब दिया है क्रिटिक्स का। क्रिकेटर हो तो फिर ऐसा हो जो इतना इंतज़ार करने के बाद अपने बल्ले से जवाब दे, मुंह की बजाय। तो ये बहुत एक लर्निंग है यंगस्टर्स के लिए कि आप अपने सर झुका के परफॉर्म करते हैं, साल हाँ साल परफॉर्म करते रहें तो बारी आती है। साहबजादा फरहान भी वैसी ही एग्जांपल है, साल हाँ साल रन्स करते हैं, पेशेंस सब्र के साथ,
अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जब भी आएगी, जब मौका मिलेगा पाकिस्तान से खेलने के लिए। अच्छा कैच रहा, एक सही टेक्निक है, ऑस्ट्रेलियन टेक्निक जिसे कहते हैं। और थोड़ी सी जान या इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हुआ, लेकिन इसको एक्यूरेट करना पड़ेगा मज़ीद, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने वो कैच या विकेट लिया उसी लाइन पे बॉल रखना होगा। या अगर इस एंगल से मूवमेंट नहीं मिलेगी, बॉल बाहर नहीं निकलेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि डिफेंस बहुत अच्छा है, एग्रेशन भी शानदार रहा है। कल से हम देख रहे हैं, जब आप में आपके पास इतनी पेस हो, इतने लंबे कद के हों, इतने जानदार बॉलर हों, तो थोड़ा एग्रेशन तो बनता है। शोएब अख्तर की याद दिलाते हैं मुझे ये, बॉलिंग से नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एग्रेशन से। जैसे वो बोलते हैं फेंटा, ऐसा ही बॉलर हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल था और उसी तरह इसको खेल गए। अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ और इसी के साथ 344 3 के नुकसान पे। ट्रेल जो है वो 40 रन की है, 68 रन पर मौजूद है उमैर बिन यूसुफ। आई थिंक यहाँ से जो उमैर का जो रोल होना चाहिए वो तेज़ रन करने का होना चाहिए। फवाद आए हैं, थोड़ा सेटल इन होंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ही ब्लॉक नहीं करने हैं बॉल, आप रन की तलाश में रहना है। बहुत जल्दी साजिद खान को ले आए हैं बॉलिंग कराने के लिए, यही एक नया पैंतरा हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर हैं फवाद आलम, नए प्लेयर आए हैं। देखना होगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कैसा काम आता है। फवाद आलम यूजुअली हमने देखा है कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इनफैक्ट फास्ट बॉलर्स के आगे हमने उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए। तो कामरान गुलाम ने क्या बेहतर समझा है कि ऑफ स्पिनर को लगाया जाए, नया बॉल है, क्योंकि जितनी असिस्टेंट मिलनी है फास्ट बॉलर्स को वो नए बॉल से ही मिलनी है, तो मैक्सिमम आपको चांस फास्ट बॉलर्स को नए बॉल पे देना होगा। जो और ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक विकेट जो है वो पेसर ने हासिल की, ऑफ स्टंप से बाहर वो बॉल रखकर। बिल्कुल इस वक्त कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस पेस अटैक में, लेकिन एनी हाउ यहाँ पर कप्तान की सोच, स्पिन को देखते हुए मुआवजना कर सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इनको जब लाया तो क्या सोच समझ के लाया, क्योंकि बातचीत ज़रूर हुई होगी। और कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं कुछ ही देर में वक्त बताएगा। थोड़ा सा पीछे बॉल पड़ा था, स्पीड बेहतर थी। लेकिन अब फवाद सामना करेंगे साजिद का, और जैसे अभी अली कह रहे थे कि उमैर को यहाँ पर मेजर पार्ट प्ले करना है। अब देखना यह है कि किस अंदाज से फवाद अपनी इनिंग का आगाज़ करते हैं। देखिए प्रेशर इतना है नहीं, मैच कहीं जा नहीं रहा है, 39 रन की से ट्रेल रह गई है। यहाँ से दो ही रिजल्ट सिंध के लिए हो सकते हैं, या ड्रॉ या वो जीतेंगे। हार मुझे नहीं लगता यहाँ से सिंध का मुकद्दर बन सकती है, तो इसलिए प्रेशर के बगैर आप बैटिंग कीजिए, रन्स कीजिए, स्ट्रोक्स दिखाइए, एंटरटेन कीजिए, आपको कीजिए, हमें एंटरटेन करें, इंटेंट दिखाएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। बहुत आसान, क्योंकि जिस वक्त साजिद बॉलिंग करवाने के लिए आ रहे थे तो काफ़ी एग्रेशन है उनके फेस पे, वो एग्रेशन जो है वो बॉलिंग में भी होना चाहिए। हमें इन्हें बसा औकात अभी कुछ देर पहले भी एक्टिव होते हुए देखा।
बहुत अच्छी फील्डिंग, और इसी तर्ज की जो सपोर्ट है वो चाहिए यहाँ पर बॉलर्स को। अभी लेकिन बल्ले का इन्वॉल्वमेंट था। 345 पे जा पहुंचे, जैसे बात हो रही थी 39 रन की, तो इतना प्रेशर नहीं है, ऐसा फ्री फ्लो आना चाहिए। और उमैर के पास ये एबिलिटी है कि वो इस 69 को कन्वर्ट करें आगे जल्द अज जल्द 3 फिगर में। जी अब यहाँ से मैच चलाना होगा और वो जिम्मेदारी उमैर बिन यूसुफ की होगी, क्योंकि वो ऐसे हैं जिन्होंने 69 रन बनाए हैं और बड़े अनलाइक उमैर बिन यूसुफ ये इनिंग रही है, क्योंकि हम देखते रहे हैं नेशनल T20 में बहुत अग्रेसिव रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे जैसे स्टक से होके रह गए एक जगह पे, नहीं अग्रेशन देखने में नहीं आया हमें। 99 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 345 पर 3 सिंध। Finally a breakthrough for Khyber Pakhtunkhwa, and this man Hassanullah with the wicket with the second new ball. Ball, Sindh need 5 runs in this over to collect another point. Have to wait and see if Umair shows intent to go towards that or just play in his calm, serene way that he has done in this innings. You have to say the tactics from both teams have been strange. Imran Khan bowled a very good over to South, the previous one. He got the edge. And then he was swapped immediately when the new batter came in. That's Quaid-e-Azam, who's very good against spin. We'll have to wait and see if it was just meant to change the ends or what. Because Ehsanullah likes to bowl from the other end, so it should not be that. Five of 5 needed to collect the batting point. Umair has called. Fawad was on his heels, wrong end. Or was it? They think they would have got him if it was a direct hit, but Fawad was certainly on his heels. Close shave. Well, it was quick, but I must say that. Whoa. Yeah, he was in. Pick the right fielder, you have to say Umair bin Yusuf, because it was Imran Khan Senior. Not the swiftest of movers in the KP side. It was quite risky. There's no need to take risks the way they are playing. Because Umair is well settled there. Quaid-e-Azam. It's a good matchup for KP, I think. Look at that slips. The first slip is very, very wide, and now the second one has moved into a fine gully. Initially, it looked like second and third slip. Just a back of a length. He did try a bouncer against Fawad in the last over. A real high one, and then the next one was up around his chest height. Real good bouncer is when it's just above his shoulders and below his head. Ehsanullah is the key here.
KP wants to make quick inroads. This spell is very important. We've seen this before. Nice full delivery. A chance there. Oh, what are you doing, Quaid-e-Azam? Is he nervous? Is he anxious? Plenty of noise in the field there from the KP boys. What is happening here? Normally he's a very calm character for Quaid-e-Azam. Well, yes, no, and in the end, there was no mutual communication. But Fawad, that slight misfield from Imran Khan. But Umair, comedy of errors. Very wayward throw there. First the fumble and then a very wayward throw from Imran. Yeah, somehow Fawad is rattled. He's normally very calm at the beginning of his innings. He's playing a shorter ball. Is Ehsanullah coming too close to that danger area? Just a polite word there from umpire Khalid, just asking him to just stay away from that danger area. You have to say umpire Khalid Mahmood has had a couple of very good games. I was about to say that Fawad was really put to test by the Australian fast bowlers in that series against Australia. Most of them, they were bowling round the wicket to him. Especially Cummins was bowling around the wicket. Hassan has got him rattling. It's another chance. Everybody's a bit frustrated. 346 for 3. It was kept low and wicketkeeper was not able to collect that delivery, and Ehsanullah was demanding. He's not fine, I think. Yeah, that second bounce was nasty. I think it hit him on the box or just above box on the abdomen. Hassan just wanted him to grab the ball and get the run out effected. But Fawad is back on strike. And that is, well, I was about to say that is what he would like, because he's a good player of spin and wants to play Sajid. But now KP has changed the plan. A late change in mind there from the skipper, because Arshadullah has been given the ball. And we were talking about that combination of Stark and Cummins against Fawad. The left arm quick, tall left arm quick, and the right arm fast bowler. Well, it's not Cummins and Stark, but it's Ehsanullah and Arshadullah. One thing which Quaid-e-Azam struggles, and captain Kamran Ghulam changed his mind in the end and brought the fast bowler from the other end as well against Quaid-e-Azam. And yes, if you do remember that the way Pat Cummins got him bowled, it was in-swinging delivery, and we have seen and observed a couple of times in that series that he bowled out there. Wicketless so far, Arshadullah. 2 slips in a gully. Yeah, that's the fuller length. And Fawad had trouble against those quality world-class seamers. But like we all know, Fawad is a very hard-working cricketer. He must have gone back and assessed what mistakes he was making. His start of the season has been good.
Once again putting himself in contention for that spot in the middle order in the Pakistan Test team. Remember, Pakistan is playing 5 Test matches in just about 6 weeks, starting the beginning of December. First 3 against England and then 2 against New Zealand. Big season of international Test cricket. Hard to think about Test cricket when we see the World Cup has just begun. Plenty of T20 cricket before that. Yes, before the thrilling Test matches here at Rawalpindi Cricket Stadium, and then England, as you said, England and New Zealand coming to Pakistan. Before that, we'll be watching some action in Australia, T20 World Cup, and of course that full of thrill. Qualifying rounds has started with a couple of huge upsets. Amer really lent into it. Protection there. Irfanullah Shah, it looks like it. Couple of substitute on the field as well for KP. The end of last over, the 100 overs were brought up. So Sindh failed to get that extra batting bonus point because they're still 348. They had to be there at 350. Really, you'd have to say that they didn't calculate it correctly. And these points, they come and haunt you at the end of the long season. Imran Senior was bowling nicely, but in the end there's a change. Asking for the LBW, and up goes the finger. There you go. Fawad Alam trapped on the crease. That delivery came in and just struck on the pad. Umpire Nasir Hussain has been asked question quite a few times. And this time that finger went up pretty quickly. The shake of the head and the message to Fawad Alam that you can get on your bike. He's not happy, but it was a good call from Nasir Hussain. Prolific Fawad Alam, didn't last very long. Gone for 2, 349 for 4. New man in Saad Khan. Joining the party with Umar bin Yusuf. .300s in his career, averaging very good, 42.43. 300s. He likes to score them big and he likes to score them quick. This was a good bowling change, you have to say. Sajid Khan was ready to bowl to Fawad Alam, and at the last minute Arshadullah was asked to bowl, and it was an inspired change and a good one. Fawad Alam at the beginning of his innings, he would rather play spin than pace. Two slips in a gully. Sindh still trail by 35 runs. Approaching tea on day 3. Saad is a very free-flowing stroke maker. Seen him play very nicely in the previous games. Hasn't been able to convert though to 100. There you go, Fawad Alam. Trapped in front. You could see that hint of leg stump behind him. That impact was on midland leg and probably would have crashed into middle stump. Thought long and hard, Nasir Hussain, before that dreaded finger went up. Good decision. Very calm and calculated.
Angle face of the bat. Saad is running hard. May just have enough legs. Yes, indeed it does. 4 runs for Saad to get off the mark. It was a gentle push towards a third man, and in the end get the boundary and off the mark with this 4 runs. Talking earlier about which way this game is heading. Obviously getting 10 wickets is a problem on this pitch. Sindh just trailing by 31 with 6 wickets in hand. It can either go 2 ways. They just let KP have a hit just before the close tonight, or just get themselves ahead 150, 170 tomorrow by lunch, if that was possible. And then ask KP to survive the 2 sessions, give their bowlers an outside chance to dismiss KP cheaply. But at the moment it looks like the second option is more viable, the way Sindh has batted all day today. So there's a tea time in dressing room, and Rifatullah Memon, the head coach of KP, Umair is very prolific off the back foot. He'll come back for second. These 2 youngsters are very, very quick between the wickets. Saad runs well, so does Umair. yes, play towards point area, and good running between the wickets, good calling. See, as soon as he hit the ball, he knew there were 2 runs. Ran the first run hard. Always, you told as a kid to run the first run hard. Helped it on its way. Incredible stroke from Umair bin Yusuf. Fetch that, Ahsanullah. Wow. Very good shot from Umair bin Yusuf. Sensational stuff. He was trying to come up with a bouncer, but the length was not good. Picked up so nicely for the maximum. This is an amazing stroke. Back of a length, not really a short pitch delivery, just got underneath it. Worth another look. Definitely. Good Yorker, good comeback. Did get a bat on it. But that stroke on the previous delivery was an incredible stroke. It was a very good Yorker from Ihsanullah. Look at this. And in the end, well played by Umair bin Yusuf. Belated appeal, but umpire was quick to mention that he did get an edge to it. Seen this many times. Khalid Mahmood has had a great game. Ahsan is running in with good rhythm in this spell. He's getting the ball through nicely. Look at that. Short leg. Saad wouldn't hold back, because Saad is a stroke player and he's got good range of strokes. Another of those Sindh batters who's not very tall,
But that stroke from Umar bin Yusuf, like I said, is worth another look. Have a look at that. Back of a length, not a real short pitch delivery. Just got inside the line slightly and just helped it on its way. The flick of the wrist. The balance was amazing. Not a textbook stroke, but beautifully executed. A typical T20 stuff. Umar did start to play T20 cricket for Sindh this year. He did play match-winning knock in the semi-final as well. What was that, Ehsanullah? Good bouncer, because it took Saad by surprise, but it was nowhere close to anything. He must have heard something. A good teasing over from the tall fast bowler. It was a bouncer and well left in the end by Saad. Ehsanullah was excited and asking for the caught behind. It was miles away from anything. 362 for 4. So always exciting to see quick fast bowlers running in, bowling quick. We saw that yesterday, although yesterday the counter attack was amazing. These two batters from Sindh in the middle are very capable of doing exactly the same. But I think the bowlers have learnt. They were too full for quite a long time with that new ball yesterday, the KP bowlers. Now they're mixing it up nicely. The full deliveries with good short pitch stuff as well. It's a very good contest on. Front foot defense is an absolute picture from Umar bin Yusuf. Sindh is in good position now, just 22 runs behind, and they could get some lead. And as you were talking about, that if they get 100, 150 lead and then put pressure on KP's batters, could be a good idea. Gone through the gap. Another chase for Imran Khan. The ball is following him. The senior fast bowler. He's been made to work hard. Couple of runs. Yes, Imran Khan looks pretty tired. And, Irshadullah targeting leg stump, I think not a good idea when a new batter there, or Umar bin Yusuf already settled there, not out 82. Yeah, change of angle now, coming around the wicket. Inside edge. Very, very unlucky. Arshadullah is bowled with great heart today and some skill, but no luck. He heard what you are suggesting, Shah Faisal, that coming round the wicket, targeting outside the off stump, and it was very close. Look at that inside edge and remained lucky. Little bit of movement as well defeated Umar's booming drive. Umar closing in on that second consecutive 100. Although you have to say in this innings, he's had great slice of luck on more than one occasion. But in the previous game, his 100 was chanceless and almost took his side to an improbable victory on day 4, chasing 381. As they say, when you're in form, you cash in, because when you're out of form, anything like this happening, he could easily be crashing into his stumps, and there's nothing you can do about it. He will just wait to survive a couple of deliveries just before tea. Flowing drive. That area has been protected. That has saved KP quite a few runs. That fielder at deep point.
Yes, it was quite confident a drive from Umair, and now probably the last delivery before the tee. Saad is there, and the idea was very good from Arshadullah. And now again, he's coming around the stumps for Saad. I beg your pardon, over the stumps, yes. Wristy flick. We've seen this from Saad. He loves to play in that mid-wicket area. Last delivery before tee. And time for a cuppa, says Professor Nasir Hussain. The afternoon session evenly shared, I think, as the game is meandering along. 369 for Sindh, just 15 runs behind on the first inning. And Umair bin Yusuf is still there, 87. Saud Shakil got 100 in this session. 24 overs. The over rate was slightly slow. Mostly medium pacers. Fast bowlers were employed. 82 runs and 2 wickets. Good action there in the afternoon session. Yes, it was a good session for KP. Got a couple of wickets. Sarfraz Ahmed is there. He's back. Appreciating his youngsters. And after good batting of Khurram Manzoor and Saud Shakil's 100, Umair bin Yusuf still there. Fawad Alam bit disappointed. And now Saad Khan. Muhammad Hassan still there to support his batting. 369 for 4. More hard work in the session for the KP bowlers. Imran Khan still wicketless. Arshadullah got his wicket, and Ahsanullah with 3 wickets has been the pick of the bowlers for KP in terms of wickets. A total of 103 overs. Saud and Umair started off the session proactive, looking to put the bad balls away. Umair got to his 50. Had a slice of luck, like I said. This has not been his best knock. He's hung in there. I suppose a lot of the action came with the second new ball as Saud brought up his 100. Second 100 of the season. Muted celebrations. Another aerial shot. Saud was looking to break free after his 100, and doing so he lost his wicket. Fawad Alam didn't last very long, trapped in front by Arshadullah at 2 with the new ball. And the session was brought to a close by Saad and Umair bin Yusuf. This was incredibly well played, and more luck for the Sindh right-hander. Story of the match so far: 384 plays 369, and Sindh trail by just 15 runs at tea on day 3. Players are taking tea at the moment. We'll take a break as well, and we'll be back with you with live action in just about 15 minutes.
मैच इस वक्त अच्छे टाइम से चल रहा है, इवनली पॉइंट्स जिसे कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने पहली इनिंग में 384 रन बनाए, जवाब में सिंध ने 369 रन बनाए हैं। 2 प्लेयर्स ने सेंचुरी स्कोर की, खुर्रम मंजूर और सऊद शकील ने। और जो ट्रेल है अब सिर्फ 15 रन की रह गई है। जानते हैं अपने फेलो कमेंटेटर यासिर हमीद से कि आप यहाँ से ये मैच किस तरफ जाता हो देख रहे हैं। एक सेशन आज पूरा खेलना है। सिंध की साइड अभी सिर्फ 4 विकेट्स गंवाई हैं। साद खान और उमैर बिन यूसुफ क्रीज पे मौजूद हैं। 15 रन की ट्रेल है। यासिर, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू अली। और जी बिल्कुल 15 रन्स पीछे, 2 विकेट्स हासिल की। उमैर बिन यूसुफ जो अपनी 100 के करीब है। शुरू में स्ट्रगल किया लेकिन बाद में अच्छा खेल रहे थे और अभी तक खेल रहे हैं 7 चौके और 1 छक्के की मदद से। और इमरान खान जो कि बॉलिंग का आगाज़ करेंगे पवेलियन एंड से। 18 ओवर किए इन्होंने भी, 74 रन दिए हैं। विकेट कोई हासिल नहीं की, एक कैच ड्रॉप हुआ था इनकी बॉल पे। अच्छा, ये सेशन डिटरमिन करेगा कि मैच किस तरफ जाएगा। ट्रेल है 15 रन की। यहाँ पे अगर सिंध की साइड थोड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेलती है, इंटेंट दिखाती है रन्स करने की, तो शायद कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। इमरान खान पहला बॉल करेंगे। शानदार तरीके से खेले हैं लेकिन फील्डर मौजूद हैं। ये प्लान रहा है दोनों टीमों का। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पैक करके बॉलिंग कर रहे हैं। रन सेविंग स्ट्रैटेजी कहेंगे इसे। जी हाँ, रन सेविंग भी। और गुड पॉइंट, आपने अच्छा पॉइंट रेस किया कि अब यहाँ से एक सेशन है इनके पास एटलीस्ट, इसमें लीड ले सकते हैं। और केपी की टीम अगर कल 2 सेशन खेलती है सपोज और इब्रार के हाथ में बॉल हो तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। और कल आखिरी दिन है। ये आउटसाइड चांस है सिंध के पास, वो भी इब्रार की वजह से, क्योंकि वो एक्स फैक्टर हैं। उनमें सलाहियत मौजूद है कि वो रन थ्रू कर सकते हैं टीम को। एक्स फैक्टर है, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे इतना कुछ नज़र नहीं आता है कि मैच में इब्रार के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होगा। लेकिन उससे पहले आज का सेशन और लीड कितनी लेते हैं ये देखना होगा। सिंगल हासिल किया, तेज़ी से भागे, अच्छा रन है ये। उमैर बिन यूसुफ ने शानदार नेशनल T20 में परफॉर्मेंस रही, लेकिन 181 बॉल ले लिए अपने 87 रन के लिए। कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 50 रन शॉर्ट है एटलीस्ट सिंध की टीम। अगर 50 रन होते तो 35 से 40 रन की लीड अभी हो सकती थी, लेकिन बहुत टाइम लेके खेले दोनों। शायद मेरे ख्याल से इनके माइंड में यही होगा कि चले जितना ऊपर कर सके और मैच हम सेफ हो जाएं हारने से। और ठीक है, ड्रॉ ही बनता है इस मैच में। या 3 मैचेस हम ऑलरेडी यहाँ से देख चुके हैं जो कि ड्रॉ हुए हैं इस ग्राउंड पे, जो हमने विटनेस किए हैं। और उसमें से 2 ऐसे मैचेस थे जिसमें हम सोच सकते थे कि रिजल्ट पॉसिबल था। सेंट्रल पंजाब और सिंध के दरमियान जो मैच हुआ, फिर सदर्न पंजाब और सिंध के दरमियान जो मैच हुआ। तो इंटेंट की जब हम बात करते हैं, जो पॉजिटिव क्रिकेट की बात करते हैं, वो सिर्फ रन स्कोरिंग में नहीं होने चाहिए, अब डिसीजन मेकिंग में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अग्रेशन होना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि सिंध अगर टोटल बराबर भी करता है 14 रन के बाद, आप फिर भी आउटसाइड चांस ले सकते हैं कि बराबरी पे भी अगर चांस दे दिया जाए, केपी को दोबारा बैटिंग पे भेज दिया जाए और चांस लिया जाए आउट करने का। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है, नॉट बैड थिंकिंग, लेकिन वो माइंडसेट, क्योंकि ये पॉइंट्स की ज़्यादा गेम है। ये वाली ट्रॉफ़ी जो है रिज़ल्ट की इतनी गेम नहीं है, इसमें पॉइंट्स बड़े मैटर करते हैं। क्योंकि पहले जो आप जिस चीज़ की बात करें 90s की या उस वक्त की क्रिकेट की, तो रिज़ल्ट बहुत मैटर करता था कि मैच जीतना है, ये वाला मैच जीतना है हमने हर हाल में। तो उसके लिए फिर वो उस तरह प्लान करते थे, एग्रेसिव प्लानिंग होती थी। अब जो है वो 370, अब इन्हें सिर्फ 30 रन चाहिए तो 1 पॉइंट और इनको मिल जाएगा, तो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। या पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ पहले 100 ओवर में हैं। जो भी पॉइंट्स हासिल करने हैं, जिस तरीके से हासिल करने हैं,
अच्छे तरीके से खेले हैं, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल। ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं साद खान, जब भी अपने पूरे फ्लो में होते हैं ये बहुत ही शानदार दिखते हैं। 4 रन हासिल किए। ये अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट और बैलेंस अच्छा था इस शॉट में, इसलिए कनेक्ट हुआ। अदरवाइज़ हमने देखा इनको यहाँ से 2 दफ़ा लेग बिफोर हुए, जब बॉल थोड़ा सा पड़ के अंदर आता है इन्हें तो ये, क्योंकि सर इनका घिरता है, बट इसको कनेक्ट बहुत अच्छा करते हैं ये, लाइक ओल्ड फैशन। ट्रेल अब 10 रन की है और जैसा आगाज साद खान ने किया, एक कैमियो चाहिए यहाँ पे। एक तेज इनिंग साद खान की तरफ से मैच को बदल सकती है और उनका साथ देना होगा उमैर बिन यूसुफ को, दोनों को तेज़ खेलना होगा। आज दिन के अख्ताम तक एटलीस्ट इस लीड को 100 रन तक तो जाना ही होगा। जी हाँ, जानी चाहिए, जा सकती है, लेकिन 110 रन करने हैं 100 रन के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल के लेट्स सी, क्रिकेट है। 374 पे 4। जी हाँ, सिंध की टीम के लिए बिल्कुल एक ऑप्शन आ गया है कि अब उन्होंने वो रन्स पूरे कर लिए, अब लीड की तरफ जाएं। लग रहा है इनकी ये वाली थिंकिंग डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगी। 150 रन ऊपर या 200 रन ऊपर, उसके बाद केपी की टीम को सामने लेके आया जाए। अरशदुल्ला जिन्होंने 1 विकेट हासिल की, फवाद आलम की बॉलिंग पे आए हैं मीडिया एंड से। 20 ओवर 97 रन और 1 विकेट। थोड़े महंगे ज़रूर साबित हुए लेकिन 1 विकेट फवाद आलम की हासिल किए। अब ऐसा लगता है जैसे जैसे मैच का इख्तिताम करीब आ रहा है यासिर, बॉलर्स ने भी अपनी लाइन पकड़ना शुरू कर दी है। शायद उनको अंदाज़ा हो गया कि किस लेंथ पे बॉल करना है इस पिच पे। आज सुबह भी जब हम बात कर रहे थे तो लेंथ को फाइंड नहीं कर पाए हैं। ये बहुत अच्छी बात की आपने। ये जो बॉल इन्होंने की है इस लेंथ पे, बॉल पीछे से कैरी भी हुआ है, तो शायद इस बॉल पे सीम हिट हुआ है, उसके बाद पीछे से बॉल अच्छा कैरी हुआ है। और जैसे कि हमने बात की थी कि सिंध जो है वो तीसरा मैच खेल रही है इस ग्राउंड पे, और उनका जो फील है इस ग्राउंड की या जो उनकी समझ है वो बेहतर है केपी से, क्योंकि केपी अपना पहला मैच खेल रही है यहाँ पे और सिंध अपना तीसरा मैच खेल रही है, तो डिफरेंस तो होता है इस तरह। लेकिन अगर बॉलिंग में का कंपैरिजन किया जाए तो सिंध भी इनकंसिस्टेंट रही है। जैसे आपने अभी कहा कि तीसरा मैच खेल रहे हैं, उनको तो इस ग्राउंड में इन पिचेस पे कहाँ बॉलिंग करनी है उसका सबका अंदाज़ा हो जाना चाहिए, लेकिन शायद इनकंसिस्टेंसी बॉलर्स में इनएक्सपीरियंस है। मोहम्मद उमर, मोहम्मद आसिफ। एक और चीज़ कि सिंध ने 2 मैचेस अच्छी कंडीशंस में बॉल किए थे, वहाँ पे बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। तो ऑब्वियसली जब थोड़ी सी बैटिंग कंडीशंस आती हैं तो फिर बॉलर्स तो स्ट्रगल करते हैं, तो ये चीज़ भी एक हुई है उनके साथ। आपने कहा अच्छी कंडीशंस, जब हम पहले दिन इस पिच पे भी आए थे, इनफैक्ट चौथे मैच है हमारा, जब हम पहले दिन आके पिच देखते हैं तो घास मौजूद होता है। इस पिच पे भी घास ज़रूर मौजूद था, तो राइट एरियाज़ को हिट करना होता है। आई गेस राइट एरियाज़ को उस तरीके से हिट नहीं किया है दोनों टीमों ने। जी, घास बिल्कुल वैसी है जिस तरह पिछले मैच की थी, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी और इस पर हमने बात भी की थी कि इससे पिछले मैच में टोटली ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो उस चीज़ ने बॉलर्स को बहुत हेल्प की थी। हवा चल रही थी और कूल ब्रीज थी और बादल भी छाए हुए थे, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा होता है, कंडीशंस का भी हेल्प होता है। जी, ज़्यादा हेल्प तो सर्दन पंजाब के बॉलर्स को मिली थी क्योंकि उन्होंने डोमिनेट किया था एक दिन। इलियास ने 5 विकेट्स हासिल की थी, अब्बास ने शानदार बॉलिंग की थी, लेकिन फिर वही बात, सिंध ने उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। थोड़ी सी धूप निकली, कंडीशंस ईजी हो गई, वो एरियाज़ को में बॉल करना ही भूल गए। मीर हमजा वाहिद ऐसे बॉलर नज़र आए जिन्होंने कंसिस्टेंटली बॉलिंग की है उस अच्छे एरिया में, लेकिन शायद पेस के फुकदान की वजह से थोड़ी विकेट्स हासिल नहीं की उन्होंने। ये अच्छी लाइन है, इनको स्टंप्स के अंदर जो इनकी फेवरेट शॉट है ये खिलाएं।
काफ़ी ओल्ड स्कूल, जैसे 90s में हम फास्ट बॉलर्स देखा करते थे, उनकी याद दिलाते हैं अरशदुल्लाह। जानदार हैं, तगड़े हैं, लंबे कद के हैं, हाई आर्म एक्शन है। कबीर खान की भी याद आती है मुझे तो उनके एक्शन देख के। 90s में ऐसे अक्सर बॉलर हम देखा करते थे जो इतने तगड़े होते थे। जी हाँ बिल्कुल, कबीर खान बड़ी ज़बरदस्त स्विंग करते थे। 97 भी आउट किए हुए उन्होंने सीज़न में, रिकॉर्ड। तीन 375 पे 4। कबीर खान का भी आपने जिक्र किया यासिर, क्या ही शानदार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, पर अनलकी रहे कि उनका मुकाबला वसीम भाई के साथ था। ज़्यादा क्रिकेट खेल नहीं सके पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन क्या शानदार रिदम, क्या शानदार एक्शन, क्या शानदार स्विंग। जी हाँ बिल्कुल, कबीर खान जिस सीज़न में मुझे याद उन्होंने रिकॉर्ड किया था, आई डोंट नो, वकार भाई का रिकॉर्ड तोड़ा था काउंटीज़ का, और 114 आउट किए थे उन्होंने सीज़न में। 2 ट्रॉफीज़ में 114 विकेट्स, और साहिल शाह उनके पार्टनर होते थे बी बैंक में भी और पेशावर में भी। तो मुझे याद है जब कबीर भाई के हाथ में बॉल होता था तो वो आते थे, बैट्समैन आता था, पहली बॉल लेग बिफोर बाय, हर इनिंग में 5 7 5 7, ये उनका हम देखते थे यार, हर मैच में 5 7 एक इनिंग में। तो ऐसी परफॉर्मेंस में बॉल का कितना हाथ होता था यासिर? ड्यूक का बॉल यूज़ होता था या कोकोबरा यूज़ होता था या ग्रेज यूज़ होता था? और सोचे हम लोग कितने खुश होते होंगे हम फील्ड में आते थे और वो आउट कर देते थे और हम वापस थोड़ी देर में ही फारिग। तो ये माजिद शाह और जाहिद सईद। और एक और बात की भी खुशी होती होगी कि उनको फेस नहीं करना पड़ता होगा क्योंकि वो आप ही की टीम में खेलते थे, अपोनेंट नहीं थे आपके। तो बॉल का जिक्र मैं आपसे कर रहा था, कौन सा बॉल यूज़ करते थे और एज अ बैटर आपको कौन सा कंफर्टेबल रहता है? ड्यूक से खेलना ज़ाहिरी बात है ज़्यादा हिलता है कोकोबरा के मुकाबले में। सबसे जो इजी बॉल है खेलना वो मेरे ख्याल से कोकाबूरा है, क्योंकि कोकाबूरा में सिर्फ नया बॉल होता है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद जो है बैटिंग के लिए बहुत आसान है कोकाबूरा। बस आपने सिर्फ ग्लाइड करना है, बॉल को लाइन में आना है और खेलना है। और ये बॉल देखें बहुत अच्छा हुआ, अच्छा छोड़ा, गुड जजमेंट। और जो ग्रेस का बॉल था वो बहुत ही ट्रिकी। ड्यूक का बॉल जो था वो बेसिकली तो था, नाम उसका ड्यूक था, लेकिन वो बना मेरे ख्याल से सियालकोट में ही था। और ड्यूक का वैसे इंग्लिश बॉल है जो इंग्लैंड में यूज़ होता है, उससे भी हम टेस्ट मैचेस खेले। लेकिन ड्यूक का बॉल ये था कि ड्यूक का बॉल जो नया बॉल था वो बहुत इजी था, और आफ्टर 10 ओवर्स वो स्विंग होना शुरू हो जाता था, और 35 से 38 40 ओवरों में टीम फारिग। तो नया बॉल उसमें मैं तो ये करता था, मैं नए बॉल में जाके मैं अपनी शॉट्स खेलता था। तो नया बॉल बड़ा इजीली मैनेज होता था, पता नहीं क्या वजह थी, नया बॉल नहीं उस तरह स्विंग होता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बॉल सेमी न्यू की तरफ जाता था, फौरन वो अपनी जो है वो चाल चलन बदल देता था। हाँ, और जब घास वाली पिचेस हो, ड्यूक का बॉल हो, कबीर खान जैसे बॉलर हो, फजले अकबर जैसे बॉलर हो, साजिद शाह जैसे बॉलर हो जो स्विंग करते हों, तो बैटिंग तो डेफिनेटली मुश्किल होगी। और वहाँ पे जो रन्स करके बैटर आता था उसका कॉन्फिडेंस और स्किल लेवल और टेक्निकल लेवल बहुत ही हाई होता था। जहाँ चांस हो सकता है देखना आसानी से मुकम्मल कर लिया रन। अच्छा क्रीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर इमरान को आप देखें तो इस ओवर में सारी उन्होंने क्रीज़ यूज़ की। ये देखें, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट उमैर की अच्छी है। पिछले मैच में भी हमने देखा अच्छी रनिंग की इन्होंने। यहाँ यंग हैं, फिट हैं, फील्डर भी शानदार हैं दोनों।
कदमों का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फुटवर्क भी अच्छा है। और अब जो ट्रेल है वो सिर्फ 8 रन की रह गई है। शानदार परफॉर्मेंस। यहाँ मैं कहूँगा कि एक पॉइंट ऐसा लग रहा था जैसे सिंध शायद इस मैच में बहुत पीछे रह जाएगा, लेकिन जिस तरीके से काउंटर अटैक किया है खुर्रम मंजूर ने, सऊद शकील ने, साइम अयूब ने इवन, शानदार। और अब उमैर बिन यूसुफ 90 पर मौजूद हैं। अपनी कंसेक्यूटिव दूसरी सेंचुरी होगी अगर ये 10 रन बना लेते हैं। एक शानदार प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए। 376 पर 4 सिंध। मोहम्मद हसन जो इसके बाद आने वाले बैट्समैन हैं, सरफराज अहमद की वापसी हो गई है। शायद 2 दिन छुट्टी मनाने घर गए थे, वापस आ गए, रिलैक्स लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं, हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। यंगस्टर्स के साथ भी बर्ताव बहुत ही अच्छा रहता है। एक अच्छे इंसान है सरफराज अहमद, इसमें कोई शक नहीं है। एक अच्छे लीडर हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला यहाँ पे अरशद उल्लाह को और 2 रन हासिल किए। यहाँ अगर लेफ्ट हैंडर होते तो डेफिनेटली बहुत ही ख़तरनाक बॉल होता। स्ट्राइक पे होते, उनको बॉल हिट हुआ है थाई के ऊपर वाली साइड पे, वो देखें किक। ये लंबे कद के हैं, हायाम एक्शन है। जहाँ थोड़ी बाउंसी पिच होगी, थोड़ा घास होगा, जानदार पिच होगी, ये बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं। अच्छा रन है ये, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जी हाँ, डेफिनेटली अच्छी रनिंग अगेन। और आप बात कर रहे हैं इनकी डेंजर की कि ये डेंजरस हो सकते हैं घास वाली पिच पे। डेफिनेटली अगर ये पहली इनिंग में भी बॉल करते तो, अगर पहले अगर बॉलिंग करते ये तो उस वक्त हम देख सकते थे इनकी। या अली मॉइस्चर का फायदा उठा सकते थे। ह्यूज शॉट, लेकिन नासिर हुसैन ने कहा कि ये नॉट आउट है। अच्छे अंपायर हैं, सॉलिड अंपायर हैं। कमाल बॉलिंग। अगर बल्ले को ना भी लगता तो इम्पैक्ट जो था आउटसाइड द ऑफ स्टंप था। उसके बाद अगर बल्ले को ना लगता फिर पता नहीं देखते, बट इम्पैक्ट जो था वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप था। अच्छी पर्सनालिटी है इनकी। पंच किया है शानदार तरीके से, प्रोटेक्शन मौजूद है वहां पे, 1 ही रन बन पाएगा, लेकिन बहुत जोर से शॉट मारा था ये। ऐसा इवन और मजेदार बॉल आ रहा है बल्ले पे। अच्छा शॉट, लेकिन बाहर की तरफ निकला बॉल। अगर आप देखें तो इस बॉल को इन्होंने बाहर निकाला, तो शो कर रहे हैं अपने स्किल्स अरशदुल्लाह। से पिछला बॉल अंदर आया था, ये वाला बॉल बाहर की तरफ कट हुआ, एक बार फिर बॉल अंदर लाए। कंसंट्रेशन का जवाब नहीं। उमैर बिन यूसुफ ने बताया है कि उनकी टेक्निक कितनी अच्छी है जब डिफेंस की बात आती है। और नेशनल T20 में हमने देखा कि वो अटैक भी बहुत शानदार करते हैं, हर तरह का स्ट्रोक मौजूद है, इनोवेटिव हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार करते हैं, फील्डर कमाल के हैं, एक कंप्लीट प्रॉपर क्रिकेटर हैं।
जी फील्डर्स जो हैं उनको बॉल दिखा रहे हैं, लेकिन खालिद भाई ने उसको डिक्लाइन की, उनकी जो अपील थी बॉल चेंज करने की। तो इस वक्त साजिद खान जो है वो वापस आ रहे हैं अटैक पे। एक लेफ्ट हैंडर मौजूद है क्रीज पे, तो अब देखना होगा, क्योंकि पुराने बॉल से जब बॉल चेंज होने वाला था उस वक्त इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। 30 ओवरों में 70 रन दिए, इकॉनमी बुरी नहीं है, बट विकेट्स का कॉलम थोड़ा सा मिसिंग है। अब ये विकेट्स हासिल करते होंगे तो क्या करते होंगे, पूरी टीम को जगा के रखते हैं, लाउड है, बोलते रहते हैं, खुश रहते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी है। एक स्लिप और सिली मिड ऑफ। बात नहीं, बल्ले का इशारा जब करते हैं तो बल्ला हाथ हिलाते हैं खालिद भाई, लेकिन ये शायद कुछ और ही मामला था। बहुत क्लोज, बहुत क्लोज, और मैं कहता हूं कि तेज रनिंग, फिर स्ट्राइक रोटेट की साद खान ने। अच्छा रिस्पांस एक दूसरे को सिंगल का। एक दफा फिर देखते हैं इस लेग बिफोर की जो शाउट हुई है, इनसाइड एज हुआ या नहीं। आई थिंक कुछ था ऐसा, शायद इनसाइड एज ही था, वरना बिल्कुल बहुत ही क्लोज था। साजिद खान के जो फेस इंप्रेशंस हैं उससे यही लगता है कि इनसाइड एज नहीं था। अपील की गई, होता नजर आया। साजिद खान का अच्छा स्टार्ट तीसरे दिन टी के बाद। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किए बाद हैवी अपील थी। इस बॉल के बाद कट किया है शानदार तरीके से, लेकिन फील्डर वहां मौजूद हैं। 382। चेंज किया है अर्शदुल्ला ने, तो विकेट बॉल करेंगे मैं यूसुफ को। अभी तक शायद यकीन नहीं आ रहा है। जहाँ विकेट टू विकेट बॉलिंग।
टाइम थोड़ा सा मोमेंटम लग रहा है, वापस शिफ्ट हो रहा है केपी की तरफ। अगर ये साजिद इसी तरह की प्रेशर बॉलिंग करें, क्योंकि दूसरे एंड से भी बॉलिंग अच्छी हो रही है। ऑन दी अप खेले थे इस बॉल को, और अच्छी फील्डिंग वकार की तरफ से। 8 रन दूर है अपने सेंचुरी से। इस वक्त कोई रिस्क नहीं बनता है, अपनी सेंचुरी मुकम्मल करनी होगी, क्योंकि बहुत शानदार इनिंग रही है, पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ। जी हाँ, और जब इतनी मेहनत की हो तो उसका सिला ज़रूर मिलना चाहिए। सिर्फ 1 रन दूर है केपी के स्कोर से सिंध की साइड। शानदार परफॉर्मेंस, शानदार कमबैक इस मैच में सिंध की जानिब से। मुश्किलात से विकेट्स हासिल किए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छी बॉलिंग, विकेट टू विकेट। अरशदुल्ला 23वां ओवर कर रहे हैं, 100 रन दे चुके हैं, 1 विकेट हासिल की है। तो एक्सपेंसिव रहे। एहसानुल्ला भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं इस टाइम। अच्छा ड्राइव खेले हैं साद, लेकिन रन नहीं बन पाएगा। 383 पे 4 सिंध। इसमें तो कोई शक नहीं है, एक नेशन है और एक ही पैशन है, वो है क्रिकेट। और पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जारी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और एक अच्छी इंटेंस क्रिकेट जारी है दोनों बेहतरीन टीमों के दरमियान। केपी जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, सिंध ने नेशनल T20 जीता है, तो चैंपियन मटेरियल है। ये बेहतर स्पेल नज़र आया हमें साजिद खान की जानिब से, थोड़े पेस के साथ बॉल की है, काफ़ी करीब आ गए थे विकेट हासिल करने के। साद खान जब बॉल बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। साद खान ने तो शायद बल्ला दिखाया कि बल्ले का इनसाइड एज हुआ है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ से हम कुछ 100% बता नहीं सकते हैं कि ये LBW हो सकता था या नहीं। लेकिन अंपायर बेस्ट जज हैं मिडल में, उनका फैसला जो भी होगा हमें मंजूर है। जी हाँ, अंपायर जो होता है उनका जो डिसीजन होता है फाइनल होता है, और अंपायर की उंगली जब खड़ी होगी तो तभी आउट है। ये स्पेल बेहतर है, अच्छी कंट्रोल से बॉलिंग की है साजिद खान ने, थोड़ी हवा दे के भी बॉलिंग की है, थोड़ी पेस से भी बॉलिंग की है, क्योंकि पेस जनरेट करनी होगी इस पिच पे, क्योंकि मदद हासिल होगी नहीं पिच से। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, 1 रन तेजी से हासिल कर लिया। जल्दी करनी पड़ी। ठीक है, आवाज़ मेरी आवाज़ सही है।
ये देखें तेज़ी से भागे और भाई लेजी भी बोला हूँ मैं तो उस रन का वो रिप्ले बता रहा था क्या हो गया मैंने कहा ये देखें इस तरह भागे रन लेने क्या हो गया 385 पे 4 The wheels are coming out. .385 for 4. Sindh now leading by 1 run. Sarwar Afridi has been given the ball a bit earlier with his second new ball than was the case with the first new ball. Two for 15 ball, a tidy spell, stemmed the flow of runs in the morning session. What is Sindh's plan? They want to get out of this game. We'll check what Ejaz thinks about that. A very good evening to you, Ejaz Ahmed. Thank you very much, Faisal, and good evening, everyone. At this stage, when lead is just +1, I think there is some more confidence in a dressing room, among the players, the coaches. They must be happy that their batters, they have done a good job in reply to the inning, which has been equally balanced against the team playing in the first inning. So I think it's only about getting some more outcomes in the rest of the time. 1.5 days left. We've been questioning Sindh's approach today, but I can tell you who will be the happiest of them all. We just saw their changing room just a while ago. You see Saad with a flowing drive. Yes, Sindh's bowlers will be happy because in the last 3 rounds they have really had to toil hard. In the last round, their first innings only lasted 50 overs. They bowled plenty of overs. Abrar, Asif. Asif didn't play the last game, but Hamza did, and Umar. They've had a good chance to put their feet up for a couple of days. This is a familiar Saad stroke. Just the flick of the wrist. Likes to play that on drive from within the stumps. Yeah, it's a good impact. Like the batters, they want to get runs. It's unlucky that they couldn't get the gap, but intentions, these are most important thing here at this stage when you've got some positives. You've got to be careful doing it time after time, because we've seen once he lost his wicket playing that kind of stroke. Overdone. 384 for 4. .385 for 4. One possible scenario, we'll have to keep an eye and see if that materializes. Let's Sindh probably will look to bat till lunchtime tomorrow on the 4th day and get ahead by, let's say, 150, 170 runs, in hope that they put enough pressure on KP, that KP plays some loose cricket and lose their wickets. Somebody would really have to play poorly to get
to lose 10 wickets on this pitch, or somebody would have to bowl incredibly well. Both of them very unlikely considering how these teams have fared on the first 3 days. Yeah, these are batting fielders. Just going slightly bit more towards offside. Yes, you're right. Our cricket has been all the times we're looking for the chance game. It might come towards your way, towards opponent. But I think on this surface, this is more like a batting track. So I think batters will enjoy batting here. There might be some factor, spinners. If they will be getting something in the 4th day, they can come and can make some surprises. Yeah, Brar will be the key. That's the only one point that I can see, that on a dry pitch, on a 4th day pitch, Brar probably will be more lethal than he was on the first day. But to set that up, Sindh would have to get above a lead of up above 150 or even close to 175 maybe. That will allow Brar to put pressure on the KP batters. Yes, but so far I think that batters like Umair closely looking for 3 figures. He will surely march further with his top delivery. It's 112 overs been bowled, 386 for 4. Plenty of blue sky, plenty of greenery here in this part of the world. We are in Rawalpindi. And plenty of good contributions on this batting card. 3rd century maker. Just 5 runs away from Arvin Yusuf. KP has really strategically placed their fielders and stemmed the flow of runs. There have been so many good strokes, but straight to the fielder. Yeah, sometimes it's a habit of a batter, like he's trying to go through the covers somewhere into the gaps, but the ball is not squeezing through. So it normally irritates. So might be there is some sort of element of rushing into the runs and may make mistake. Might be 1 or 2% chances. See, that point fielder is back, so Umair has capitalized on that. They've got away with quite a few singles there. Every time they're looking to get more than a single. That's why they're looking to hit hard and try to pierce this gap. Cover mid-off and cover an extra cover. But Faisal, bowlers need to show consistency here. The way he has pitched that delivery towards onside, I think 3 or 4 deliveries towards offside where the batter is trying to drive through. And as you're explaining, to get the gap towards there and cover an extra cover, might be sometimes a good delivery can edge away. Nicely played. Just true straight on that occasion. A leg stump half volley put away in style by Umair bin Yusuf. Reaches 99, just away from the magical 3 figures. Extremely well played. He was on the toes. Look at that, from the pad, flick, wrist work is there. Excellent. All things have been perfect and executed for 4. The ball was going all along the grass. Timing was perfect enough. Good way to reach 99. Well, that point fielder hasn't been called in, so there is a single available there. See if Umair will look for it. Straight down the ground, and he will get to the 100. What a way, wonderful straight dive. He'll collect just a single, but this has been a very, very resilient knock from Umair bin Yusuf. Back-to-back hundreds for this little right-hander. Extremely well played. This has been a brilliant knock where the pitch has been so easy. It's all about using the skills, and he used his skills tremendously well.
the balance, the shot selection, well, really on merit. Well played, Umair bin Yusuf, getting 3 figures in 209 deliveries. Yeah, that's the feature, because normally he's a free-flowing batter. Today he just worked hard for his runs. Got some luck along the way, it has to be said, but all the good players will make it count. Nice, beautiful full face of the bat. Server did get a foot to it. That's why it was only a single, but Umair can celebrate. Great knock, good form for him. He's started to make use of those starts. In the early seasons, he wasn't able to convert those starts, but now 200s will really give him confidence. Some more confidence after getting century on this very venue, which has been really a wonderful test venue. Really a big time for this young lad, that he's been registering his name for 100 runs. But he has made himself to be highlighted in tomorrow's newspapers. Oh, is that the sign that he will start to look for those big hits? Really lost his shape there. Inside edge onto his boot, but no one close catching. Sajid very cleverly slowing up the pace, making Umair wait. Look at that field. Mid on his back. Mid wicket and deep fine leg. Off the edge. It has been a lucky day for Umair bin Yusuf. Few more runs in that third man direction. 3 more. Yes, exactly. Sajid was looking that this loopy delivery might be giving us something from the bat, but rather than going towards onside, they've just gone edgy away and getting runs. Things are favouring him. Playing it late. Saad will get a couple of runs as well. Bit more urgency from the Sindh pair now that Umair has got to his 100. Well, Faisal, looking at time, like we have got another day left here, and the batting of Umair bin Yusuf, who has batted well, he can go like for another 60, 70 odd runs and convert those in a big figure. With his dot delivery, it's 114 overs, been bowled 396 for 4. This is Umair bin Yusuf's innings highlights. Like I said, he did have luck along the way. Plenty of runs towards that third man area. This was incredible. More luck. Some more. Used both the inside edge and outside edge of the bat, and that was the moment. Firm push down the ground, earned him 100. It happens, Ejaz. Sometimes you don't play your best cricket, but then you pick up the rewards along the way, because there are days when you're playing beautifully and something just goes against you, a brilliant catch, a rough decision. So when you get the slice of luck, you just got to take it with both hands. Yes, exactly. Captain brought him up to lead from the front, and let's see if he can improve his wicket column. Yes, you're describing like it might be your day, quick run.
that sometimes would you see that the good batter has been driving through the covers, but he's not finding the gap, even though the shot is good. So simple is that might be is not, you're not playing good, but still you are getting runs. Yeah, like we said, play a good shot straight to the fielder, and then you hit the edge of the bat, and it just flies behind the stumps through the gap for 4 runs. We saw that in Umair's innings. What we didn't see in this highlight package, that there were so many good strokes that went straight to the fielder. Kamran Ghulam almost straightened this one at the edge. Saad was lucky. Have a close look. He was playing for the turn. Went in with the arm. Good use of the feet. Tiring bodies in the KP unit. They've been toiling for 114.2 overs now. Yeah, pretty long sessions for them. This is all what we call the first class cricket. That's why you've been earning names. That's why you've been earning respect. When you're performing in the center, being a bowler, being a batter. Found the gap. Just a single though. Shfaq now patrolling in the outfield. He was in the slips when the Pacers were bowling. He was the culprit, and he dropped Umair bin Yusuf. He's feeling the heat now, and I'm sure he'll be thinking about that catch until Umair gets out. Yes, exactly. And Ashfaq, I think so. That was the first catch and first ball that was through to him. And sometimes you're not ready for such kind of activities, that a ball has been travelling towards you with a new ball. Top delivery to finish the over. 115, and Sindh has been approaching 399 for 4. This is what we've seen every day, this time of the day. Some rooftop cricket. This is not very uncommon. I think most of us have played it. There's a little kink in the action, but there's no match referees there, so that little lad is okay. But Faisal, it's really hard to keep the ball down, because if you've been playing high, you need to go downstairs every time. And sometimes the ball may not be given back to you. Chance at the non-striker, and direct hit and gone. Umair bin Yusuf was scrambling for his ground. This is superb fielding there. A direct hit was needed, and direct hit it was. Well, good pickup. Early release of the ball from the very fielder. He was being nearby, watching in a good side. And Umair had done here. Quick single about to take, and but rewarded with a best fielding effort. Umair called, it was his call, and he was the one who had to pay the price. Umair bin Yusuf, after playing a very, very good hand, has been dismissed for 105. Sindh 399 for 4. Mohammad Hassan, the wicket-keeper batter.
He's a handy customer. Very inventive, like any other wicketkeeper. Does like to sweep the ball. Look at that best of 251 not out. 250s and that 100. 4,300 runs as well. Very, very handy. And this he will be at the non-striker end. Knocked him over. This one came in with the arm. And that familiar celebration. Sajid had to wait a long time for this. But he's produced an absolute beauty to get rid of Saad. Well, excellent delivery. And he has wrapped him up. No answer from the batter. And what a time to jubilate. Such kind of wickets through to him. Wow, beauty. Onto the off stump. And he was just standing onto the back foot. He should have gone forward. But he has costed his wicket. Big blow. Saad Khan departs on 14 runs. 399 for 6. Time for the all-rounders. We waited for 2 wickets before the start of the over all day long. We had only 2 wickets. And then 2 came in 2 balls in this over. There you go. Big, tall, athletic figure of Asif Mahmood. It's coming to the middle. Not quite a hat-trick ball for Sajid. Could be a team hat-trick. New at first-class level, Asif Mahmood rather will be under a little bit of pressure. Yes, exactly. Passage 21 in his early ages of this first class. But let's see how he will be coping up, as Sajid is really pitching the ball well and his confidence is touching the skies. Tails up, short leg and a slip. Not overly attacking against the new man. That one kept low. He was on that back foot again. Sajid got excited for a minute. Yes, exactly. Things are happening. Things are happening quickly. No answer from the batters as they were all looking. At this time he's not ready. Asif is just saving in question. Asif wasn't ready. We know that Sajid hurries the batters. That is the reason he just pulled out, because as soon as he looked up, Sajid was ready and he delivered the ball. Asif is asking, give me some time, let me get ready. Sajid at his best when he's in that kind of mood. You can see the eyes have widened up. The pressure, the glare is back. Little twirl of the moustache. You haven't seen that yet. Normally we see that when Asif is amongst the wickets. Sajid, I beg your pardon, but a good one so far. Yes, exactly. These 2 previous deliveries were not the best of, but that one that has been going through the defenses were really superb. Like a shot in anger there from Asif Mahmood, who's in Oz. A very, very eventful over has come to an end. 2 wickets and a maiden. 399 for 6. Two wickets. The first one was a run out from Umar bin Yusuf. Adil Amin swooping in very quickly, and Umar was well shot. Look at the pickup and the throw. Only had a stump and a half to aim. Hit the bullseye. And bullseye, Sajid Khan on that occasion went in with the arm, skidded through,
and Saad was completely defeated with the length and the zip of the pitch. Sajid is very exuberant. Well, some runs now. Yes, we did see that lots of drama. But let's hope that things will surely be going in a positive way. This is good cricket. That when the bowler's been trying to get breakthroughs and the batters, they are looking for the runs. Good ball coming. Like I was saying, Hassan loves that sweep shot like any other wicket keeper. He got off the mark on the first time of asking, playing that sweep shot. Yeah, lots of time. I did see that like Moin Khan used to sweep quite firmly towards onside. Either he's going to play the second delivery. Did see him sweeping those spinning deliveries. There might be some medium pacers. You mentioned Moin Khan, our very own Sarfraz. He loves the sweep shot as well. We've seen he's joined the Sindh team after 1 week's break. A well-earned rest for the former Pakistan captain. 401, which has been there, and there you can see Sarfaraz. What a player he is. Well, it's a big landmark, like approaching to 400 runs by Sindh team, and dot delivery to finish the over. It's 117 overs been bowled, 401 for 6. Look at those two centurions, 105 each for both of them. Umair got there slightly quicker than Saud. There's a mini collapse on. 341 for 2 and now 401 for 6. This is a good battle. I think Asif Mahmood by nature is an aggressive player. Long on is back for him. So is mid-wicket. Look at that. A little bit of turn. Thick inside half of the bat. Asif is not comfortable. Yes, exactly. Sajid is bowling well. And I think so slight bit of change of pace, like he's bowling with a regular spin. Might be some sort of pace there. As Asif has been a tall player, might be he's getting through. When the batters come in at the beginning of their innings, as we watch another edge, Sajid is threatening both edges of the bat. Hassan is quick between the wickets, will come back easily. Both the batters, because they're new, so they're not settled. On the previous delivery, Asif was playing it with hard hands, created the gap, and now Hassan, almost beaten in flight, in the end, has to use his hands to bail him out. Yes, he's covering the good stumps, Hassan. And I think that they should allow Hassan to take single here and try to play most of the deliveries to Asif. This is going down the leg side. Now there is some space. Well, the ball will run. Yes, it does. 4 runs. That's his way of batting. Hassan would not allow the spinners to settle. In looking to come down, this time he got close enough from off stump almost. Just played it with the turn. Unconventional, but very effective. Not perfectly timed, but just enough legs to earn him his first boundary. This time using the pace, just playing late. And it's that man Imran Khan again. And a fumble. It's not an unusual sight. 409 for 6.
Well, in the meantime, players, they are taking drinks. Yes, Sajid will surely enjoy those with some chocolates. It's 118 at 409 for 6. आगे धूप है यार, पीछे 409 for 6. खुरम मंजूर ने 100 किए, उमैर बिन यूसुफ ने 100 किए और सऊद शकील ने 100 किए. 2 विकेट्स गिरी. ये पहले रन आउट हुए. उमैर बिन यूसुफ डायरेक्ट हिट और इसके बाद साद खान जो कि बैकफुट पे खेले, गैप बना और बोल्ड हुए साजिद खान के हाथों. बॉलिंग में तब्दीली हसानुल्लाह मीडिया सेंटर एंड से. अपील हुई, बहुत जोरदार अपील केपी की तरफ से और जो रिएक्शन है वो तो यही बता रहा है कि शायद कोई आवाज़ आई है, बल्ले से लगा है. आप इस वक्त देखें, अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो शायद अंपायर मिस कर गए कोई साउंड.
या बहुत डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं यहाँ पे केपी के फील्डर्स बॉलर्स। एक बार फिर देखते हैं, स्निकोमीटर के बगैर तो यहाँ पे बताना हमें मुश्किल होगा, लेकिन जितने कॉन्फिडेंट हमें नजर आए हैं यहाँ पे केपी के फील्डर्स, ऐसा लगा जैसे कोई निक लगा है। साजिद खान तो अभी भी अंपायर नासिर हुसैन के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं कि शायद अभी उंगली फिजा में बुलंद हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। नॉट आउट दे दिया तो दे दिया। काफी गुस्से में लग रहे हैं सारे। तेज बाउंसर एहसानुल्लाह का। एक बार फिर देखते हैं जो अपील हुई थी। यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रही, शायद वो साउंड किसी या उनके बल्ले के हैंडल में कोई साउंड हो। लगता तो यही है कि शायद दूर से ही गया बॉल। 409 6 विकेट्स गवा के एक अजीब हलचल सी मच गई है ग्राउंड में। 2 विकेट्स गवाने के बाद एक एनर्जी आ गई है केपी की साइड में। डिफरेंट टीम नजर आ रही है अचानक हमें। कट किया है, फील्डर वहाँ मौजूद हैं। 1 रन दूसरे के लिए भी वापस आना चाहिए। जी हाँ, आसानी से 2 रन मुकम्मल कर लेंगे। जी हाँ, हसन जो है बड़े जो है वो इम्प्रोवाइजेशंस करते रहते हैं, नई नई शॉट्स भी खेलते हैं। लैप शॉट्स खेलते थे पहले जब हमारे साथ कई दफ़ा इन्होंने मैच। ये रियल टाइम में हुआ है और माइक नहीं है तो समझ नहीं आई। देखिए लेकिन इस तरह रिएक्शन जो है बिल्कुल ही शोर चीज़ पे की जाती है, तो आई गेस अच्छा डिसीजन कहेंगे इन द एंड। अच्छे नर्व्स दिखाए अंपायर ने। क्योंकि हमने यासर अक्सर देखा है ऐसी क्लोज कॉल पे जब पूरी टीम इस तरीके से अपील करती है तो घबरा भी जाते हैं अक्सर। हमने अंपायर्स को देखा है, लेकिन इनके नर्व्स हैं ये स्टील के हैं, सॉलिड इंसान हैं। अच्छे अंपायर हैं, अच्छे इंसान हैं। अच्छा डिसीजन दिया, क्या मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। बॉल 4 रन के लिए चला जाएगा। अपर कट कहेंगे इसे, ऑल्दो थिक आउटसाइड एज हुआ है, लेकिन डेलिब्रेट था ये। शायद जहां खेलना चाहते थे वहां एग्जैक्टली बॉल नहीं गया, लेकिन 4 रन हासिल करना चाहते थे, सो कर लिए। जी हाँ बिल्कुल, एज एक्सपेक्टेड हसन जो है अपनी शॉट्स के पीछे जाते हैं, ये अपनी शॉट्स नहीं छोड़ते। व्हाट्सएवर जैसी सिचुएशन भी हो ये अपनी शॉट खेलते हैं। तो इस बार भी 4 रन हासिल किए। इनोवेशन ये मॉडर्न क्रिकेटर की निशानी है। एक ऐसी उल्टी सीधी शॉट्स विकेट के पीछे खेलना, ये आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेटर की एक ख़ास बात है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल आर्ट है, यासर आसान आर्ट नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट होती है इस आर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए? क्या बेहतर होना चाहिए? आपकी आई साइट, प्रैक्टिस, किस चीज़ की प्रैक्टिस जो भी है, परफेक्ट प्रैक्टिस। किसी भी शॉट की जो प्रैक्टिस एग्जीक्यूशन परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद उसको करके कि वो आ जाती है। और इस शॉर्ट पिच डिलीवरीज की एक खास वजह है कि उन्होंने एक डीप थर्ड पे फील्डर रखा हुआ काफ़ी अंदर, ताकि उन मालूम है शायद कि हसन ये शॉट खेलना पसंद करते हैं, तो फील्डर वहाँ प्लेस कर रखा है। 415 पर 6 सिंध।
आसिफ महमूद भी काफ़ी बेहतर बैटिंग कर लेते हैं। इसका नमूना हमने देखा था नेशनल T20 में। बड़े लंबे हिट मारते हैं, बड़े हिट मारते हैं, छक्के बहुत आराम से मार लेते हैं। साजिद खान दूसरी जानिब बेहतर रिदम में नजर आए आज हमें। जी हाँ, इन्वाइट करना चाहिए हसन को, क्योंकि अपनी शॉट्स खेलते हैं और फ्लाइट जो है वो इस वक्त कारगर साबित हो सकती है। देखा उल्टा किया और लकी रहे कि बॉल जो है उनके पैड्स को नहीं टकराई, वरना अपील बन सकती थी। यहाँ पे बल्ले को लगा, ग्लव्स को लगा बॉल, और इस ओवर में दूसरी शॉट है जो अटैम्प्ट की है। जहाँ कम अज़ कम हमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अनकन्वेंशनल अटैम्प्ट हो रही है शॉट्स की, डिफरेंट तरह के रन्स की तलाश में रहेंगे हसन। यहाँ पे ओवर का अख्ताम हुआ, बहुत जल्दी से ओवर का ख़त्म अख्ताम करते हैं साजिद खान। लीड 31 रन की है, 415 पर 6 सिंध। अच्छा बाउंसर है, अपील रेहान अफरीदी तो बहुत श्योर लग रहे हैं। प्रेशर एक बार फिर अंपायर के ऊपर, लेकिन अनमूव्ड। देखिए इस तरह की जो अपील्स कर रही हैं तो श्योर शॉट अपील्स होती हैं। जो ये बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हैं, इनका किसका क्या मतलब है? कहाँ से बॉल टच हुआ? ज़रा हम रिप्ले देखना चाहेंगे। लिटरली रो रहे हैं वो। गुडनेस मी, ये बल्ले की बैक साइड को टच हो सकता है। ये बॉल बहुत करीब था। ये बहुत क्लोज था, शायद वो साउंड आई हो उन्हें, आई डोंट नो। लेकिन दो बड़ी अच्छी अपील्स को बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छी तरह हैंडल किया अंपायर ने। जहाँ पीछे वाले एंगल से कुछ बेहतर हमें समझ आ सकेगी। देखिए यहाँ पे अच्छा स्पेल है, ये तेज स्पेल कर रहे हैं, फायरी स्पेल कर रहे हैं सानुल्लाह एक बार फिर। क्या बात है, बहुत ही शानदार अंपायरिंग। प्रेशर है इस वक्त पूरी केपी की साइड, ऑल ओवर है अंपायर के। नर्व्स ऑफ स्टील। अंपायर नासिर इस वक्त आयरन मैन की तरह खड़े। अपील्स चेक करें आप, और प्रेशर डाल रहे हैं अंपायर पे सानुल्लाह, लेकिन उनके नर्व्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस सिचुएशन को। द गुड थिंग इज़ कि बिल्कुल जहाँ इम्तिहान है ये भी अंपायर्स का। एक बार फिर, लेकिन इस बार बैक से लग के गया बॉल। बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा आ गई है मुझे लगता है केपी की साइड में। हर बॉल पे ही अपील और ज़ोरदार अपील। अगर आप केपी के हेड कोच हों तो क्या समझाएंगे अपनी टीम को इस वक्त? जी बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल कर रहे हैं। एक आध अगर यॉर्कर की ट्राई करें तो थोड़ा सा रिजल्ट आ सकता है कुछ ना कुछ। इस वक्त जो टीम कर रही है तो हम श्योर के पंप्ड अप है, उनको नज़र आ रहा है कि विकेट आ रही है, लीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है और केपी की टीम दोबारा बैटिंग करना चाहेगी आज के दिन में शायद। और इस दफ़ा रेहान अफरीदी ने ये बॉल मिस किया, फाइन लेग पे गया बॉल, 1 रन हासिल किया और ये तेज़ ओवर अच्छी पेस शो की।
यहाँ बहुत ही शानदार, काफ़ी अपील्स भी हुई और सबसे पहली अपील जो हम इस ओवर में देखने को मिली वो बहुत ही करीबी मामला था। ये एक बार फिर देखते हैं, इस एंगल से बेहतर समझ आ सकेगी, लेकिन जी हाँ काफ़ी दूर लग रहा है। इस एंगल से तो हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं और ये बेस्ट एंगल है शायद जो हमारे पास मौजूद है और इससे तो हम कुछ कंक्लूजन डिसीजन नहीं निकाल सकते हैं। 10 on 10 नासिर हुसैन के लिए, जिस तरीके से फर्म खड़े रहे हैं, बहुत ही शानदार अंपायरिंग। ऑल्दो ऐसा लग रहा था जैसे केपी तो 100% श्योर थे, लेकिन क्रेडिट देना होगा नासिर हुसैन को, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस स्पेल में तो सोच लिया एहसानुल्लाह ने कि मैंने बाउंसर ही करने हैं, बच सकते हैं तो बचे। या बिल्कुल अच्छा ओवर एहसानुल्लाह का, फुल ऑफ थ्रेट। अभी एक बॉल है, बल्कि 2 बॉल्स रहती हैं अभी। जी हाँ, और 3 फील्डर्स जो हैं वो इस शॉट के लिए खड़े हैं। एक शॉट जो है वो स्क्वायर लेग भी है, पैड शॉर्ट लेग, शॉट डीप फाइन और डीप मिड विकेट। ओ आसिफ महमूद तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, हसन काफ़ी करीब आ गए थे और इमरान खान सीनियर ने काफ़ी मदद की है वापस पहुंचने में। और गुस्सा, एग्रेशन, पैशन एहसानुल्लाह में, ये ओवर बहुत ही भरपूर रहा है, शानदार ओवर। इस मैच का सबसे एंटरटेनिंग ओवर रहा है ये एहसानुल्लाह की जानिब से। देखते हैं, बहुत ही फायरी बॉलिंग की है, तेज़ बाउंसेस किए हैं और स्लो पिच पे दिन के इस टाइम पे इस तरह की एनर्जी दिखाना, इतना ज़ोर लगाना, ये आसान बात नहीं होती। और जिस एग्रेशन ने, जिस पेस से बॉलिंग की है, शानदार। जी हाँ बिल्कुल, और यही केपी की टीम जो है वो चाहती है एहसानुल्लाह से कि वो इस तरह की बॉलिंग करके कोई ड्रा ड्रू के आउट करें, क्योंकि इन्होंने पेस में अपने स्टैंडर्ड्स अच्छे सेट किया और निकल के कदमों का ज़बरदस्त इस्तेमाल, ज़ोरदार शॉट 6 रन के लिए मिड ऑफ के ऊपर से। यहाँ आसिफ महमूद में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। बड़े शॉट जब भी आए थे हमने कहा था कि ये बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं और यहाँ पे अगर आप एयर देंगे, उनके जोन में बॉल करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमने देखी है कि लॉन्ग हैंडल यूज़ किया, मुस्कुरा ज़रूर सकते हैं साजिद खान के लिए, दिल ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि आप एक लेट मिडल ऑर्डर बैटर, एक ऑलराउंडर से जब इस तरीके से अथॉरिटेटिवली छक्का खाते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है। साजिद मुस्कुराए तो इस तरह बाउंसर करेंगे अगला लेकिन स्पिनर है, थोड़ा सा इनमें एग्रेशन है, ये इनका करैक्टर है। लेट्स सी कि उनका क्या रिप्लाई होता है यहाँ पे। आसिफ महमूद का एज अ बॉलर तो अच्छा दिन नहीं रहा है, ये मैच नहीं रहा है अच्छा, लेकिन क्या अपनी बैटिंग से इम्प्रेस कर पाएंगे यहाँ पे लोगों को। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल और सेंसिबल तरीके से बॉल भी किया और एंड पे एडजस्ट भी किया अपने आप को आसिफ ने। साजिद खान 95 रन दे चुके हैं, काफ़ी मैच जो है वो अब एंटरटेनिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ हमें दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। दूसरा ओकेजन है जहाँ पे आसिफ सिंगल लेना चाहते थे और हसन ने मना किया उनको। जी फ़न ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट में जब तक फ़न नहीं होगा उस वक्त तक आप इंजॉय नहीं करेंगे, देखने वाला, खेलने वाला, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। और जैसे आज यासिर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का आगाज़ हुआ, कल हुआ इनफैक्ट, और 2 बड़े अपसेट हमें देखने को मिले। श्रीलंका को शिकस्त हुई, आज वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त हुई, तो बहुत धुआंधार वर्ल्ड कप होने वाला है इस बार तो, जिस तरीके से आगाज़ हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया में एक तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ मैचेस में ट्रिक चल जाएगी पिचेस की, या क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में जो छोटी टीमें वो थोड़ा ऊपर आ जाती हैं और बड़ी टीमें अंडर प्रेशर हो जाती हैं। 424 पिच है। और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं आप, कॉम्बिनेशन के बारे में, पाकिस्तान के चांसेस के बारे में वर्ल्ड कप के को लेके
क्या आपको लगता है कि जो बैलेंस ऑफ पाकिस्तान टीम का हुआ है वो सही है, वो दुरुस्त है, बेहतरीन इंतखाब किया गया है? आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ी सी अपनी लिमिट स्ट्रेच करनी पड़ेंगी मिडल ऑर्डर में, और स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलर्स को भी हम डिपेंड करते हैं बॉलर्स पे, और किसी दिन बॉलर आड़े हाथों आ गए तो फिर 180 भी कम लगेगा। और इस बार वाइड बॉल, और इन कंडीशंस में टाइम निकलने का पता नहीं चलता कि सेट होते होते अक्सर बैट्समैनों का पूरा टूर्नामेंट ही निकल जाता है। तो बड़ा थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा लड़कों को, और फ्लो हासिल करने के लिए, और थोड़ा चैलेंजिंग है तो वो चैलेंज लें, एक्सेप्ट करें। वर्ल्ड कप मुश्किल होगा, बट पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, फुल ऑफ टैलेंट। बेहतरीन बॉलिंग है एहसानुल्लाह की जानिब से, फायरी स्पेल किया है, बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ, तेज गुस्से वाला, तगड़ा स्पेल। ये जो है, दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू प्ले बाउंसर, क्योंकि ब्लाइंड हो गए थे। अटेम्प्ट करना चाहिए इस बॉल को, और जो ऊपर हो वो फिर आखिरी टाइम में भी बंदा बैठ सकता है, लेकिन बल्ला को ज़रूर लेके आए, ये यूँ नहीं करना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ आगे किया, ये बॉल पहला बॉल आगे किया तीसरे ओवर में अपने। अच्छा स्पेल, फायरी स्पेल एहसान उल्ला का। ये दोनों बॉलर बहुत बेहतरीन नज़र आए हमें, एहसानुल्लाह भी, अरशदुल्लाह भी, दोनों 90s के बॉलर्स की याद दिलाते हैं। लैंकी ओल्ड स्कूल फास्ट बॉलर्स, हिट द डेक वाले बॉलर जो कि पेस और अपनी जान पे भरोसा करते हैं। और एक और वाइड, देखिए आप अंपायर्स को तंग करेंगे एक्सेस फील्डिंग से तो ये तो होगा। दैट वाजंट अ वाइड, क्योंकि ये तो कोई वाइड नहीं था मेरे ख्याल से। थोड़ा सा बॉलर के साथ ज्यादती है ये ऊपर क्या कोई ये वनडे थोड़ी हो रहा है कि आपने ये बाइट दे दिया। काफ़ी सर के ऊपर से बॉल गया था। मैं फिर भी क्रेडिट जो एम्पायर को दूंगा, अच्छी एम्पायरिंग। नासिर हुसैन ने अपने नर्व्स पे काबू रखा है। दोनों बॉल सर के ऊपर से थे, लेकिन ये अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग, 10 on 10। खूबसूरत शॉट हसन की, और सिर्फ एक रन। पहले तो ये लगा कि शायद गैप में गई है, 4 रन मिल जाएंगे। एहसानुल्लाह ने अच्छा स्पेल किया आज, और इनको क्रेडिट देना चाहिए। तेज बॉल किए, 145 पे किए होंगे। यहाँ अच्छी पेस से बॉल करते हैं, और पेस से ज़्यादा उनकी लेंथ अग्रेसिव रही, बाउंसेस वाली, वेल डायरेक्टेड बाउंसेस रहे, इनटू द बॉडी बाउंसेस रहे, अग्रेशन अच्छा रहा। फुल टॉस, ओह ये कहाँ से बच गया, ये कैसे बच गया, ये सवाल है। एक बार फिर अंपायर की तरफ देखते हुए गुस्से से, लेकिन इसमें तो अंपायर का कोई कसूर नहीं है भाई, ये तो किसी चीज़ को नहीं लगा, इसमें गुस्सा नहीं बनता है नासिर हुसैन पे, क्योंकि ये बॉल सब कुछ ही मिस कर गया। पैड बैट, जी हाँ, विकेट कैसे बच गई ये सवाल है। अंपायर कॉल हो सकती थी, पैड को नहीं लगा, पैड को लगा है। चार रन मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाते हुए, ज़्यादा सोचते हुए, बाय के 4 रन। थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए शायद, क्योंकि अच्छा स्पेल जारी था। 4 रन दे दिए। लाइन बहुत ख़राब रही, कोई चांस नहीं रहा अफरीदी के लिए।
जी हाँ, 432 पे 6। बहुत फायरी स्पेल रहा है, बहुत शानदार किस्म का। डिजर्व करते हैं फाइफर। 3 विकेट्स ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं और जितनी अच्छी जानदार बॉलिंग की है, क्रेडिट दूंगा मैं इनको, क्योंकि पिछले 2 ओवर ही बहुत तगड़े किए हैं। और इवन आसिफ महमूद जैसे टॉल इंसान के लिए भी मुश्किलात पैदा की हैं। कि देखिए वो वहाँ स्प्रे हो रहा है जहाँ पे इन्होंने डक किया था और बॉल कमर पे लग के गया था। उसके बाद एक बॉल उनकी बाजू पे लगा, एक दूसरे बाजू पे लगा, तो जख्मों में घिरे हुए हैं आसिफ महमूद इस वक्त। तो एक बार फिर नज़र डालते हैं, पहला बॉल फुल किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं भाई पीछे ही सही है, बाउंसर ही ठीक है, लेंथ बॉलिंग सही है। और ये बॉल, ओह, इसने सब कुछ ही मिस कर दिया। बैड विकेट्स, हर चीज़। ये आखिरी एक्साइटिंग वाली बॉल, और ये भी अच्छा बॉल हुआ, कट हुआ थोड़ा सा, लेकिन अच्छे तरीके से खेला आसिफ महमूद ने। शानदार स्पेल, एंटरटेनिंग स्पेल, मज़ा आया देखने का। 38 ओवर किए हैं साजिद खान ने। 39वां ओवर करेंगे भी। जी, एहसानुल्लाह की बात कर रहे हैं। इस तरह की जब बॉलिंग करें और मतलब टेल के करीब खेल रहे हैं तो विकेट ना मिले तो बहुत ही अफसोस होता है, एज ए फील्डर भी और एज ए बॉलर भी। सिंध की लीड 48 रन की हो गई है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। 432 रन पे डिक्टेट कर सकते हैं यहाँ से कि मैच कब चांस लेंगे, कितने रन्स देखेंगे, क्योंकि अब एक ही ऑप्शन बची है सिंध के लिए कि इतने रन्स कर दिए जाएं और उन्हीं रन्स के अंदर केपी को आउट किया जाए। चलिए, अगर आप सिंध के कप्तान होते तो क्या करते इस? देखिए, अगर आप मेरी ऑप्शन लेंगे तो मैं तो इससे पहले ही शायद डिक्लेयर कर चुका होता। मैं आखिरी 1 घंटा 45 मिनट्स डेफिनेटली बॉलिंग देता। और ये शानदार शॉट है, बड़ा शॉट है ये, दोनों फील्डर्स के दरमियान से बॉल चला गया। अंपायर का डिसीजन देखना होगा, क्या ये 6 रन हैं? जी हाँ, 6 रन के लिए ये बॉल मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चला गया। एक शानदार शॉट, दूसरा छक्का आसिफ महमूद की इनिंग का। जी हाँ, टांग रख के ये शॉट मारा और मिडल स्टंप से पिक किया। अच्छी कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन आसिफ महमूद का, और सीधा स्टैंड्स में। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया था, तो सोच लिया है आसिफ ने कि साजिद के खिलाफ तो अटैक ही किया जाएगा। जो भी बॉल उनके जोन में होगा, उनके एरिया में होगा, वो बड़ा हिट मारेंगे। एक बार फिर आगे खेलने वाला बॉल था, शायद कट खेलने चले गए आसिफ। तो आप पूछ रहे थे मेरे से, अगर मैं कैप्टन होता या कोच होता सिंध का, तो मैं एक आउटसाइड चांस ज़रूर देता अपनी टीम को। बराबर रन्स पे भी अगर आप डिक्लेयर कर देते, आप चांस लेते केपी को आउट करने का, क्योंकि आप सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है कि रन ज़्यादा कीजिए और फिर चांस लीजिए 2 सेशंस का। ओके, और इख्तिताम पजीर हुआ 440 पे 6। Down the track and remain lucky. There's one bounce. Kamran Ghulam continuing. This is his 4th over. And Sindh getting in better position, lead by 57 runs.
The intentions are clear now that to get more runs early on, and let's suppose if they could bat tomorrow till lunch, maybe in good position. Tomorrow is the last day. This is what I'm talking about, that if they're getting 150 lead and then giving batting to the KP and then putting pressure on back, Ijaz, is it possible? But more likely looking onto the batting tracks, that the batters, they're enjoying, they are trying to uplift their run rate, their averages. Yeah, it's all happening because cricket is there. Well, a game of chances. It was a flighted delivery, inside edge, clearly inside edge there. What he's trying to do. I think he's also smiling there in the centre. You have another look at what he's been trying to do, something extraordinary. I think he was trying to drive, but just finishing his stroke on a defensive mode. And with this in 4-4-3 for 6 after 125 overs. Down the track, Asif this time, it's high, high and over the ropes. It's a very good shot from Asif. Some action. He's a very good and a clean hitter. Well, this is really a wonderful hitting. That against a kind of bowler, Sajid, who has got all of experience at international level, approaching to the pitch of the ball using perfect footwork and executing it for the maximum. Single followed by the maximum. So Asif is a good hitter. During the national T20, we watched his clean and power hitting. Oh, it's a good delivery, quick one from Sajid. Well, both of the batters, they are trying really quickly to score runs. And I think so, it's a good intentions. That the message has been clearly given to him. That we need some quick runs. 450 up. Sindh, we lost 6 wickets. Quickly, so quickly. It's good running between the wicket and strike back on Asif. And Asif is coming up with big hits, a couple of sixes there. Looking for the single, but no, fielder was away. This time Hassan was not interested. 8 runs in this over, 126 gone, 451 for 6. 384, and the reply is 451, the batter reply. But I think that the key factors, the centuries, what we did see here, Umair bin Yusuf, and lead is going up to 67 runs. It's a gentle push towards long on for a single, and there was the plan. Asif is back on the strike. Saud Shakil. Is he thinking about the declaration? I don't think so. He's not in white kit. Just relaxing there. Ball too wide. I think that slipped away. Well, I think that both of these two, they are playing good to the spinners. We did see Ehsan bending his back yesterday. Bit of the short pitch deliveries at this very time.
can be productive against tailenders. Well, nice to watch this. Both of the batters they're playing in V. Singles on long on and long off, and the fielders they pushed back, and now for Hassan they brought in. This is what I was talking about. Yeah, creating doubt whether to go for a run or not. So that's why Hassan, I think he's just making himself in a comfort zone by keeping himself most of the time on strike. A pitch, but safe. So, dot delivery in the end. 127 gone, 453 for 6. Sajid Khan from the far end. It's a very, very powerful hit towards extra cover. Good boundary for Asif. Hammering away. Really a good shot. That ball was just travelling with a high speed. Look at that. Standing and just getting his bat swing, full power. And fielder was unable to even get his hands on the way. Sajid is under fire. Imran Khan was the fielder there. Very good call. He's standing in the circle, and we do understand that bit tired, might be a bit stiffness as well. Yes, that's why I think they've been operating with spinners from the both ends, because I was thinking might be yesterday evening's spell can be repeated here. Slap towards onside. Good fielding. He was just on the go, on the run, Nabi, and having a good hand, stopping the ball really onto the boundary line. Good effort at such deep time. Was a very good slog sweep. Fielder was there, Nabi Gul. And saved 3 runs there. Yeah, such kind of efforts really required from the fielders to back their bowlers. But I'm looking forward for some change here in the bowling spinners, though they are operating quite regularly. Oh, that could be close and given. This is the time to get a wicket here. And matter of time, he was just trying to swing. Beaten and being given leg before Asif. It's a very good bowling. And again, he went for a slog sweep. Asif Mahmood played and 31 on 38 deliveries, 3 sixes, 459 for 7. New man, Muhammad Umar is there. He was pretty good with his bowling. Good to see him coming confidently, smiling. He's also a good hitter. In the whenever we talk about tailenders, they're coming up with it.
Play towards mid-wicket, looking for the second. And yes, comfortably taken. Hassan not out in 23. Down the leg side, plays towards fine leg. Again, a couple there. So runs are coming easily now for Sindh. Yes, exactly. Courtesy that Sajid wicket. Ball capped slight bit of low. He was just going to play cross. Was not in his slot and was given rightly for the leg before. Good delivery from Kamran Ghulam. Went for the cut shot, but it was quicker one. It's a quick single and a miss. Imran Khan Senior was there. Sorry, I beg your pardon. Nabi Gul was there. After playing he went straight. No call there. Five runs in this over. 129 gone, 464 for 7. It's a poor delivery. It's a poor delivery and got the punishment. It wasn't his line. Yes, when you're high in the confidence after getting a wicket. I think such kind of deliveries, just getting the pressure off from the batting line. Because you have already doing a good job. Keeping the ball towards offside, slight bit of spinning back. But keeping ball like this in a middle and leg stump area, I think the batter can really sweep you for the whole day like this. Hassan is playing confidently and giving some runs to his team. Lead is 85 now. Yeah, good one. They are changing the fielders quite regularly. And there you see, it's so easy for the batters. Either you're a tail-ender, you can play the spinner well in front of the wicket by going forward, keeping the ball down. Omar, usually he plays with the long handle. But one thing I wonder, why he's not taking silly mid-on for a new batter? And he's a tail-ender. Well, you're right, he's using long hander, 59 against Southern Punjab. He has already played a good knock. With his dot delivery, over bowled. 130 overs been bowled. Sindh 469 for 7.
Kamran Ghulam from the media end. If I talk about his captaincy, he played really nice innings for his team. His team was a bit under pressure there, played well. Throughout the day they were struggling to get some wickets early on. Some tough luck for the bowlers. Down the leg side. Yes, but overall, you can say like it's a batting track, so that's why we saw 3 centuries here in this inning. And still so easy. Nothing is there for the spinners, for the pacers at this stage. And I think it's really a good one. You need to be like patient. Don't show any panic. Go aerial. Just play your normal cricket. Yeah. It was a little change. A Chinaman there. Good over from Kamran Ghulam. It was maiden. 131 gone, 469 for 7. Quite steady, watching eagerly here and there. Some sort of insects, might be the lunch or might be waiting for the dinner. I would love to walk around the corner, especially in the evening. So they were there for the walk. Well, Sajid is bowling towards offside. Things are like from 6 deliveries. He should try some change of pace. Very unpredictability to this batter. I was not expecting this from Omar because he got the reputation. Even captain is smiling there. Yeah, having good times. Yes, actually everyone was looking for that shot, but straight to the fielder and nicely taken. Server was there. He tried to hit and went for the maximum, but didn't middle properly. It was a good catch. Yeah, good one. Not been properly played. Miscued, went high. There you see, flighted, and he was just playing and losing his one hand off the bat as well. There you go, and went high, and good catch at the end, losing another wicket that they were waiting for. Muhammad Umar goes for naught in 9 deliveries, 469 for 8. Well, watching eagerly, that what should be the next plan. There you go. Is there something for you? What would it see in cricket? Lots of cricket balls being hit to the birds. So be careful. Yes. They're out of the boundary, eh? Mir Hamza, new man in. He was pretty good with his bowling, some in-swinging deliveries. Look at his batting average, 7.72, 91 matches. Oh, it was a quicker one, down the leg side.
Look at that aggressive eye, but it is rushing towards the fence. 4 runs. So the ball is added down the leg side to the new batter. I think so. Mir Hamza is a sort of player that you can really attack on, but it was down the leg side and his bat was quite okay. Just trying to flick it down the leg side. He attempted well in terms of batting. He's coming up with his slip. There was no silly mid-off. Smiling, and it's ending up this over. Well, good bowling from Ihsanullah and Sajid Khan. Rashadullah does well. Well, 7 bowlers used, as you did see the chart. 3 productive. So that's why courtesy 473 runs. That's really good one, and he's just going with his wrist, trying to make some experiment. Might be he can get a wicket with such kind of delivery. Coming back sharply to the batter again, and he has just picked it up towards deep mid wicket and over the fielder. He was just chasing it, but over his head. It was a flighty delivery, and umpire Nasir Hussain confirming that it's a boundary. Look at this. That was like a Brad Hodge, if you do remember, from Australia. Flighted delivery, and a feeder was there, but it was a long chase. He's just mixed it up now, but Hassan has played well. He has replied well, and he's reading the hand early, that which way it will be spinning or might be what he's been trying to bowl. Kamran Ghulam is trying something new to get the wicket. It's a run out. Yes, it is. It is. It was a gentle push towards cover area, and well done. Well, they're happy. Yes, they have got another wicket. At a very special moment when the shades are longer. Just softly played. And he looked towards his partner, answered the yes, but not in time. No, didn't approach in time and lost his wicket. And umpire Khalid Mahmood Senior given him out. Mir Hamza departs without scoring runs. 9 down at 477. Abrar Ahmed arriving in the centre. Good spinner, but the job is different here. Let's see how much time he will be spending here in the centre. Yes, the sun is very close to set. Any wicket here will surely give a close of day. 9 matches. Let's see if he can survive here for this evening or not. Last delivery is coming up with 2 slips. Oh, it was a very good delivery. Here we go. Sahibzada Farhan was in the slip. Yes, no was the call, and in the end it was a very good finish
by the wicket keeper. Look at this. Yes. Well, the lead is still in two figures, 93. Sajid Khan continuing from far end, already taken 3 wickets. 43, his bowling is 44th over. Hassan is okay, fine with the dot deliveries, singles and twos. Yeah, this is showing that they wanted to bat long, though that few early wickets just been making them slight bit onto the panic button, but he's just bringing the fielder from long on. And he's spending his time. Good batting practice. Full use of the time. Front foot was up with a bat. Hassan replaced Sarfraz in this match and playing good so far. Not out in 35. Went for a big shot, but didn't connect properly. And no single there. Yes, he's just making himself to bat here for this long day. It was obviously played, but the fielder was slightly bit more deep. Fifth delivery. Just calling for a single. Yes, asking for his partner to just go for a dot delivery. Abrar is there. So it was good over from Sajid. 134 gone, 478 for 9. Couple of centuries there. Saud Shakil 105, Umar bin Yusuf 105, and Khurram Manzoor in the opening 116. And Mohammad Hassan still there, 36 not out, 478 for 9. Kamran Ghulam there to get this last wicket. Play it towards fine leg and gets a boundary. Yes, and he runs. Like they are moving towards 98 runs lead now. That played was well in control. He knew that there is a gap and just go into the boundary line. He was not ready, not been very sort of frustrated. The things have been going quickly. Short delivery. बॉल हवा में, आउट होने का खतरा, फील्डर से काफी दूर गिरी और वकार ने मिसफील्ड कर दी। दूसरा रन भी आसानी से हसन को मिल जाएगा और इसके साथ ही लीड के 100 रन भी मुकम्मल हो गए सिंध की टीम के। शानदार एफर्ट रही है ये सिंध की बैटिंग की जानिब से। ऑलमोस्ट सभी बैटर्स ने थोड़ा थोड़ा चिप इन किया है, रन्स किए हैं। यहाँ पे रिस्ट स्पिन किया था, थोड़ा चेंज किया, डिफरेंट करने की कोशिश की कामरान गुलाम ने। काफ़ी देर बॉल हवा में रही। अच्छी क्रिकेट है ये, अच्छी इनिंग रही है ये हसन की जानिब से भी। 42 रन पर पहुंच गए हैं और अच्छे टाइम पे आई है ये इनिंग। और उस कॉन्टेक्स्ट में भी कि हसन को मालूम है कि सरफराज टीम में वापस आ गए हैं और अच्छी विकेट कीपिंग भी की, लेकिन
शायद फिर भी टीम में अपनी जगह बरकरार ना रख सकें। ये अच्छा मुकाबला है सिंध की टीम में, लेकिन सरफराज के तजर्बे की ज़रूर कमी महसूस हुई यहाँ पहले इनिंग्स में सिंध को। नौजवान कप्तान थे सऊद शकील। अबरार हैरी पॉटर, एक गेंद का सामना उन्हें करना था और कामयाबी से दिफा किया। 484 पर 9 खिलाड़ी आउट। साजिद खान आखिरकार अपने इस ख़राब मैच को अच्छे में तब्दील करते हुए, क्योंकि 3 विकेट्स हासिल कर लिए हैं उन्होंने, 124 रन्स दिए हैं, 44 ओवर्स किए हैं। अब सब घर को लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। पंछियों के घर लौटने का टाइम हो चुका है और कुछ ही देर में हम सब लौटेंगे, क्योंकि देखा यह गया कि 5 बजे के बाद ज़्यादा मैच जारी रह नहीं पाता। 6 ओवर्स अभी भी बचे हैं, स्केड्यूल जो 90 ओवर होने थे दिन में, लेकिन उतने हो नहीं पाएंगे। इस ओवर के बाद 5 ओवर बचेंगे। ये दोनों स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि शायद मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि स्पिनर जब बॉल कर रहे होते हैं थोड़ा आसान हो जाता है। फील्डिंग थोड़ी कैजुअल रही है, स्पेशली लास्ट सेशन में काफ़ी लैप्सेस देखने को हमें मिले। आसानी से 2 रन हासिल करेंगे हसन। अच्छा पॉइंट रेस किया आपने, क्योंकि सरफराज वापस आ गए हैं। अगर हसन यहाँ बड़े रन कर देते हैं तो मुश्किलात तो हो जाएंगी सिंध की सिलेक्शन में, अच्छी मुश्किलात जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, किसी भी टीम में हेल्दी कंपटीशन जो है वो इस चीज़ की निशानी होती है कि आपके पास अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है, किसी भी वक्त आप उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए सरफराज बहुत वैल्यू ऐड करते हैं टीम में, ना सिर्फ विकेट कीपिंग शानदार करते हैं, बैटिंग में भी हैंडी रन्स करते हैं, और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आई थिंक वो बहुत काम आने वाली। वो मिसिंग नज़र आई हमें इस मैच में, स्पेशली उनका ना होना, उनकी कमी महसूस की गई सिंध की फील्डिंग इनिंग्स में बिलखुसूस। बिल्कुल सही कहा आपने अली, गेंद की पेस को यूज़ किया है। इमरान खान के लिए काफ़ी लंबा दिन रहा है और बॉल ने भी उनका खासा पीछा किया आज के दिन। सबसे ज़्यादा यकीनन वो भी खुश होंगे जब आज का दिन अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। यहाँ एक एक्स्ट्रा इंसान साथ चाहिए उनको रनिंग के लिए, जो इस वक्त हालत है, फटीग्ड हैं, काफ़ी लंबा दिन रहा, बॉलिंग भी काफ़ी की, ये सॉफ्ट हैंड से खेले थे। ये बहुत ही अजीब सी स्प्रिंट लगाई है। बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं इमरान, लेकिन नेचुरली एथलेटिक नहीं हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं हैं। जितनी भी एबिलिटी है उसका खूब इस्तेमाल करते हैं और पूरी मेहनत और कोशिश करते हैं हमेशा। 487 पर 9। आज नींद अच्छी आने वाली है, क्योंकि जो हालत लग रही है इमरान खान की, और सरफराज अहमद, इनका जिक्र कर रहे थे हम, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैटिंग में थोड़े रन्स की ज़रूरत है इनको। उस तरीके से हमें रन्स करते हुए नज़र नहीं आए हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं, स्किलफुल हैं, कभी भी रन्स कर सकते हैं। जो आप बात कर रहे थे फील्ड में इनकी लीडरशिप की, चाहे ये बाज़ाब्ता कप्तान हो या ना हो, ये लीडर हैं, फील्ड पर हमेशा लीडर की सूरत में नज़र आते हैं अपने कप्तान के लिए भी। अच्छा शॉट खेला हसन ने, एक मरतबा फिर कामरान गुलाम ने रिस्ट स्पिन की, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स। किसी ज़माने में इसको चाइना मैन कहा जाता था, लेकिन अब ये नाम आईसीसी की डिक्शनरी से खारिज कर दिया गया है। कामरान गुलाम काफ़ी स्मार्ट बॉलर हैं, वेरिएशन हैं, चेंज करते हैं। सिर्फ 10 ही ओवर किए हैं, 10वां ओवर कर रहे हैं, इनफैक्ट अंडर बॉल किया है अपने आप को। एक बार फिर स्पिन किया है, ये बॉल कहाँ से होता हुआ कहाँ चला गया ये कोई नहीं जानता है। हसन स्वीप शॉट से कभी भी दूर नहीं रहते। ये ऐसा लगा कि जैसे रफ में लगा बॉल और स्लिप के फील्डर हैं, वो एंटिसिपेट करते हुए लेग स्लिप की तरफ चले गए, लेकिन बॉल उनके दाएं से निकल गई। ये देखिए काफ़ी अजीबोगरीब सा शॉट था, सबको बीट कर गई बॉल। कोई भी बात हो वो नासिर हुसैन से चूक नहीं सकती है। ऐसी अंपायरिंग किया जिन्होंने, बहुत शानदार दिन रहा है नासिर हुसैन के लिए।
बहुत अपील हुई इनके अगेंस्ट, लेकिन ये डटे रहे हैं मजबूत तरीके से। अब केपी के कैंप से पूछेंगे कि उनका भी इनके बारे में यही ख्याल है आज के खेल के बाद। बहुत ही क्लोज लेग बिफोर थी अरशदुल्ला की गेंद पर उमैर बिन यूसुफ के खिलाफ लंच से पहले, और फिर अभी पिछले आपके स्पेल में तो मुसलसल अपीलें होती रही उनके खिलाफ। यहाँ मुश्किल होता है अक्सर अंपायर्स के लिए भी कंसंट्रेट करना इतने लंबे टाइम के लिए, और स्पेशली जिस तरह के सी अपील कर रहे थे एहसानुल्लाह और केपी के सारे फील्डर्स बैटर के इर्द गिर्द। बहुत नर्व्स चाहिए इस चीज़ के लिए। और ये बॉल नीचे रह गया, लकी रहे हैं कि ये ड्रैग ऑन नहीं किया विकेट्स की जानिब। ओवर का इख्तिताम 489 पे 9। फाइनली ऐसा आप देखने में लग रहा है कि इस विकेट पे से कहते हैं कि बॉल नीचे रहना शुरू हो गया, पेस भी कम होती जा रही है, बैटिंग शायद मुश्किल होती चली जाएगी आखिरी दिन। एक ज़रूर सोच आई थी कि शायद सिंध आखिर के 4-5 ओवर्स केपी को दे 100 रन की लीड लेने के बाद, लेकिन अब वो इसके लिए तो काफ़ी देर हो गई है क्योंकि लाइट मीटर अब आगे हैं और रीडिंग ली जाएगी। ठीक है स्पिनर से हो सकता है यार, अभी है टाइम। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद सिंध डिक्लेयर करेगी, थोड़ी पॉजिटिव डिक्लेरेशन होगी, चांस देंगे अपने बॉलर्स को आज की शाम 3 से 4 ओवर्स करने के लिए। यहाँ पे शायद उन्होंने फैसला कर लिया कि काफ़ी हो गया, ये लाइट नाकाफ़ी है कि मैच जारी रखा जा सके, और यहाँ पे मैच को रोकना होगा। दोनों टीमें वापस अपने डगआउट को जाते हुए। अच्छा दिन रहा है ये सिंध क्रिकेट के लिए, काफ़ी रन्स बना लिए, 3 बैटर्स ने सेंचुरी स्कोर किए, और डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली केपी कैंप में होगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की उन्होंने पहले सेशन में, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। सिंध की जो बैटिंग एफर्ट थी पहले 2 सेशंस में तो बिल्कुल भी उन्होंने बल्ला नहीं उठाया और थका दिया खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर्स को। आखिरी सेशन में रन ज़रूर बने, लेकिन उस वक्त तक शायद दोनों टीमें ये जान चुकी थी कि यहाँ से नतीजा फोर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छी इनिंग्स खेली हसन ने, विकेटें उनके साथ गिरती रहीं लेकिन उन्होंने मोमेंटम को कायम रखा। तीसरे सेशन में 34 ओवर्स में 120 रन बने और 5 खिलाड़ी आउट हुए। ओवर रेट भी अच्छा रहा और रन्स अच्छी रफ्तार से बने इस सेशन में। ये हेल्दी बैटिंग कार्ड है जिसमें 3 सेंचुरीज शामिल हैं। खुर्रम मंजूर, सऊद शकील, उमैर बिन यूसुफ, तीनों ही मेन बैटर्स ने 100 रन मुकम्मल किए। मोहम्मद हसन अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, 47 रन पर मौजूद हैं। एक कैमियो रही आसिफ महमूद की जानिब से भी, 31 रन बनाए। उसके अलावा ज़्यादातर साइम अयूब ने 42 रन बनाए। अच्छे इंप्रेसिव बैटिंग कार्ड है ये सिंध का। 137 ओवर्स तक फील्ड में रही खैबर पख्तूनख्वा की टीम। इमरान खान ने 20 ओवर्स किए, बदकिस्मत रहे, विकेट हासिल नहीं कर सके। 3 विकेटें मिली एहसानुल्लाह को, जो कि फास्ट बॉलर्स में सबसे बेहतर साबित हुए। साजिद खान मैराथन बॉलिंग की 45 ओवर्स और उन्होंने भी 3 खिलाड़ी आउट किए। अरशदुल्लाह को भी 1 विकेट मिली। बॉलिंग बेहतर की आज खैबर पख्तूनख्वा ने कल की निस्बत। थोड़ी सी किस्मत होती तो शायद रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होते। तीसरे सेशन साद खान ने अच्छा आगाज किया, लेकिन ये वो लम्हा था जब उमैर ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन उसके ज़्यादा देर गुजरी नहीं थी कि जब उन्होंने खुद को रन आउट करवा दिया। एक गैर ज़रूरी रन था, सीधा फील्डर के हाथ में। आदिल अमीन ने डायरेक्ट हिट की और अगली ही गेंद पर साद खान, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी साजिद की। फिर हसन आए, हसन ने स्कोरबोर्ड को मुतहर्रिक रखा। टिपिकल विकेट कीपर्स नॉक है इनका। आसिफ महमूद ने उनका अच्छा साथ दिया। अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में अच्छी अहलियत रखते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव खेले। लेकिन यहाँ पर 1 शॉट टू मैनी, बॉल थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन हसन ने अपनी अच्छी बैटिंग जारी रखी। उमर ने कोशिश की तेज़ी से रन बनाने की, लेकिन वो आउट हुए। और उसके बाद कामरान गुलाम को हमने देखा काफ़ी लंबी बॉलिंग करते हुए, 10 ओवर्स उन्होंने कराए। एक और चांस था, मीर हमजा आसानी से रन आउट हो गए, लेकिन
कोई डिक्लेरेशन आई नहीं, और जब ख़राब रोशनी की वजह से खेल रुका तो सिंध की टीम ने 489 रन बनाए। 105 रन की बर्तरी उनकी पहली इनिंग्स की। यहाँ एक और खूबसूरत दिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और अब जबकि सूरज गुरूब हो रहा है, आज के एक और दिन के खेल का अख्तिताम हुआ। 384 के जवाब में 489 पर 9 खिलाड़ी आउट। 105 रन है सिंध की बर्तरी। 3 सेंचुरियन सिंध के, और सरवर अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी सेंचुरी बनाई। बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, खातिर खा कामयाबियां उन्हें मिली नहीं इन 3 दिनों में। सिंध की लीड 105 रन तीसरे दिन के खेल के अख्तिताम पर। और इस खूबसूरत मंजर के साथ अब जबकि खेल यहाँ ख़त्म हो चुका है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल के खेल के साथ बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर होंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान, शब बखैर।